should be live now. Okay, guys, on TikTok, can I get a live audio check if the audio is okay on TikTok? And on YouTube channel, if the audio is okay, if I can get a feedback. Those that are joining on TikTok. Okay. Give me just 1 second. जी सर ऑडियो ज़रा टिकटॉक और यूट्यूब भी देखिएगा देखिएगा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ओके 10 seconds, guys. How are you? I'm good, but can you check if my audio is okay, guys? YouTube is good. That's good. Let's switch to camera 3. So I'm on camera 2. All right, let's get started. Welcome everybody, online, offline. Today is Saturday, September 2nd, 2024. Today I'll be your presenter. Abdul Rafay is my name. Our WhatsApp number is 647-228-0694. And every Saturday we do these presentations that explain exactly what we do, who we are. And normally we start around 12. Today we're starting approximately 12:30, and we'll run the presentation like every Saturday. Before I begin, I like to start my presentation every Saturday with a quotation that we are very fond of at the office. And it goes like, sky's the limit. They say sky is the limit for ambition. However, we say sky is only the beginning, and that is absolutely true with these the business I'm about to present, because there is amount of money that flows through online trading is $23 trillion every day. Moves in different formats, moves in crypto, moves in indices, Nasdaq, Dow Jones, Russell, moves in forex, moves equities, anything and everything, it does move. However, we're not going to go into great detail on how it is, but this is a universe of its own, and sky is just the beginning for this. Before I begin, every Saturday we like to go through some terms, conditions, disclosures, legal binding agreements. Why? It's a complicated field. Money is involved. So I know it's hard to read here on the screen, as well as people sitting here, as well as online. But you guys can go on our website, superareas.com. And the whole agreement is on the front page. Before you even log in, you have to agree to it. That what are the terms, conditions, what are your expectations, what are we giving to you and presenting with our software. It boils down to three main things. I'm not a registered broker. I am not an investment banker. I'm not a hedge fund manager. I don't manage anybody's accounts. I don't manage anybody's money except mine. We're not advisors, financial registered advisor. We are not even registered with Ontario Securities and Commission Exchange or anything, SEC, things like that. So keeping it simple. So it comes down to, we're not going to ask you to invest any money. We're going to say, don't buy Tesla, none of that.
So we're not a signals group, so you have to truly understand who we are, what do we do. And if you make money, congratulations. If you lost money, we'll evaluate what went wrong, how you guys did that. Now, so it comes down to one and most important thing in the world is we are a software company, consulting company. We have written software, and that's about it. So our software helps you get into online trading easily, very effectively, very professionally, and then you can start your career into a software online trading. So now that clears the way to that don't come in expecting either online or offline, that we are a trading school and we write software. So our expectations are very clear that we're not going to take your money, invest something, and give you promised returns, nothing like that. So that kind of puts a liability off back to you that, hey, whatever you do, you're responsible. And we're going to teach you everything as an informational, educational, and entertainment purposes only. Okay. The way these presentations work every Saturday is approximately 12:30 we start. We give you basic understandings for beginners. And it's a 90-minute presentations or so, 2 hours. And after that, from we'll take a break around 2 o'clock. Around after 2 o'clock, it's mostly for those people who you can sit the whole session until 5, 6 o'clock, but it's mostly those who have joined our program and they have some technical questions and they would like to know what is going on. And so, but you're more than welcome to stay through the whole presentation. Now, this is streamed through our social media accounts, so it is going on TikTok Live, it is going on our YouTube channel. It does get recorded there. Cameras are facing me, so none of your privacy is exposed. However, if you ask a question and my mic picks up, unless you come deliberately in front of the camera, nothing is being recorded. This is only the security camera, that's for our footage, so unless you don't want to be in a thing, I would avoid the cameras at the front. So anything, if you miss, you want to go back so all my lectures, daily and everything goes on YouTube, and they're free of cost. You can watch my previous presentations. The longest we have run a marathon is 8 hours, but generally 3 to 4 hours we run every Saturday, depending on the size of the crowd. This is not a scripted presentation, and meaning I would go through certain things for online users and offline, but we would generally dive right into it in a Q&A. You have questions, I have answer, how much money it's going to cost, how much time I have to invest, what do I have to buy, what do I have to sell, all of these things. But today, remember, for you, somebody who has no experience in trading, it's very beginners. I'm not going to get into very technical because I have to lead an audience that is online, of course, that is offline, right? So we will, most of the questions you are going to get answered. And hopefully, if anything is left over, I'll take care of it. So about us, I wrote 44 years in the making. Why 44? I turned 44 last November, my age, and I've been doing this for quite a bit long time. Our website is superareas.com. This is a newspaper article of year 2000, November. So almost 20 years or so. This is where I grew up in Kitchener, Ontario. We came to Canada in 1996, went to school, high school, college, and finished partly finished my program in computer programming. So this is a school magazine of Conestoga College, now has turned into a university. That explains what I'm about to show. Nothing to brag, but this is an article. Back then I was 18, 19 years old, and I had an opportunity to represent Canada in an information technology field. So there's an organization called Skills Canada, and I was able to compete in it in writing software, and then I won the provincial level and then the national level. And after that, they sent me to South Korea to represent. So what's the purpose of showing this? That you're not dealing with somebody who's just became an influencer yesterday. We have decades, 2 decades of technology that we've been using, writing code, and we understand what it takes to actually write code. So we're not something that we're just born yesterday and then we are now telling you how to trade. So we write software as a passion.
So trading is just another software that we write. Just like you use a computer, you use a phone, it's a mixture of software and hardware. And Instagram is a software, TikTok is a software, Adobe Photoshop is a software. Now you have to know, no software in the world is free. Whether it's WhatsApp, whether it's Telegram, whether it doesn't matter. Even Facebook, you think it's free. Nothing is, when it comes to software, nothing is free. Either you are a product where you're uploading your data, phone, conversation, things like that, or you are actually just paying a software like Photoshop to do your things like that. So Tesla, software and hardware. Every single thing that we live day to day is software, and we have extensive knowledge and experience with how software works. Lately we are improving our software business to understand more into trading, how trading works. Just give me a second. Let me see if somebody showed up. Hey, Fahad. Yeah, all good, right? Yeah. Okay, cool. I think Atai is bringing the coffee tea maybe, right? So you don't have to. Just get in touch. But our audio video is good, right? Sorry? Our audio is good? Yeah, all right, cool. So why are you here? Most people are here, online or offline. They saw our TikTok ad. Hey, good. Have a seat anywhere, guys. So you didn't miss too much. We didn't start at 12. We started at 12:30, so it's okay. So, but whatever you guys miss, you can go back to the YouTube, and it is being recorded. Your name? Noman. How did you hear about us? From Instagram. Instagram, and you want to know what exactly we're doing. Yeah. Right, no problem. I'll quickly run through. We're a software company, and we have written software. You have trading experience? No experience whatsoever. Okay. It's a big universe, and we're going to get you started slowly. Okay. Why are you here? Most people have seen our ad. It's a 10-year-old company. This is not something we just formed yesterday. Actually, it's a 16-year-old company. We just came on the surface last year with this new concept, superareas.com, because 10 years ago we've been doing there's another office at Dixie Matheson that is running a presentation right now. That office, our software is sold two formats. You can license our software, like lease it per month, or you can buy it. So that office focuses on our users that want to buy the software lifetime. The different presentations that we run across Saturday, I lead here, and Daniel is leading that presentation. So two offices, company has been here, and Daniel, our CEO, has been in trading for the last 40 years, has worked for Chicago Mercantile Exchange, knows everything inside about it. So it's a hybrid of somebody who's been a very good trader, and then we come in as a software company that we write software on how to trade. Why are you here? Again, most people have seen our ad online, and they want to see what exactly it is that we are selling, we are promoting, and how you can change your life with online trading. Now, being in the software for last 20 years or so, I have to say that this is one of the finest time in the world to become very easily rich online. Whether you are getting into online trading, whether you are in affiliate marketing, whether you are an influencer, whether you are selling Amazon or Shopify, the whole idea of working conventionally is really going out of the window. Meaning that if you're not able to go online, maybe you like to do cooking videos. Just giving you an example. Maybe you like to do travel videos. Pick up the phone, turn the camera on, go somewhere, open a TikTok account, and you will have a following. Then you will start getting some brand deals. Then those brand deals, I know lots of influencers over the years. For example, some of the Pakistani influencers I know from Waterloo, Zad, Sham, all of those, I see them, how they grew, right, with a small following. So everybody finds a niche, they work on it, and then they go online. So whether you decide to do, after my presentation, online trading or not, forget about it. That if this isn't, because not everything is meant for everybody. But I highly recommend, and we did a podcast 2 hours long last week, which is going to come online, where I urged everybody, I don't care which field you want to get into, but get into it. Whether you're a fashion designer, you want to do for clothing, whether you want to do cooking, whether you want to do traveling, vlogging, Amazon. There are incredible amount of ways to make money online.
This is just one of it. This is all right. People get into online trading. We're just trying to tell you is, first of all, online trading doesn't require money, period, whatsoever. You don't need your money to invest into trading. You just need to spend some time. Just like a following, you open a TikTok channel, Instagram followers, or YouTube, 1,000 followers, you need to be able to get monetization. You need to be able to like promote a content, become viral, and then, so this is like 2024 is, I think last 5 years are like incredible amount of people who made millions of dollars online, whether through online trading or through something like, we all know a kid named Ryan, right? Ryan Toys Reviews. Just goes to Walmart, Costco, gets a toy, puts it online, builds up the following. I have 4 kids. Oldest one is 17. The youngest one is 6-year-old. They all follow different influencers online. My one son watches Mr. Beast, right? Just for videos for entertainment. He doesn't get anything out of it, but his views pay for the bills for Mr. Beast, right? Then you have Roma and Diana out of UAE, those 2 young kids, right? So the idea is do something. Forget just online trading. That's one of many, many things you can do online. Just by exploring on how to do Amazon services, how to put up a shop as a, maybe you're good at cooking, start taking a camera, put a camera online, and start posting. Forget about number of views. How many viewers you get, 10, 15, 30. A year ago, watch our TikTok videos when we launched into a subscription model. We started a subscription model with like 5 views. We didn't care about views. Today, we have 500,000 views on 1 videos, right? So whatever your interest is, do it. Whether you like to sing, put a camera, don't be a camera shy, and just record. Don't worry about what people are going to think. They're going to make fun of it. But the idea is where I'm leading you into it. This is just the one product we focus. There are many, many things you can do online to make good money. Get into affiliate marketing. You know what an affiliate marketing does? So for example, somebody's selling something and you become a broker and you are diverting the product. So for example, you buy this calculator and you're like, all right, I'm going to review this calculator, right? And you're going to say, oh, this does good. At the bottom, you're going to say, go on Amazon, buy this calculator with an affiliate link. When that person watches your videos, clicks on it, you make money. You're not even the owner of a calculator. You just did a review. So affiliate marketing is huge on the internet. Instagram follower, people follow, then brands will do it. So idea these days is to make money online is so easy that anybody and everybody should be doing it. Second reason why we started this subscription program on our software is that trading, unfortunately, is tainted with negativity a lot. A trader generally loses money. The moment you have the word trading, online trading, you're going to say to somebody, don't do it, it's gambling. I know a lot of people who have lost a lot of money. And of course, I know people too, went through a divorce on trading. There are dark sides to everything and every technology, definitely. So we're just going to present to you a little bit more honest review of what online trading is, what you can do, how much money can you make, and we're going to be very realistic on all of these aspects. So why most people end up here is just to learn what exactly, and thank you for coming in. It's not easy to sit on a Saturday afternoon with somebody 90 minutes just over an Instagram ad. And since you mentioned Instagram, we don't like to have comments open because it is incredibly difficult to deal with trolls, and they will just pass by your feed and they're like, oh, another guy scamming somebody, right? They have no idea who we are, what do we do, how much we earn, what software we do, where do we live, and they just have seen an ad where it says make money online. They're like, no. So what we said, no comments online. Take an effort to send me a message. You took an effort, you walked in, sitting down, spending your valuable time. You want to know what are we doing, right? A lot of people online are very, they're not curious at all. They're very judgmental. They're just going to blame the whole industry based on their personal experience. You have no idea how many hours I work. You have no idea how, like we work up to 16, 17, 18 hours some days, right? You have no idea how our floor works. You have no idea how many offices you have.
You have no idea, but it's much easier to just go online, type in a comment, hey, another company is scamming people, right? So we don't have comments enabled. We want people take an effort, listen to it, and I'll show you some comments that we receive. It's incredible, like from anywhere from hate mail to racism, we expect it. It's okay, that doesn't slow us down whatsoever. So long story short, you're here to understand what online trading is. That's what I will focus on, and I will lead you on this. What is it that we are selling? Before I get into it, first, everybody can learn what I'm about to present to you. Anywhere in the world, any age, as long as you're above 18 and you have a breath, meaning you can breathe, we can teach you. You don't need a degree in finance. You don't need to know S&P, Nasdaq, Russell, Dow, MACD's, moving average, none of that. Because the idea was, no prior experience necessary, zero. You don't need to know what a moving average is. You don't need to know what a relative strength index. These are some of the terms that I'm, as a software writer, and by the way, we haven't invented anything. This is math, what I'm about to present to you. Trading is math. And trading is not something that, none of these concepts that I've just thrown out some terms at you, I'm not going to take a credit for it. So it's like somebody says, did you invent math? No. What we did was for somebody who has zero knowledge, and we're like, how can I present to you in easy to use format? How can I tell you how to trade on like basic understanding? So you don't have to worry. If you have no experience, absolutely don't worry. We're going to, as long as you're coachable, as long as you can follow instruction. Now let me take you to the dark side. 100 people will join, 97 will fail. 100 people will join, 97 will, so 100% to 97% users will fail. So that's a discouraging thing. Now it's this industry, not through us, two different things. So 100 people will start going online worldwide, and 97 will end up failing. Why? There's a bit of an emotional problem with this industry. It requires discipline. It requires to be, so you can't get excited. You can't get emotional. So only thing we ask you to come to when you come to the classroom, online or offline, is please leave your emotions aside. It's just numbers. It's just math. And if you're that type of person, goes to a, let's say Juan Mills picks up a like shoes that are $700, instantly wants to buy it, don't get into trading. If you're highly impulsive, you can't control your emotions, you are not grounded, don't get into trading. It's highly addictive, highly. So we're at school, we like to say, hey, come on board, but as long as you know what you're doing in terms of self-control. Technical analysis, I can teach you. 15 minutes, hey, see this number, buy. See this number, sell. No problem, that's the easy part. How can I control your emotions that you're gonna listen? Because you're sitting somewhere in UAE, you're sitting in Alberta, you're sitting in Australia, you're sitting in New Zealand. I can just watch you through online stream. I mean, you can watch us, we can't watch you, but let's say you took a trade and you made $500, then what? How are you gonna stop? Like, so the biggest problem most people have is they don't know how trading works, and the idea is to protect what you have earned every day. And then there's a limit to it. And then there is, so first I have to tell you a lot of dark things about it, that, hey, you're gonna join, if you have the personality that you're not disciplined, you're gonna fail. You're gonna definitely fail, and I can tell already, and many people who are very impatient. Like everything else, you need to be humble. You gotta, slow down. And we're gonna slow you down. Yes, you're gonna earn $100, $200, $500, $1,000, $10,000 a day. Go watch my TikTok. I posted my yesterday's story. I made $10,000 yesterday. Consistently we make money on 20 accounts, 500, 200. But the idea is you will get there. I have 20 years of experience, so never compare that if I can do it in 10 grand a day, you're gonna be able to do it. No, we're gonna teach you with baby steps. You're just born into this universe. So
So if you have to just analyze yourself, that if you're very impulsive out there in day-to-day life, may be a different thing. Go into affiliate marketing, go into vlogging, go into something else. You have to make sure that you have the rock solid patience, and you will develop it over a period of time. So you have to make sure these are some of the personality traits that you have before you get into trading. Calmness. If you are that type of person that if you sees a little bit of a $200 loss on the screen and your blood pressure goes through. I have had students who panic, get anxiety attacks. Hey, we don't want you as a student. We don't even want to sell you this software. Why? This market runs 23 hours a day. It's highly addictive. Highly addictive. You're going to sit there and you're going to press a button at 9:30 in the morning. You're going to make $250 in 20 seconds. For example, 20 seconds. Then what? Are you going to get up and say, all right? Because now your brain has sent so much dopamine on your head, and your whole brain has to rewire. Completely rewire, because the idea is this is not something that is a normal way of making money. How do most people make money in life is through working, and your earnings are calculated based on how much time you put in. Let's say a person drives an Uber. Nothing wrong with driving an Uber. Let's say a person works at a pizza store, at a Walmart, maybe owns a company. Your time, I spend 10 hours a day approximately in my business right here. So my time is valued, and I'm rewarded based on how much my hourly capacity is. So, for example, let's say you drive an Uber. Right now, the average rate is about $20 that you can get driving an Uber profit, right? If you want to make $100, you will work so many hours, 5 hours. You're working in Walmart, you're working at a pizza store, doesn't matter. Even if you have a PhD degree, you're hired by, let's say, a bank for a financial, forget about a different, let's say you're a dentist, and you do a root canal, it takes you about an hour, so your whole day is about $1,000 net you can take. So every profession has time and has money correlated. This is the only industry it doesn't. Because what happens is time and money are two completely different things in online trading. So for you to click buy, Nasdaq to move up 40 points, you hit stop, you will make $400 in maybe 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds. So your brain is going to say, what the hell is going on here? Why did I just press a button? Market went up, I made $400, and so you are going to go through, beginner traders, a lot of denial stages, a lot of things that you're going to say, hey, none of this makes sense. How is this possible? So just because you don't know something doesn't mean it doesn't exist out there. It's very easy. Anybody can learn. So first I'm prepping you guys that, hey, there are some dangers to it. And a lot of communities, the community I belong to, it frowns upon this. It says, you know what? Trading is gambling, especially in Muslim culture. That's the one thing they say, it's gambling. Now I have a counter argument to it. It is let's define trading and gambling in this way. Have you been to a casino, any of you guys? All right, Casino Niagara, let's say you play roulette, right? How does a roulette work? You have a ball, yeah, and then you have a ball, and then you put $50, and then you're like, it's gonna land on 27 red. For example, so your wager is $50, your bet is $50, and they're gonna give you $200 if it does land on 20. So you do your analysis, they have a screen, how many, where it has, and you're like, all right, I'm feeling good about it, and I'm gonna put my $50. You know how lottery works? Lottery works by giving you that hope that you're gonna win a lottery, right? 70 million, Lotto 649. Nothing against in lottery and gambling, it's just that's a different business model, but I'm just coming to a point where trading and gambling, two different things. But let me first explain how gambling works and trading works separately. So how does a Lotto 649 works? They give you 7 numbers. You have to pick 7 numbers. Our profession is software, math, so we know how all of this is working. So you go spend $5 and you are now against millions of users, and the probability of getting that 7 numbers straight in that row, very, very rare. However, you know why people keep buying lottery? Because there is a winner. If there was no winner, nobody would buy lottery.
So everybody, so you have a CP24 saying, hey, so-and-so won $70 million, $80 million, $10. So your emotions are saying, I could be that winner. And how do they project that? They say, wealth equals time, time is freedom, buy lottery, right? So that's a marketing stunt, that's what they do. Casino does the same thing. If there was no winner at a casino, nobody would go to a casino. So the idea is I went in with $5,000 and I came out with a lot of money. I bought a lottery ticket, I got maybe $5, and people continuously will play lottery for the rest of their life not knowing the odds are in against their favor. Same with the casino. I'm not putting any business down, I'm just saying trading is not gambling. Why? Trading is math. Math with real companies involved, real S&P 500, real something. Only thing we don't touch here is crypto, because that's a little bit of a gray area that we don't want to get involved. You need to be very experienced to be able to trade crypto these days. But the companies we touch is real concrete, Apple, Microsoft, Nasdaq, Russell, Dow, gold, natural gas, crude oil. So this is what we touch upon. Real things, so it's not gambling at all, in a sense that nothing is random. So the word gambling is, you're gonna flip a coin, you don't know what's gonna happen. In a, like 649, maybe you get one number right, maybe you get two numbers, maybe on a $50 wager on a roulette, maybe your ball is gonna land complete. So you have no control of the outcome. So whenever you have no control of the outcome, you're gonna have these problems. In a lottery, same thing. You spend $5 and you're not gonna have a control over the outcome. Trading is completely different. Every trade has the smallest probability of 50%. You take a trade, either it's gonna go up or down. That's it, that's it. It's not a completely randomness. So the idea of trading is gambling, it's a little bit of a fine line. Now, where does a community like mine has an issue which is a valid? What they look for is, because people are highly addicted to it, and they don't stop trading. So that so the trades the wording is the same. You're betting, your speculation. All of these things in trading is linked with the similar word of gambling. So because the words are coherent in each other's territory, but people then start labeling trading with gambling, which is not the case. So you have to have a clear thing is, hey, if you feel trading is gambling, hey, don't. I'm not a religious scholar to tell you trading is gambling or not. You are on your own, I'm on your own whenever it comes to moral judgment, right? We're gonna teach you and we're gonna tell you the dark secrets of this too. That, hey, if you're the person that's gonna sit there and trade 23 hours a day, yes, you're gonna get addicted to it. You're gonna maybe go into debt to start to recover. Yes, all of those things are very real in this field. But if you're a person who knows what is my target, how much can I make, how much, so you have to work with very, very disciplined environment. Now let me dig deeper for next 1 minute is, what is discipline? Every single one of you are disciplined. We go to school, I send my kids to school at 8:15 sharp. Why? They're gonna get an attendance problem. I go to work, if I don't, they're gonna kick me out of the company. They're gonna say, hey, you're not disciplined. Coming here, you took a highway or small street and there's a posted speed limit and 80 or 60, and you followed that. You went through a drive-through, picked up a coffee, you followed through a discipline, paid them. So everything in life you guys are already doing is disciplined. However, the main difference is you're forced by discipline. You're doing things by force. Try going on 400 with 200 kilometers an hour. Let's see what happens. You're going to get a ticket. Don't send your kids to school. You're going to have a problem. Don't go to work. You're going to have a problem, right? So what the problem with trading is, nobody's there to discipline you. You have to control yourself. It's emotions. It's money. You're like, I'm up. It's anxiety. So you have to make sure you so I have a lot of students now take yoga. Kind of calm their breathing down if you have anxiety. You can't be stressed over it. It's just math, it's just numbers. Money comes and goes, that's the byproduct of it, right? So we have to work on a lot of traders' personality too. That
I wish we had a device that would be a Bluetooth, slap you every time you're done $500. And then what happens is, oh, I had made 400 and I wanted to just make that last one. Everything good? So I wanted to make that last 100 and then I lost it all. So that's where the gambling and the trading, so these religious communities are 100% right. So they're looking at more people from an emotional side. They don't have a control. Just like, so then I would say to them, then start telling everybody TikTok is addictive, so don't use TikTok, which is right. You can be an hours scrolling, you can be hours Instagram scrolling. So if you can't have a discipline in that life, you're gonna have a problem in trading. Before you guys even begin, I know the problems that will happen. You're gonna instantly make $400, then what? Rather than to stop and, and then you're gonna say, let's take one trade. It is so easy. This software is incredibly easy. You don't have to analyze anything. Now trading itself is complicated. In a sense, you have to know a lot of things. Now let's pull down to a little, you have any trading experience? Zero? Not like much experience. Okay. I've watched a lot of videos. You have watched the videos. You have some experience. So let's suppose, let me break it down to an absolutely crude format. How does trading work? This is, let's pretend this is an ounce of gold. This box right here, these vibes, it's an ounce of gold. There's a price to it. So how do you trade in real life, buying and selling? Everybody's a trader, by the way. You buy groceries, you're trading money for products. You buy clothes, you're trading money for products. Online services, you're paying Netflix, they're giving you a product or service. So you're already a trader in life. However, we're gonna take you to a little bit of a journey on online trading. So let's put a value to it. Let's put $2,500 on this ounce of gold. So how do you buy gold these days? Like my parents or their parents, gold is one commodity. Everybody, especially in South Asian community that we really, really enjoy and like to trade and talk about it in many places, many weddings and women especially, whether for artificial or real. Gold is a golden standard, right? So an ounce of gold, go to a jewelry shop. Says, I want to buy an ounce of gold. So they're going to say, all right, today the gold price is 2,500 US dollars. So they're going to say this is the price. You're going to take out 2,500. I'm just putting a fictitious price. This is not the actual price, much lower. But let's put a number for easier math. So you're going to go to a jeweler. You're going to say, or I need to buy an ounce of gold. So they're going to give you a gold bar. And 1 ounce of gold, they're going to charge you $2,500. So now you have traded your money for an ounce of gold. You have a gold bar in your hand. So today is 2024, almost 2025 is going to come. Gen Z is going to look old very soon. What is your hope in this? That I've invested into gold. At this September 6th, I bought it. I'm hoping the gold price will go up. Will go up to 2,600, 2,700. People who bought gold in 80s, people 70s, hand down golds. The value of gold has been going up slowly, slowly. So what you're hoping for is, this is your investment. You bought 1 ounce of gold, and 2026 comes around, and this gold price is now trading at $3,000. Now, who decides this price of gold? You know what? Buyers and sellers decide. Supply and demand of gold in the world decides the price of gold. So traders decide that. Mining companies discover more gold. Somewhere in Africa, I mine, and then gold price goes up or down. So it's a global thing. You don't control the price as an individual, but as a group, as a humanity, we control the price of everything because we're humans, we're buying and selling product. So let's look at an example, iPhone. If there's no iPhone available and everybody wants iPhone 16, price is going to go up, right? If there are too many iPhones, price is going to go down. So the whole trading universe works with one rule, online or offline. Too much supply, price goes down. Too much demand, price goes up. So every single thing, online and offline,
works with one concept. I'm just breaking it down to very, very basic general things. I'm not going to get into micro and macro economics of how the world economy works and things. That's going to get too boring for an opening presentation, right? So I'm just giving a very hard, crude example. It's $3,000. You're hoping the 2026 is going to come. You're going to go back to a jeweler shop, a bank, online. Somebody says, hey, I want to buy, you have an ounce of gold. You're going to return that ounce of gold, and you have now $3,000. And in this transaction, you made $500. Okay, reason, no problem. How does, let me get to, so in the trading universe, it's a complex universe in a sense that you have a lot of products available for you to get inside. So what would be the first thing? You have an interest. So my Instagram got to you based on AI, that it popped up and you probably saw a paid ad or a reel or something. And because your profile had linked by Instagram that this person is looking for this, they charged us the ad. It connected me and you together over Instagram. So that's how Instagram is a free app for you. For me, I have to pay to put my ad up, right? And you came across and you're like, all right, so my ad, whether it was, however we were running the ad, something attracted you and you came to here to learn what is online trading. There are many, many, many things available out there for online trading. We start you with the word future. Future is something will happen in future. Past, present, 3 tenths, right? So future is something out of all of this. So why are we doing this out of all of this? It's very easy to explain to a beginner trader. It has no, you don't need investment. That's the number one thing. You don't need money to trade online. And if you've been taught this figure, you need money to trade, throw that out of the window. Completely, we're going to change this complete thing that, hey, 2024, never invest your own into trading. Never, ever invest your own money into trading. There are better ways, better companies out there that allow you to become a trader, and then you will risk their capital. Never take a $5 and buy a stock. A beginner, by the way. A lot of people are going to yell at me online and troll me, say, hey, yes, you're into a year of trading, you're into 2 years of trading, yes, start risking investing into stock. I bought NVIDIA, I bought Facebook, I bought Snapchat, I bought Visa, I bought RIM, I bought Alibaba, took to Hong Kong. I flew, me and Bilal, my cousin, we took $30,000 to Hong Kong and we bought stocks of Alibaba, right? That's a different story how that turned out. But so as a beginner trader, we're going to teach you how to trade futures, right? And this transaction is going to happen online, anywhere in the world, anywhere. We have a person who does it from a beach in Colombia, no problem. We have somebody in UAE, we have in Australia, we have Alberta. You don't need to be physically here. You don't need to see us. However, we're connected with you anywhere through live stream, through a Discord server, through a WhatsApp group, to a Telegram channel. So we have a community within our own organization. We have 12,000 members worldwide that have been here, and this is a 16-year-old company. This is not something we just came up with yesterday and said, yes, we're new for 1 year that we have licensed now our software on a subscription basis compared to a lifetime. So what are you going to be trading? Futures. This ounce of gold, you can now decide anywhere in the world. 23 hours a day, you can sit in front of this device. Need the Windows computer. It doesn't work on Mac right now. So need the 16 gig of RAM. That's the requirement. You're going to sit and you're going to decide the price of gold. That's it. You're going to sit and decide the price of S&P. You're going to sit, decide the price of Nasdaq, Russell, Dow Jones, natural gas, whatever field. You don't even have to do an analysis. You know how difficult it is to do analysis online for a beginner? How does a person who's brand new, how do you start? Is generally you type in Google, I want to learn trading, online trading. Then you're bombarded with a lot of ads, paid, and then you pick an influencer where he has the biggest amount of followers, and they're like, a lot of people are following that influencer. Let's go and check it out, what they offer. And of course, every single person, including ourselves, if we are spending our time, we're going to charge you for it.
So nothing in life is free. You have to understand who is giving you the best value for your money. I have tremendous respect for everybody who teaches online. Because it's not easy to stand here 4, 5, 6 hours, 10 hours every day sometime and teach you how to do something. So might as well get paid for it, right? So while I'm doing my work and I can teach and improve the life of others, absolutely. I sit from 9 a.m. to 2 p.m. and I'll be guiding users, do this or don't do this, things like that. Only thing is when you go out and now compare after this presentation, all right, I've run across the trading school, superareas.com. This is what they do. Just see what we offer, what competition offers to make sure that we're not, again, selling you a course, guys. We're not a course company. We're a software company. We've written a software that helps you analyze that. So your job would be 23 hours a day is to decide the price of this ounce of gold. Now, if the gold price goes up, you make money. If the gold price goes down, you make money. And people say, oh my God, how is that possible? Friday market tanked, Nasdaq tanked. We were so happy. All we had to do is just go into a selling site, put an order, and we were making money blindly. Every single one of us. The fastest somebody sat down with me at 3:16 p.m. Eastern, and he made $600 just by pressing a couple of buttons in 8 minutes, 9 minutes. So and market was just crashing. And people again say, oh my God, how can you make money when the price is going down? Because in futures, you can do this on all, but I'll focus on future. The word is speculation. Speculation means guessing. Now guessing means what will be the outcome of this gold price. You don't have to have $2,500 US for this, by the way. And when you're buying a real ounce of gold in a market at a jeweler, you're going to pay $2,500 US. Here, you don't need any money in your account. You can just sit in front of a computer, open your laptop, open the software, and just buy or sell. If you say gold price is going up, so let's imagine 9:30, gold price gets to 25.05. It's a $5 difference. That's it, the $5. You know how much money they will give you? $500. Amazing, right? How easy. Because you are just sitting, because every time gold moves $1, it's equivalent to $100 of futures contracts. I'm not going to get into details how the contracts works. It's an opening presentation. However, if the gold price, your direction is green, meaning that you're buying, you're speculating, price is going to go up. You don't own gold. You haven't bought gold. You haven't invested $2,500 in gold. How can you make money? So again, you have to first learn how futures contract works. You're not even going to buy gold. So let's take a piece of paper, and I'm going to write a symbol here. GC, December 24, 2500, and I'm going to write contract. Your job is to bid on this piece of paper. That's it. That's all. I know that I know I make it look so easy. Trust me, it is. A lot of people over the internet complicate things for no. We have a saying: more analysis is paralysis. You're gonna get. Don't overthink things. This is a piece of paper. It has written $2,500. It says contract on it. Just tell me, is it going to go up or down? And if your direction is right, you will make money. If your direction is wrong, you will lose money. So you can do the same thing. That if the price of this gold ounce contract, not real gold, you don't own any of this, goes down to $24.95. Now you were sitting at 25. You see the market price of this contract is at 24,500, and you decide, you know what, based on what Rafay's software is saying, what Super Areas is saying, we're just giving you some hints. We're not 100%, we're not God. Our software just gives you some early indications, early signals, just like anybody else. It's all a game of probability, game of
Now, stock market is highly manipulated, highly rigged. An average investor has no idea what they're going to lose or win. Big corporations move the market. Institutions move the market. Banks move the market. So they are called the market movers. We look at where the big guys are doing. If so, they're a big whale who has $1 billion in hedge fund, and they start to buy this contract. So if they're buying it, price is going up. So we're like, all right, let's go with them. Forget about I'm going to decide. So our software looks at something called a volume and price. That's a very unique software that's in the market. It doesn't care about anything else. It looks at whatever the big volume is happening in the world. If they're buying, we're buying. If they're selling, we're selling. So for you, an individual, to analyze the price of this contract, it can be highly complex. Complex in a sense, you have to analyze at least 25 things if you want to get into trading. What was the price of gold yesterday? What was the price of gold a month ago? What was the price of gold a year ago? What was the price in night session, low session? Many, many things. So 25 things an average trader needs to make an educated decision. We will make it for you. Our software will help you make it for you. We're not 100%. Nothing in life is. No, of course, our software can be wrong. It's informational, educational, for learning purposes to how to analyze the price of gold. But there are many, many percentages that we are very, very high in terms of accuracy. So 25 gold, you have decided the gold now price should. So computer is giving you a signal, price is going to go down. And you say, all right, I will sell that thing. You haven't bought anything, you will just, it's called a short sale in the way trading works. So you will learn all of these things. If the price of gold actually hits $24.95 because your direction was to the downside, they'll still give you $500. So it doesn't matter in our industry of trading, price is going up, we're making money. Price is going down, we're making money. Price is consolidating, we're making money. And then you're going to say, if it's so great, how come everybody doesn't do it? That's a very common question. And let me clear that one misconception online and offline here is, you know, the problem that everybody has with us or institutions like us who are giving this as a service, as they say, if they are so great, that's a skepticism, right? You're skeptical. Human is. It's just the natural mammal instinct of a human. Is you're thinking, if they're so great, why do they have a need to sell me this? So it must be something they're not doing right. They need subscribers. They need all of these things. And I'll break it down in 4 ways, this answer. The way this works is, you've just walked in, you saw my ad. Now you know a little bit about my company, what we have an office. So we're not a fly-by store. So first thing is we use our own software for the last 15 years to make money. You don't know who I am, honestly. You have no idea where I live, what my lifestyle is, what my assets are. None of this, right? But it's so easy to just put a judgment on that just because they're selling something, it must be that they're not doing so well, and they need to sell this course or the software. I say I have an open challenge. Don't buy my software. I don't care. Get into trading with a different method. There are free ways online to do it. I'm not endorsing only my software every day that we speak here. We're just saying our software will make your entry much easier. Your journey of software will make it. How are you going to start? So we give you that platform. We give you that community that you can come on board. Now there are 4. Let's break down this question is the judgment. So be curious, not judgmental. Curious is, yes, grill us, find us, sit down with us, talk to us. Just don't leave a comment online and just walk away, and then we ask you, you're going to say, hey, so just like you took the effort to come down and learn, right? Let's check out these guys. So be curious, not judgmental. Number 2, we use our software for the last 15, 20 years, and we have improved it. So we use it, and you'll see me trading with my own software. Number 2, if we give you this software to use, of course we make money.
Nothing is free. We have spent millions of dollars, 20 years to expand it, make it. So think about it this way. You have a drill like DeWalt or Milwaukee, a brand drill that you use, right? Why not use a hand and a screwdriver? It does the same job, right? It is 100% same thing. So what we call that is a tool. So if you were to build a small cabinet, how would you build? You go to Home Depot, you buy some wood, and you would get some nails, some carton, and then you would start building with the hammering away, right? But if somebody came along and said, hey, it would take you 2 hours to build this cabinet, right? And I have a drill machine for you. I have invented this. I have made it. All it does is it has a hammer, battery, everything. I've designed it. Why don't you take it from me? Are you going to question that person? Say, no, I'm not. I'm doing fine the way I am. I can use my hand and my nail and my hammer. And how I'm asking you, and hey, I've developed a tool that help you get that job done faster, right? So we're not here to scam you guys or anything. We're just here. We have built a tool that helps you get that job done faster. You can, literally, you can drive to UK or UAE with an ocean in between two. But hey, we're saying, I've built a plane, just hop on board, pay me the fuel, I'll take you to UK in a plane, right? So that answers the question. Is everybody's out there who thinks they're being scammed? You know what you should do? Anybody who says that, stop going to a university. Because university charges you $50, $50,000 for a degree. Gives you a skill set, right? So then nobody complains about a university and says, hey, why do they need to sell me this and teach me this? So every form of education, online or offline, you can learn. You can, with the help of YouTube, TikTok, Instagram, you can learn a lot of it for free. But what we are saying is we are going to give you this education in a very, very easy to use format, so it's much easier. So just like becoming a doctor costs money, just like becoming anything, we're saying trading will cost you money, but very little. Any questions so far? Everybody is clear? As I continue we'll take a break maybe in about at 2 o'clock. In half an hour, we'll serve you coffee and tea. I know it's not going to get so boring. So as a futures trader, we're going to teach you how to speculate, and you're going to speculate a price of gold, price of Nasdaq, price of this, all of that. What are the risks, how much investment, all of that. We're going to go once you are in our program. Now, our program is absolutely free. You don't have to spend a dime on it. No. This is incredible, isn't it? Like this presentation is free. You can go online. You can sign up for free. I'm not asking for any money. 14 days, judge me. Judge my service, judge my software, judge how we teach, how my software is. After 14 days, you decide, all right, this is something for me. Keep it. If not, go to add and remove and just remove my software. Simple as that. There's nothing else that I'm asking you. I'm not even asking you for any money today. 14 days later, if you think I have brought a valuable things and I've introduced, so I'm going to give you that drill machine for free to try. Build as many cabinets. I don't care. If it makes sense to you, because for me to prove it to you, I have to let you try it, right? So you're going to try our software, see how you like it. And if it makes sense to you, if you think that the monthly fee you're going to pay here after 14 days, if it becomes any value, great. You may say it's overpriced, it's okay, fair. You may think it's underpriced. That's fair too. That would be a compliment to us that we're selling it. So idea is, now part two. So you learned that I use my own software. We have developed the tool. Number two, a lot of people are asking me how much this software is. And I like to do it at the beginning. This software costs $50,000. 5 zeros with 5 zeros. 50. Here's the good news. The good news is that we're not asking for 50,000. We're not asking for 10,000. So when we ran our company for the last decade, I could not help anybody who couldn't afford
So because it's a very complex piece of software we have built, it took us like quite a bit of time, right? It's not something that's just came out of nowhere. So over many revisions, developers have worked through it. Many countries are involved on the analysis of it. So this software is costing that much, and not everybody could afford it. And we kind of had a lot of students and family members who said, you know what, I want to get into trading, but until last year, I said to them, I can't give you. You got to spend at least $5,000, like, and then pay me a monthly fees. That was the minimum I was asking until last year. I said, you want to join my program? Minimum $5,000. I can't take you in if you're not giving me $5,000, which is okay. I have a lot of students join. I know he's sitting there. He joined at the other office with minimum $5,000, and then there's a monthly fee after that. But that's why we weren't so much on the online media present, because to present somebody, say, hey, give me $5,000, they're going to think 4, 5, 10, 20 times, and only selected few say, okay, I think I see a value in it, and I will spend. So last year, a lot of software changed in the whole industry. AWS came, Amazon came, lots of VPN, a lot of technologies got changed. So what we did was we took our software too and we modified it. So we took our software as something called software as a service. So before you were buying our software, now you're leasing our software. Let me give you an example in software. Microsoft Office. I'm 44. I'm old enough to understand that you had to pay $700 for Microsoft Office here in Canada. That was the CD. You got the Pro version. If you were doing Adobe Photoshop, that was $1,000. Corel Draw, $1,000. Even WinZip used to cost $25. Microsoft Office, over the year, people were pirating because it was very expensive. Even people were pirating Windows XP, Windows NT. Why? It was $100, nobody wanted to pay. So what Microsoft decided that now Office should be $5 a month. Their subscription went through the roof. It's so highly subscribed now, nobody wants to pirate. Because why do you want to pirate for $5, right? Microsoft Office used to be $700. Now it's $5 and you're like, man, this is great. I get a latest software. I don't need to pirate it. They give me all the service. So your whole Netflix became in subscription. YouTube became, now remember back in the day, we were paying for Rogers or Bell as a package. Now we pay that same $150 to 10 companies. You have the Crave, you have Netflix, you have YouTube, you have Prime, you have Amazon, you have everything. YouTube Music, Spotify. All of these things are now costing $5, $2, $10, whatever the subscription, right? Same thing. So we looked at it. We said, how can I bring in more students who can't afford $50,000, $40,000, $20,000, not even $5,000? You know what we brought it down to? $300 per month. This is what this software is going to cost you if you decide to take after 14 days. If it makes sense to you, why 300? Why not 500? Why not 900? Why not 1,500? There's a very special reason for this number. This number comes down to $10 a day. I believe in our trading, this is our, if you're not able to make $10 a day through us, you should leave. Meaning this service with our, you take one micro Nasdaq, आपके सामने बात कर, $10 बन जाते हैं, इतना बुरा हाल तो नहीं है ना. So what I'm saying is, sorry if you understand my language? Oh, okay, good. Sometimes it's a different dialect. So why did we come up with $10 a day is, at a worst case scenario, this money should not be coming out of your pocket. Because the idea is, I have a lot of people who are struggling. Canada interest rates are gone up. They're looking for, hey, now this guy is going to put $300 in our throat, and now I got to come up with 300 more. No, so I'm a very realistic. People out there are struggling. To some, 300 is nothing. To some, 300 is a lot, right? My goal is to make sure this money is not coming from your other job. I don't care if you drive an Uber or you own Walmart. This money should be coming from trading. And you have to make sure I teach you enough in a couple of months that you're able to recoup not only this, but more, 500 a day,
300 a day, 1,000 a day. All of these things, I have to make sure that all of it is coming. So that was the second particular reason to go online with this, that we decided to make the software cost 300. This is completely optional. You can choose to do it. You don't have to do it. It gives you a lot of great things. And that's where I say, when you go back and go online and compare us with other trading schools, just compare full apples to apples. What does super areas give you with what the competition gives you? We have a staff of 11 people. We have 2 offices. You can sit down. At least we can accommodate 40 people here. You can listen to us online. We're not just going to leave you alone, because the idea is to make sure you make at least this much at minimum to be able to do this. Number 3, I use my software to answer the question is, why do they need? So I've developed a tool. I believe it can help you. It is affordable now to majority of my clients. Number 3, we looked at it and we said, it does help a lot of students in need who are struggling. You know, our biggest clients these days are truck drivers. Second biggest field that got hit in Canada is real estate agents. We're looking at that because it's okay. They joined the wave. It's okay. Nothing wrong with any other profession. And why truck driving? Because the logistics after COVID spiked up, and then when it came down, there's not as much supply and demand. Interest rates have gone. Everybody is looking for additional income, whether $50 a day, $100 a day, because it's struggling time, and I do understand it, right? So we said, let's make it a number so that makes sense for everybody, and it can help our community. And truck drivers who are struggling, I'm not going to be able to replace their income on day one. If they're making 10 grand a month, hey, we're not going to say you're going to instantly make 10 grand a day, things like so. But slowly and steadily, we'll give you a skill set. That, in my opinion, I did the interview as well, I believe there's not a harder job than driving a truck, especially a long haul one. A 52-foot trailer from here to California, your life is at risk. A lot of on 401, 403, I-97 when you're driving, when you're hauling that, you snooze and you can have a bit of a trouble, right? So this is a highly demanding job. And a lot of truck drivers were saying to us, hey, we're having a lot of hard time spending time with our family, and then they're not home, because some guys have the luxury, they come home at night, some don't. And we're lucky that this is whether the weather is outside minus 40 degrees or plus 40 degrees, you're in the comfort of your home, you're stating, you're monitoring, you're listening, and you're making that decision if the gold is going to go up or down, right? And we're going to help you in every possible way to make sure that you're successful. So it's an easy business. You can do it anywhere from the world. You just need a computer, and you don't need to spend a lot of time. You just need to spend a lot of time learning it. Once you start to make money, approximately 90 minutes, maximum, in a day. Now there are sessions. You have to do this either 9 a.m. to 11 a.m., 2 p.m. to 4 p.m., or 3 a.m. to 6 a.m. So if you I don't think anybody should have an excuse to change their life. These are the 3 sessions you really need to sit and trade. Because this is where the whales are moving. This is where the big money is moving. Smart money is moving. Volume is there. So this is called the Euro session. So market is open 23 hours a day. So now it depends and comes and boils down to how much passionate you are about changing your life. You know, other day I posted on my Instagram, somebody said, oh, you got it all settled. You have 21 apartments in UAE, you have 21 shops, life is luxury. And then you know what I asked them? Just watch how many hours I put in. I put in 16 hours a day. I have it all made. Congratulations. I worked hard for it. Very good. But I still show up to work at 9:30. I still work, and you will see me answering same question over and over and over. Aap to sunte hi hote hain. Any desk kharab hai, ye kharab hai. What I'm trying to say is life is easy.
Yes, and this is not a quick rich get scheme that you're going to come in, you're going to pay me $300 and you're going to make millions of dollars. Yes, you will get there. You will get to a stage like me where nothing is going to excite you anymore in terms of money. Because I've seen an R8 at the age of 27 years old. Like I wrote a software for IPTV online, and that company just got exploded. Dish Network came and sued me. They're like, you have an IPTV box at home, right? Somebody you're paying $10, $20 a month, and they're giving you a service and you're watching your channels, right? How does that service work? Right? It went through a lot of it, went through our company, and we built the infrastructure. And it got used in the wrong hands. It's okay, and we settled and we said, hey, we're not doing any piracy or anything. We have a company. Let me show you right here. So they sued this company 2 years ago. They thought we were the one pirating. This is my company, CDN. This is how big I used to be. Because when you're sitting at home at night writing just code, we had a community event, so we had to meet Trudeau, and this was a Waterloo event. So I went from 205 kilos to now roughly about, 95? Why? This took discipline, right? So it's easy to destroy anything, so I thought that, hey, just eating alone, things like that, eating junk food. But the idea is this was the company. We have a software company so that IPTV service that you're watching at home goes through something called the CDN. So we wrote the underlying technology to write it, right? So anyway, long story short, you got to work hard. If you don't want to change your financial life, you're not going to be able to do it. So you have to make sure you follow right people. You surround yourself, because what will happen is from here, you're going to go home, you're going to talk to somebody, they're going to say, oh, trading is gambling. I've lost all the money in trading. I don't believe in it. So surround yourself, come here, sit down in person, talk to those people who are making $10,000 a day, $5,000 a day, $3,000 a day, $500 a day, $50 a day, depending on. So if you have just heard it online from somebody, and most traders that I do know don't like to share their results every day, because they're like, here you have my screen running live, because you can see what I'm trading, how am I trading, which company I'm trading. All of it is all public. So I have to stand up to what I do in front of you every day, right? So any questions? I know I kind of continue when I have a topic. So what are you getting? You need a Windows laptop, 16 gigs of RAM, 32 gigs. And what we are going to give you is, I think, a little bit of a presentation, a couple of slides. We start you off with futures. Why futures? It doesn't cost any money. You don't need money to make money. I will, if you sit after, since you came in a little bit late, this presentation runs until 6 o'clock every Saturday. We have round one, round two. Round one is for beginners, just to have no idea how. Round two is mostly who get involved into the platform, and this room is gonna starting to get filled soon, because they have real technical questions. So we work with companies on the internet called funded companies. And what they allow you to do is they hire you as a trader. So it's like, I don't know, back when I was going to high school, Cameron Heights, grade 9, 10, 11, you had a co-op option. I don't know if they still do it. Co-op option was that you took a course and, for example, computer programming, and the school put a company together that you can go and work for volunteer hours and things like that. So there's an assistance program. We have the same thing. Once you join our company, I'll hook you up with a capital firm, 4, 5, 10 we know by hand, by heart, and they will hire you. They'll hire you as a contractor, and they will tell you, all right, but what we have to do is write their exam. Exam it costs $30 to do an exam. What is an exam? It's not something you're gonna write down. They're gonna give you $1,500 for free, not for free, $30. So they're going to say, all right, the exam costs $30. Can you make $1,500? If you're able to, that's your test. What have you learned from my school? What have you learned from us, right? And if you think that I have done a good job at teaching you and understanding you what a Nasdaq is, Russell, Dow, gold, crude oil, natural gas is, yes, you'll take that exam. And then, so this is your assessment of a test that, hey, are you able to trade?
In my software, are you able to buy, sell, exit? All of these things are going to happen, right? So, but not right away. 14-day trial, zero cost. I want you to go through the learning video. So both of you, if you decide the program, you're going to get greeted right here. So let's log into superareas.com. So this is my website. Very basic, nothing fancy happening. Of course, you have to agree to all the terms and proceed. See, it says here, click here to sign up. Just sign up, free, doesn't cost you anything. Let me zoom in a little bit here. So what I want you to do is click here to sign up. It asks you your country. Where you're from, what's your name, what's your email, what's your phone number. That's it. I'm not asking you anything. No credit card required, nothing at all. You're going to get a free account. And please don't judge us based on if we're giving you something for free that, hey, we have an active interest in you. Why? We're going to spend a lot of time and energy to coach you and train you. And we do everything possible in our human power to make sure. Why? We're not after this $300 a month. Because once you have learned the skill, I want you to light up this candle to the next person, to the next person, the person after. Referral is my best business. If you can go out there and say, hey, with the software, I'm able to. So these two individuals are sitting based on a referral. That person made $7,000 last week, 7,000 US dollars. After, I think, last 8 months, he managed to get 20,000 US dollars, part-time, completely part-time. So he lit up a candle. He's like, hey, let me introduce you to something that you're able to make some money on the side. Just go and hear them out, right? So you're spending time. I appreciate that. I'm going to spend some time and some energy for free of cost for 14 days. But I want you guys to be coachable, diligent, follow. Because last thing I want is, I'm telling you X and you're doing Y. I'm saying, hey, follow the whole program. We lead you into a step-by-step program. So once you're going to sign up, I will ask you humbly, now you have 14 days. You haven't paid me, I'm asking for your time. You know what some people say? Because they haven't paid anything, they don't value it. You have no idea how much money, time, effort, and things I'm putting to just get something out there for free. But people say, because they haven't spent a dime on it, maybe I should start charging for trial. I don't know, right? But I will see people logging into this on 13th day, on 12th day, on 10th day. Because I guess they don't want to change their life, which is fine. I haven't even asked you for any money. Just log in, sign up. Once you log in, this is what you're going to see. So let me log into my... And again, it hasn't cost you any money so far, right? So let's talk a few things. Right here at the bottom, it says, click here to access online training videos. I have given you a piece of software that you want. Maybe everybody can at least pass this test today. When I do it for a lot of different community, you probably can read, right? You can read, yes. Okay, forget, don't worry about it. That's just my name written in my language. That says Rafay, Abdul Rafay. But here's the thing. It doesn't make you any less of a person or intelligent being just because you don't know the language. Language barrier doesn't mean, Ronaldo speaks, he speaks in Portuguese. When we speak bad English, why do we feel bad? It's a complex issue, it's nothing human. But what I'm saying is, I have to teach you this language that behind me on the website. What is FOMC? Basics. What is CPI? What is PPI? Like, it took us 20 years to develop something, and so you're going to log in, and I have given you 6 videos. Problem is nobody watches them. They're like, now I'm just going to download the software and I'm going to start trading. So everybody's focus is on money, but nobody focuses on education. And we're giving you for free. We haven't even charged you for it, right? So right here, I want you to go through these videos. They're absolutely free. They're 2 hours each. They're lectures recorded by Daniel. So let's say, let's log in first, and you can hear.
He's going to start to break down the universe of trading one bit at a time, slowly. This will consume at least 16 hours of your time. I don't want you to do it in one marathon because you're going to say, I'm not understanding it. You're very new to all of this, right? So we have put together a guide, a study guide for the software. Again, it's not a coaching thing. We're not selling you we're not selling you a course. We're selling you a piece of software or leasing you a piece of software. I have to give you a piece of manual, right, on how to do it. And the religion I come from, they says your book, life's book manual, is the holy book, right? You read it, you understand it has all the laws, physics, explains you how to live your life in a relationship, in a finance. So for my software, I've written some guidelines. I want you to go and watch it. And for example, by the time you're on your video number 6, you're going to be exhausted. You're going to say, man, none of this makes sense. Go back to video 1. Go back to video 2. Make notes. Ask questions. The more you're going to ask, the more we're going to... Because what happens is this. My cost of acquisition, that's in a software, when you're bringing on a new customer, the word is used, how much does it cost to acquire a customer? So we have a cost to acquire you. We are doing a presentation. I'm being paid online, offline, office, everything. But if you have learned all of this thing, month 3, month 4, month 5, my cost of retaining is 0. Because you're just going to go online, pay $300 a month, and you have learned a new skill set. So I'm investing my time and money in your future. So all of this is free. I want you to understand it, watch it. So your job number 1 is to go and now start watching those videos. Along with the videos, I want you to start testing the software, opening it up, seeing what we have built. So at the bottom right here, I have given you a beginner's guide. So you go through those 6 videos, you take notes. Forget about how to use it. For example, a lot of people don't even know what Nasdaq means. In your case, you have some experience. In your case, you may have some, may not have. You may have heard candles, patterns, moving averages, EMAs, RSI. We're going to give you a beginning. How does the gold price move up or down at a basic level? And we're going to gradually increase, just like grade 1 to finishing a degree. We're going to give you a baby step. I'm not going to start putting you into an advanced level based on your experience today, right? So after that, watch this video. This video is almost 2 hours long. This is our software, what it looks like. And I ask you to go through with me and see, here I have made $812. Forget about dollar signs. If every new trader that comes on board focuses more on learning rather than earning will happen. Don't doubt me. But you got to learn. What does this mean? I have a question. Hey, okay, ES contract 26 September is going to change. If you're in your year number 1 and you're still asking me, it means you skipped everything how contracts work, right? So I want you to learn first, and we'll do everything in our human power to make sure that you're able to do. So go through these videos, and once you are done, now I have a lot of students who say, hey, I don't have Windows. I only have Mac. Then we're going to have to charge you $100 more. Because we are going to give you a virtual computer where you can log in. So the cost of that software is $100 if you decide to go with, if you don't have a computer. I have had users who doubted us so much. I said, go to Costco, buy a $650 laptop. If you think it's good, after 14 days that you would like to keep us, hey, good. But if not, add and remove, go to Costco, return your thing. So you log in here, and now I'll go into a little bit of a Q&A. You have any specific questions, answers? I can do this for you. That's not a problem. Yes. So this is once you are ready for a funded company, we'll give you a code to sign up to write the exam. So the exam is not written. They're not asking you technical.
hey, what is an RSI? It's not a technical exam. It's just they're going to deposit money into an account. They're going to give you that account. It's a fake money, prop money, not real. And they want you to see how good of a trader you are. Are you able to trade consistently? Are you able to trade? You know how to manage risk if there's a stop loss. And all of this, we're going to teach you. And so the way the roadmap will work is you have 14 days of trial. Let's say you take a trial today from us, September the 7th. By September, let's say you decide, you know what, October 1st, I want to join these guys and I want to be part of it. What you will get out of it, this whole thing is not just a piece of software. Go to our homepage and I have explained everything, the pricing and what exactly you get the package. So not only you get software, we'll give you 10 market data in advance every day. Gold, natural gas, crude oil. I have some guys, I don't like to trade Nasdaq, okay, trade gold. I don't like to trade gold, go to crude oil. So we give you market data, and it's called areas or levels. We have a daily live stream. Anywhere in the world, you don't have to come here. You will go to the website and you can watch us every single day. 9 a.m. to 1 p.m., 9 to 11, as long as the market is running, I will do my analysis. So you're not alone. You're not something that, that you're doing, because a lot of guys would buy something online, there's no after sale service. We're opposite. We give you the best damn service that we can believe that we can give you, because I've seen what's out there and it's pretty horrific. Person runs a Discord group. All right, half of my students don't even know what a Discord means, right? They're mature fellows, things like looking for. I know right now the floor is 3, 2, 4. It's about 70% male, 30% female. Females will do better, honestly speaking. Why? Human biology, females have more patience. In our, this is a male-dominated industry, by the way. 70 to 80% are, or even higher, are males running this whole trading thing, classes, everything. But in our theory, in our analysis, females are a better trader. Why? If they're told a task, they follow. And so if you're done at $300, they would quit the laptop. And you know, my wife trades as well. She does a much better analysis and everything because she follows properly. So not to put down any male, it's just we don't have the discipline. Greed comes in, emotion comes in, just one more trade. The guy behind you made $19,600 in 19 days. Just by one mistake, he failed an exam. Just by one little mistake. Why? He was done $900 a day. He was done. He's like, let's go for $100 more to pass the exam. And because he picked the highest exam possible. There's an exam where you have to make 1,500. There's an exam where you have to make 2,000. Exam, higher, higher, higher. And then he said, I want to try and attempt to do the highest level exam, which is to make $20,000 in 30 days or more, right? And he got to 19,600, and I'm like, he was feeling down. I asked him, what happened? He's like, you know what? I had made $900. I said, let's go and finish the exam today. He didn't believe tomorrow he's going to wake up or the industry or market is going to open. Because every trader has one thing, tomorrow will never come, might as well eat it. So that's the problem. Just like you have a buffet, and if I take you to a buffet and I say, eat 23 hours a day, you're only going to eat whatever your stomach allows you to do. Why is not trading different? If I'm begging you to only do certain things, there's a reason behind it. Because as a human, you will make those mistakes, right? So just follow us, listen to us, follow us, and we'll make sure. So October 1st comes around, you pay us $300 for the subscription of the software, and these are all these things that you get: live stream, coachings, floor, access to funded companies. Everything is all included. We're not asking you. However, now you say, all right, I want to sit down with somebody for 1 full hour. And I want to really pick somebody's brain. We have some mentors online. Mansoor is becoming one of the mentors. So
He's the one who referred you here. So we charge $50 for 1 hour. If somebody really wants to sit down, it's not would be me because I'm incredibly busy leading the company. We have few 6, 7 mentors now, which say we will give you their fully, but don't go to a mentor right away. Wait at least a month to see if you don't understand our basic things at the beginning, right? So $300 you're gonna pay, we're gonna give you, this is called demo money. There's no real money involved. I want you to practice every day for 20 days because trading, you're only trading for 20 days, not 32 days or holidays, Saturday or Sunday. So you will only have 20 days of trading and weekends, and you're welcome to come here every day. You can talk to us online, you can listen to us online. So after a month, let's say November 2nd comes around, you pay us another $300. I believe by now you will do the exam. So by now you should be ready somewhat that I've taught you. Remember, 45 days you've had. You're listening to us. Your brain neurons are building something new. To take a subject matter, they say do something for 40 days. And on the internet, statistically, they say you must do something for 10,000 hours to be an expert at it. You know what 10,000 hours mean? Let's do the math. 10,000 divided by 24. That's 416 days if you did it nonstop. But let's say if you do an average of 3 hours, right? It will, like, for somebody to do this with eyes closed, like I can look at Nasdaq and I can tell you, is it gonna go up or down? Based on yesterday, but I've been trading for 12 years, right? So don't compare my skill and technique to, I can do an average in and out and I'll be done. And in a losing trade, I'll be able to get out, not a problem. So I'll be down $2,000, put another 2 lots order, come out. So don't expect somebody to do this on the day one. So because you're just born into your universe, I'm a parent, I know what my wife went through, 4 kids. First day, you don't give them like even, it's milk and not even water, right? So stages to grow. You're not gonna put like the carrot baby, like a 2 months old compared to a 1 year old. So, and the food gradually, so same idea. I'm not gonna shove something down your throat. You have no idea, no knowledge, and you're like, now I'm getting more confused, right? So by the time you're in month number 2, you should be able to now consistently, gradually make some money. Now it depends on you, how eager you are, how excited you are, how much time you want to give yourself, and how much discipline you are. You're going to have ups and downs, left and rights, and then eventually so let's assume you get into December now. By this time, your investment has been $900 with my company. You have given me $300 a month, $900 you have spent on Rafay's company. Good, I've taken $900. Now I'm obligated to make sure you succeed, right? So yeah, we'll start in about 2 minutes. We'll take a break. Okay. This is what we expect from you by now. Let's do, you fail an exam on average maybe 5 times. Every time you fail an exam, I'm not going to put a rosy picture that you're going to be a perfect trader. Yeah, there are very rare cases, but what a general population goes through is you're going to fail about 4 times. 4 times 30 is almost $120 and 130 here. Let's do even 200 here. And let's do even 150 an average. Because this is the real money going to come out of your pocket. 3 months, you're into the subscription, almost, let's do 150, even 200. How much money approximately you have spent? 3, 6, 9, 9 to 12, 11, $1,300. If you follow what we are telling you, for example, what is a mid-band? A word. What is an area? What is top of the bar? What is bottom of the bar?
You control your greed. You control your emotion. Slowly, slowly, by end of December, you would have made at least $1,500. Minimum. You can make more. You can, like I have students who go in a trial and he made $1,500. And just in the trial, he came here and he'd been trading a little bit early. He figured out how we were doing it, took the software. He's like, this is amazing. In one day, he made $3,300. One day. He cashed out. We begged them to take the money out of the bank and spend it, because money on the paper is just numbers. Money has a value. You go buy Tim Hortons, you get food, you enjoy it. You buy the clothing, you buy anything like that. So you gotta enjoy that money that you're gonna earn. So that's how. So this business, this program, this opportunity will pay itself off, and it will be profitable as long as you're coachable. You can discipline. You can do this all. And so now what we'll do is 2 o'clock. I've been ranting for about 90 minutes now about this. Let's grab some coffee and tea, and then we'll come back. And as more students are going to come in to learn, and then I'll take you and I'll show you the software next. And then meanwhile, we'll take a break. Thank you. All right, guys, I'll take you right back.
guys roughly, I could show you on your laptop, you can look on possible. I'll be on Monday. You want to come Monday? I will do all the setup and everything. Yeah, that's because we were yesterday they told us to. So that's why it's good I got my laptop checked out. That's not a- So if you overall trade, so you don't have to spend too much. Yeah. Like, trade
in December to go India. ठीक है ਤੇ ਸਰ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ I have a group of people. but they want to see your results. They want to see my result and they are really मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that I am doing something. yes yes So sir सर मैंने 8 चो ना मैं एक सब तो आसान दस दिन बैठो आ जाओ नो प्रॉब्लम so we'll get started in about सर एक ना बड़ा एक 30 20 15 10 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੇਮ ਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ $2500 ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੋਲਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਈਐਸ ਤੇ ਯਾਰ ਈਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ 10 ਲੋਟਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ I don't wanna go ਇੱਕ ਲੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ Yes. No, how to control greed in trading? You gotta take some, like, don't think money is just numbers. That's the way I look at it. I wish I could teach you guys how to stop the greed, but I can't. ये ग्रुप आ रहा है ताकि we can start. ठीक है नो प्रॉब्लम रीजन इज मैं मर्कज की ना 2-3 कमेटियों में ठीक है नो प्रॉब्लम मैं फिर वो बोल रहा था यहाँ पे दैट्स फाइन नो प्रॉब्लम बस वो करे लेकिन वो खिलाए Okay. Yeah, unfortunately, it only has 8 gigs, so it's Nasdaq is gonna stop on it, right? So, Yeah, so I already checked. I'm thinking of getting it. okay, no problem. to upgrade the RAM if they can. Okay. Override them time. Okay, अच्छा थोड़ा टेक्निकल टॉपिक में तकरीबन 1 आवर तो बाद स्टार्ट करेंगे कुछ स्टूडेंट हो रहा है ना तो वर अजे कि 3 बजे ना कि मैं वेट कर हाँ ठीक है मैं कि मैं अपना फंडेड अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है नो प्रॉब्लम all right जी मंसूर लिख दें कोड 0 10 10 10 to sign up अच्छा ये उनका सर्वे आ रहा है ये मुझे सर्वे का नहीं मालूम
इनको मंसूर भाई ने भेजा कुछ भी डाल दें ठीक है That's all. Thank you. मैं वैसे तासर से लिखा होगी ठीक है मैंने चेंज कर लिया कोई बात बिल्कुल क्योंकि वो फ्लोर पे कहने का कोई काम होता था कोई मसला कोई प्रॉब्लम Okay, welcome back everybody. Let's get started into the session number 2 of this presentation. So it's 2:22 p.m. Eastern, September the 7th, 2024. And anybody who missed the earlier presentation, it's all recorded on YouTube. It is live. You can rewind it, watch it. But every Saturday, the first 2 hours is pretty much the same. And now the second is we start to get into a little bit technical on how everything is, why everything is, and how we can take good trades, and what your journey would be, and how all of this will start. Now let me explain something about futures first, and the word is speculation, as I explained earlier. So futures is, and this particular subject matter is highly controversial in trading. Some traders like it, some don't like it, some say do everything else but don't do futures. Do options, do crypto. It's based on personal preference, based on your personal needs, motivation, learning, everything. We start with futures. Like I said, the word is speculation. And let me give you, anybody, you're going to go to a wedding, sit down, and you're going to say, I'm getting into trading. And you need to know certain basic things first. So, because if you, let's say you have a person sitting across the table, male or female, and you're engaging in a conversation, they're going to ask you, you say, okay, I'm getting into trading. So you have to have a grip on the conversation saying, what type of trader you are? What are you going to trade? So you as a trader, so a trader that does online, you can say, I trade futures. Okay, so now you can trade options, you can trade stocks, you can trade crypto, you can trade EFTs, you can trade CFDs, you can trade spot. Like hundreds of products are trading, but we have to pick something, so we pick you're trading futures. Now next thing they could ask you, what type of futures do you trade? You can say, I trade indices. For example, Nasdaq, S&P, Dow, Russell, FDAX. So these are index. Now, I'm not going to get into a basic what is an index. It's just a group of companies that is all tagged together. Like S&P 500 is an index. But you trade futures. Next thing is, they will ask you, maybe, who's your broker? Where do you put your money in? So you can say, I put my own money. Either, so you're a broker, you're a trader. How are you going to trade? Who's your broker? Or you will say, I use funded or semi-funded. So there's 3 ways to trade. So you either put your own money or you go with funded company, meaning that they will provide the funding for you. So few things you should know. Now, next thing they will ask you,
what platform do you use to trade? Because these are very, very basic. You can say, I use MT4, MT5, Ninja Trader, Nitro, Rhythmic. These are all technical, but I'm going to give you the basics. Number 4, platform. So the platform we give you, which is free, is called Ninja Trader. So you are going to be starting with Ninja Trader. So it's a Windows program that is free online. We're going to install on your computer. We're going to connect your demo money to it. So you're a trader. You're going to get into trading futures. You're going to have a broker, maybe your own money, your own thing, and then you're going to use a platform. Next thing, they're going to ask you, because now the conversation is understanding. They're asking you a question, you're responding in the right way. You know the language. They're going to say, which algorithm do you use? Do you use this, that, X, Y, Z? So that's called the algorithm that predicts the markets, that predicts and does the analysis. You can say, I have my own custom. So the algorithm we are going to connect with you is called super areas. So that's the algorithm that does the technical analysis for you. You're going to load super areas on that. So now you have a little bit of an understanding that we're going to, as a trader, we're going to put you in futures program. You're going to trade with funded company, not your own. We're going to give you Ninja as a platform, and we're going to use super areas to start trading. Now, all of these, from 2 to 5, everything can change. For example, you will get good at it, and you would say, you know what, I have now enough experience in futures, I want to go into stocks. So just keep changing. As a trader, I will do stocks. As a broker, I will use interactive broker. I will use Wealthsimple. I use this or that. So all of these are changeable. I don't. So within stocks, you have options, CFDs, own money, funded company. Platform is Ninja, Meta, Binance. All of these are platforms that you can use to trade on. And then you can use different algorithms to do it, to analysis. But this is your basic structure. Your trader, futures, brokers, and now within futures, the main company or main instrument that we use is called S&P 500. There's a symbol for it, so it is S&P 500. What is S&P 500? To explain beginners is, the word stands for Standard and Poor's 500. It's not a poor as in money. It's just Standards and Poor is the company name, two names who put an index together. So what this is in the US, there are 500 companies. Apple, Microsoft, Google, like Walmart, Amazon, lots of companies are there. So instead of you buying a single stock of Apple, of Nvidia, of Microsoft, because let's say you have $100,000 in your bank sitting right now, or 20,000 or 5,000, pick any number, doesn't matter. You have, let's say you have 20 current sitting in your savings account, TFSA, in Canada, or you have in your RRSP. These you have managed to build up. How would you go into investment? The generic path is you would go to a bank, open up a RRSP account or open up TFSA, and you have 20 grand built up, and you're like, I want to invest. So the broker, or they will say, okay, where do you want to invest? You can say, well, I want to invest in, I want to buy some Apple stocks. I want to buy some Nvidia stock, because I'm hearing on the internet, you have an interest, everybody's talking trading, they have made money. So let me buy some Nvidia stock. So let's pick up Nvidia. Nvidia is trading, let's say $100. So, or right now it's $108 or so on futures. So you decide you want to buy Nvidia at $100. So they will give you 200 shares of Nvidia. Now you own Nvidia. Through maybe you will buy 5 of Microsoft, 2 of TD,
500 of this company, depending on how your 20,000 portfolio goes. So this is one company, very basic, one share, and you bought 200 shares of NVIDIA, and if that price goes up, you will make money, because now depending on how NVIDIA does business, it's like you're buying a share in a company. I've had companies where I have local shares. For example, I have a share in this company. How this company will do, I will make money because I own stock and shares of this. We put $1 million Sportsplex, Fat Sportsplex. About COVID came, Glenn McGraw came. We did our best. We spent $1 million building that. So I've done a lot of businesses that require a lot of money, real estate and everything else. But why not? We're not at the beginning pushing you to do this. We said, you know what, let's put you in futures, because why? It only costs you maybe at max $300. Maybe at max. That I'm saying maximum. Because we're not going to put our own money, so we're going to put you in futures. Now I have to address this because you have to have the answers when you are thrown questions. Question is futures, and especially in Muslims will say it's haram. Because it's futures, it's gambling. They will say stocks is okay, options is okay, everything is okay, but don't do futures. Because they will label as a forbidden product that don't do it. Why? Because it's gambling, you don't own anything. Let me break it down, because I like to have a counter argument of everything based on real scenario. You're in Toronto, some are listening, they may not know how Toronto environment was 2 years ago. Let's pick an industry, real estate. I have a lot of family members who are in real estate, everybody does. So let's go back to 2021. This is a real life case. 2021, you had an ad that you heard from somebody that in Niagara Falls, they're building a condominium, right? So they're building a 30 or 50-story high in downtown, in Markham or Ajax, and your real estate agent said, or friend or anybody, you could be yourself, they said the condominium is $500,000. Okay, no problem, very reasonable. And they're saying, put down $50,000. That's a real deal that normally takes place. So they ask you to put down 10%. And in 2025, the closing of this will happen. So what is happening in this transaction? So this was a gold contract. Now I'm going to write something here. Apartment number 209 in Niagara Falls, 500,000. And expiry of this is 2025 June. Now this is a piece of paper. You went to a real estate agent, you put down a check, you took a check out, you gave them $5,000, they give you a paper. Now condominium doesn't exist, by the way. It's just ground. Now you own this piece of paper. It is a contract, right? The real life. On paper, you are an owner, which is fine, no problem. How much of the value of this is? 50,000. You're going to buy it. It's part number 209, and I'm excited. I've invested my money, my savings into real estate. Perfectly fine. How much they're asking you to put down a deposit, maybe 1 year, 2 years, 1 month, is $50,000. So to make sure that that's advanced booking fee. You put in 10%. Now 2025 comes around. Now I'm going to own that unit. I'm going to either move in, but majority back then were looking for something called resell. Because what they wanted to do is, in 2025 will come, I'm not going to move in. I'm an investor, right? So the word they use in your agreement is carefully they wrote something called an AC, assignment clause. What is an assignment clause? I'm not a real estate agent. I don't speak. I'm just giving you very, very basic understanding of how things work. So what is an assignment clause? I will take this piece of contract, 2025 or earlier, I can sell it to somebody else.
So they will close that unit. They will exit that position. So I have a position open for $500,000. I've agreed to buy. I have put down $50,000. 2025 comes, and I have this ad. Guys, I own a condominium. Anybody wants to buy? Anybody wants to buy? And hopefully, before closing, you can flip this contract to somebody else. Say, hey, you are the owner of this. Give me $600,000. That's normally how the transaction takes place. You flip your contract, which is fine. It's a legal transaction, nothing wrong with it. Builder is allowing you to flip your condominium, and you're like, I booked it for, you only gave $50,000 to buy this contract or hold this contract. And if you have an assignment clause, you can flip this contract and give it to somebody else for $600,000. So the transaction here is speculation. It was a futures contract. Futures contract. In 2025 or 2021 or 22, you bought something that you're gonna, for future. This is not now. Not now would be a stock like buying a home today, closing it today. But this was a futures contract. So you have a futures contract that's going to expire on 2025. What is the condition on this contract? I have to take it. If I cannot sell it to somebody, I have to go to a bank to come up with $500,000. Everybody follows what I'm trying to say here? 2025 comes, now you cannot find a buyer. Market has tanked. Now this condominium, you have to close yourself. You have to take the ownership. Now you're stuck. Majority of investors right now are horribly stuck. Why? Interest rate has gone up in Canada, and there's causing a lot of stress because banks are now saying this condominium is not worth $500,000. This is worth maybe at best the same price that what you paid for. So we'll approve the mortgage. If you have cash, no problem. You pay $500,000 and now you own the building, the one unit. But if you don't have the money, the bank will say, I'm only going to give you maybe $300,000 for it. You have to come up with the rest. So it's a highly stressed environment. And you go online right now, every realtor is saying, we have a stress sale. We have a distress sale. The idea is everybody wants to sell this contract now. And there's just too many contracts flowing in the market saying, hey, I have paid, I think I let it go. I let it go because now there are consequences. Because now you have to own this piece of contract. Because you did this sale, an agreement, speculation. You didn't know what would happen in 2025. So anybody who goes after this product of future has to see in real life, when we are trading something, we are hoping future will do better, right? So this is a counter argument. Any realtor says the word is assignment clause, you're doing futures trading. So in 2025, you have to close it. In my case, what do I do? My contract expires in 5 o'clock. So I bought gold. I bought this gold. So now I have a gold contract right here. So yeah, this is the condominium contract, gold contract. So my gold contract says 2,500. I bought it. I didn't buy gold. I just have a contract of gold. Is it going to go up? I don't know. Is it going to go up, down? I don't know. But at 5 o'clock, I must close this deal. Either buy it or sell it or whatever, right? At a profit or a loss. Same thing. 2025 is going to come around. You're going to have to answer because you bought it as a contract. Either you're going to say to the bank, I don't have the money for it. I need a mortgage. Or you're going to ask friends or family. But whatever you have to do, you have to close your position. It's an open contract. Maybe you avoid it and you say, I got to sell it at a loss, right? But it depends on, same thing here. Only difference is my contracts are done in 10 seconds, 5 seconds, 30 seconds. 1 minute. Maximum by 5 o'clock, I got to take my profit or take my loss. So my job is to flip this gold contract, S&P contract, ES contract, Nasdaq contract. So I'm just flipping contracts whole day long, 23 hours a day. Benefit, you can't flip this contract in reverse. You cannot say this market is going to go down because this is a one-way contract that you're hoping price will go up.
In this, unless you buy options, which is to flip it on the reverse side in a stock, you're just buying it to go up. Here, you're stuck. But here, I can say in 5 minutes, gold is going down. In 30 minutes, gold is going down. If 1 hour, by 5 o'clock, I think the gold price is no longer 2,500. If it is 2,400, you have made $1,000. Because you can flip this contract in reverse too. So you have an option to bet on this contract in short position as well. I hope that makes a clear understanding. Though anybody giving you an argument that futures are wrong, sit down and they'll change their narrative. That this is not gambling. This is the real, you're just flipping your contract in 3 years or 4 years or 1 year. I'm doing this in a 1 day thing. So there is no difference whatsoever. Here you don't control the environment. You didn't know interest rate is going to go up. You didn't know the banks are not going to give the loans because immigration was great. SABA loans were coming in. Like a lot of money was poured in by the government as a free thing in Canada. Everybody bought property. And in COVID, only real estate kind of kept Canada alive, right? You booked a home, and you see those videos on TikTok and Instagram. People are ramming in, lining to buy this piece of contract. That I'm going to book today. I'm going to put 50 grand, and 3 months later, that 500 went to 550. And you know, I meet a lot of investors, and now they act a lot. They were acting very arrogant and like, you know, with a lot of ego. They thought they made a good mistake, like investment, and now 5 property, 6 property, and they managed to make a lot of money. It's fine. It's all about timing. But they had nothing to do with the price of the real estate market. It just happened to be, market was moving up, whales were buying, everybody bought, and price went up. Same idea. When you're going to press a button on gold and it's going to go up and you're going to make $400, you did nothing. You were just in the right time, right position, right entry, and you got it. And so if I say as a trader that I create something, it's a false. I don't create anything whatsoever. All I do is I look for an opportunity. Opportunity, this is the right time. I'm going to enter. And I'm going to put an order in for buying or selling, and I'm going to exit. I don't own gold. I don't own Apple. Like 500 S&P companies, nothing. I don't have any share. Who is a real company? Apple is a real company. NVIDIA is a real company. Microsoft, like Bill Gates or their crew is making something. Stock is just a zero-sum game. And if you understand what a zero-sum game is, trading is a zero-sum game. What does zero-sum mean in math? It's a mathematical equation. What does that mean? Let's say 40 of you come here every day, and every one of you brings $100. And they put it on this table. So 40 of you came in, they all brought in $100, $4,000 sitting right here. You know what will happen at 5 o'clock? Some will walk away with 200, some will walk away with 0. That 4,000 doesn't change. That's called a zero-sum business. Meaning, nobody is a loser in this trading business. Money is changing pockets. That $20 trillion worldwide. Today you lost a little bit, I gained a little bit. Yesterday I lost something, you gained. We want to be the top 3% who are winning consistently. So like I said earlier, 100 people will join, 97% will be failures. Why? They don't know how to protect their money. You're going to sit there, you're going to sit there, you're going to sit there. See an opportunity. Your job whole day is not to trade. Honest to God, your job is not to trade. Your job is to just watch for an opportunity. And that's the success. So if you look at my statuses, I posted yesterday that I made $10,000. So I have fellow traders sitting right beside me. They see the same thing. Why are they losing money while I'm making money? Because I am waiting for the right opportunity along. So Nasdaq is what I trade. I made majority of it after 4 o'clock. When the market crashed, went down, went down, went down. I'm like, time to buy.
So I waited for an opportunity, and then when the right opportunity came, I am like, all right, this is the best time, best case scenario to buy. And we give you all these tools and everything that you're able to understand it. So this gives me, you guys, an argument's sake, everything that, hey, when somebody says don't do futures, you know, and if they're a realtor, I say don't do real estate. And they're like, what do you mean? I'm like, you are doing real estate and you're telling me you're practically doing the same thing. I'm just doing it in a microsecond. You open a contract with the builder, you take your client somewhere, you sit down, they do a worksheet, you got a contract, and you're like, I bought a condo, you got a commission. So you're a broker. But when I do this contract in microsecond, I open a position, I can flip it in 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, 5 o'clock, I gotta close it. So that's the difference between, I hope everybody understands as clear as a day, as a vessel, that how futures trading works. Your job is just to pick something and trade all day. Go? Okay. Now, let's go and show you the software. So now I'm at a point that I assume you have watched those videos. You watch those videos, you're ready to go, you got 1 month of subscription maybe, and you understand. Now at this office, after 2 months, my team is going to challenge you. Because what we are seeing in everybody says, oh, software is great, let's make money. Nobody understands the foundation because they have skipped through it. So to address this, we're going to ask you, show me a diversion line. I'm just going to ask you. If you don't know a diversion, it means you have skipped video number 4. If I ask you to point out what a value area is, you don't know what that line is, and I'll show you what all of this matter means. Because what is happening is we make it so easy, and everybody says they're struggling, and I say, all right, let me show you. So this is what the software looks like. Now this is like an electric grid model. Like you see a lot of things on the screen right now. Now as a beginner trader, I don't expect you to know until you go through quite a few things. Now you get into trading, it is highly complex, I explained to you, because it's based on pure math, right? What we have done for you is made that tool that makes it easy to analyze. So you can get into trading much faster. Because like I said earlier, what a normal trader does is goes online, types in how to trade. A YouTube comes, an influencer is saying, follow my 12 steps, which is okay. They have developed their own program, and they're saying, go to tradingview.com, now let's look at analyzing gold. Then they start teaching you support, resistance, EMAs, MACDs, Bollinger Bands, RSI, large triggers, so 25 things, and you're like, I don't think this is for me. Because I don't think I can do this. This is math, and it looks complex, and most traders will fool you with multiple screens. They have 4 screens, they are thinking I'm highly, and it's not that crazy out there. It is so simple, but once you learn it, so we looked at what every trader was looking for. What is the requirement for analysis? There are 25 concepts that a person that needs to learn. So we looked at, so this software is doing 25 calculations for you. So let me give you I know I'm going to start throwing some trend examples. You have trend, you have value, and I don't expect the beginners to know any of this because now, so trend, value area, upper band, lower band, mid band, trend band, Fibonacci, large triggers, small triggers, RSI, higher highs, lower lows, volume. Let me see no diversion line here. Bollinger Bands, moving averages, and night session. So 25 things are done for you, which you don't have to do. If you were to do this on a beginner trader, give yourself about a year. You can learn it, no problem. For free, you can learn it.
What I'm teaching you, giving you that tool ready-made that gives you the highest chances of. So what is my software telling you? In this case, the background color is green right now. Last, look, and these are not time-based, they are volume-based. Your mind should be saying background color is buying, is green, so I have to buy. Buy from where? It tells you, my software will teach you, the lectures will teach you buy from where? Mid-band. Today you don't know what a mid-band is, but in your 14-day trial, you'll know what a word mid-band is. Because the language, I have to speak to you over 9 a.m. to 1 o'clock. What is a mid-band? So what I'm saying on the live stream, and you're listening, 30-20 has a diversion. 30-20 is overbought. Area is coming. Buy at the mid-band, sell at a mid-band. You don't know any of this today. But in 14, 15, 30 days, you're going to say, all right, it's starting to make some neurons, new building. I'm understanding, like a language learning. And then slowly you will learn all of these things. So this is what the software looks like. You don't have to draw a single line. Everything is done for you. All 25 things that a normal trader needs done. Your job is just to put an entry and an exit. I'm going to enter. So let's look at right here. I'm going to go back because that will answer his question. Right now, I'm standing right here. Standing right here, and you want to, what would be your action? Selling. Because the background color is sell, right? From where? From mid-band, right? You will go in and put a sell order at this price, 54.16. By the way, any given time, you can be switching rolled. When background color is green, you're buying. Background color is, you're not attached to anything. You could be a buyer or a seller at any time. So if you had sold it here, from here to here, the distance is 20 to, that's 8, that's almost 4 points. 60. 6. 50, 60. Yeah, so 4 points, $200. Sell karo to bahar aa jao. So I know it make it look so easy. अब अगला ट्रेंड जा रहा है. पहला मिड बैंड लग गया, ये लगा पास हुआ ना. You will sell again from where? 54.16 price. So as the time starts to go, now price is going down, 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 starts to bounce back up, right? You're waiting at the midline. Because you're waiting for a queue, you haven't placed it, you are not placed a trade yet. You only placed an order. You're sitting right here. Now your order got picked up, okay? आपने उसके against stop loss must लगाना है. There is no trade that you will ever do without a stop loss, ever. I don't care how big, how small, you have to put a stop loss. I don't care mid-band. Mid-band trade has one rule, 12 ticks. It doesn't have any other rule. So software is saying, sell, but protect yourself that if the market goes against you, I'm going to get out at $150 loss. That's it. If you call me and you say, I took a mid-band trade and I lost $300, I'm going to say, why? Because you should have a maximum loss of 150, right? But if you sold it right here, by the way, this was a gap trade too, because look, moving average did not move up, but from here, 54.15 to 54.11 is 4 points. I care about 2 points, man. I'm not here to like get $23 trillion. Each trade, we're after $100. And the goal is, now I'm going to switch my topic to address his 9 type of trades we have, right? Area trade, mid-band trade, diversion trade, gap trade, overbought, oversold trade. Then you have boxes, the trade, Fibonacci, value area trade. Forget about all. Just I'm going to give you a very, very simple trick. So let's look at top 3 trades. You have area, you have mid-band, which is same as
gap, and third type of trade is called high or low, which I will give you with high or low of the bar. Now, let's analyze this, break it down. When I'm telling you an area trade is 90% successful, like I'm giving you a 10-year data, right? How do I come up with that number? People ask me how accurate you are, right? In terms of, I've given you 2 years of data on areas, right? 2 साल की आपको शीटें गई. आप हर दिन का एरिया निकाल सकते हो जो पीछे में हमारा कंप्यूटर देता रहा है. So we have a prediction, like our software will predict up to 90% accuracy for information and educational. That if it predicts something, right? So area trades are 90% successful. So the word is, key point is 90%. So if you only stick, I'm not going down to gap trade, many 9 other types of trades. Let's stick to area trade. Hashmi Saab is going to come, Mansoor is going to come, Murtaz is going to come. They stick to one trade, area trade. Their highest probability, right? And you can interview them कि यार आपका कैसा 30,000 का पे आउट आ रहा है, आपका कैसे, आपने अभी मंसूर ने 7,000 का पे आउट लिया है last week. He's the one who's going to lead our NBT program. Murtaz has taken $10,000 in a month. Why? They're sticking to just one type of trade. They're not, they don't care about anything except the area, right? NQ or ES? One guy do ES, one guy do NQ. So area trade, that's Mansoor, by the way. You can pick his brain for $50 an hour. Just kidding, just kidding. So the idea is you can talk to him right now privately. Pari area trade kitna karte ho? Dekho. And he will tell you, he has one rule, expected high, expected low. आप रोज बैठेंगे expected high पे तो नहीं आएगी ना? तो क्यों ट्रेड ले रहे हैं? ना लें यार. बिजली के स्विच में जरूर उंगल देनी है. नहीं ना दें ना. अगर नहीं आए Nasdaq expected low पे तो क्यों बाय कर रहे हैं? छोड़ दें उस दिन को. अगर एरिया पे स्टिक करना है तो एरिया पे ही स्टिक करें ना. आप क्या करें? हो रही है. Majority of the traders says you have given us your first. It is very incredibly easy. अभी तो आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ता, राइट? अब उसमें भी 8 किस्म के ट्रेड होता, ये एरिया नहीं आया ना, चलो यार मिड बैंड ट्राई करते हैं. एक मिड बैंड फेल हो गया ना, चलें जी ओवरबॉट में चले जाते हैं. स्विच करके यार गोल्ड अच्छा चल रहा है, इधर चल जाते हैं. गोल्ड से निकले क्रूड ऑयल में घुस गए, क्रूड ऑयल से निकले नेचुरल गैस में चले गए, नेचुरल गैस से निकले डाइवर्जन ढूंढने लग गए, राइट? सो द आइडिया इज नॉट यू pick one type of a trade. That I will do only area trade, number one. An area, then you pick expected high or expected low, R2 or R1. Nasdaq में तो आपको ऊपर जिस तरह की आज 700 पॉइंट की मूव आ रही है Nasdaq में, अगर आपने सिर्फ बाय करके छोड़ा होता और सेल करके फ्राइडे को आपके $8,000 बन जाते एक दिन में, सिर्फ छोड़ देते. हम नहीं करते. हम नहीं 8,000 के पीछे, हमें कितने चाहिए? $200, $300, $400, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए. और माइक्रो ले लें और एक Nasdaq R2 से भेज दें, S2 से ले लें. उसमें भी मैं वो जो छोटे छोटे ट्रेड 150, 90, 70 के बने हुए माइक्रो से करता हूँ यार. वो पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं मैं करता ही माइक्रो. इतनी पावर है माइक्रोज की. एनीवे, अगला आप कहते हैं यार एरिया नहीं आता. मंडे को आया, ट्यूसडे को नहीं आया, वेंसडे को आ गया, थर्सडे को नहीं आया. टाइम, अब मैंने पैसे भी तो कमाने हैं ना. मिड बैंड ट्रेड हैज 70% चांसेस. इट्स चांस है ना कि आपने मिड बैंड ट्रेड लिया, 70% चांस है कि 7 लगेंगे, 10 नहीं लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे. हाई एंड लो has an average rate of 70%. So I'm just going to pick 3 trades. And let's dissect this a little bit. When you're trading, please, calm. Don't get excited when you make money. Don't feel down when you hit a stop loss. Calm. Absolutely.
Because these are just numbers. We're just playing, not money. दिया 410 दिन लग गया या 10,000 भी money है, minus 10,000 भी डम्बरी है ना. I'm going to say rule number 1. You will not trade after 11 o'clock. Strict रहें कि अगर एक सेशन पिक करें ना 9 से 11, 2 से 4, 3 से 6, 23 घंटे बफे खुला है तो मतलब ये है कि सारा टाइम खाते रहना, ऐसे नहीं है. तो अगर आप मॉर्निंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, यू डिसाइड 9 to 11. अब रूल को ना पूरा हफ्ता फॉलो करना है. 11 एक हो जाए ना, ट्रेड छोड़ दें. वो 10:30 बजे के बाद एक ट्रेड नहीं डालते नहीं है. जितनी मर्जी मार्केट ऊपर हो नीचे हो, मिस हो गया. 11 के बाद ट्रेड नहीं करना. 9 शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी अर्निंग वो आनी शुरू हो जाती है ना, न्यूज़ आनी शुरू हो गई. CPI, PPI, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट. सो 9 o'clock इज़ रियली सम टाइम. 8:30 पे काम शुरू हो जाता है. 8:31 के बाद रियली तेज़ी आ जाती है. So this is really the time when you can look at, say, number 2. 10 trades maximum. अब इस विंडो में 10 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होने चाहिए. मैक्सिमम एक दिन में 10 ट्रेड बहुत ज़्यादा ट्रेड है यार. 2, 3, 4, 1 इसी में काम हो जाता है आपका जनरली. नंबर 3, मेथड. एक मेथड पिक कर लें. एरिया ले लें, ओवरबॉट ले लें, डाइवर्जन ले लें, मिड बैंड ले लें, गैप ट्रेड ले लें. एक लेना 10. अच्छा, ये नहीं करना कि 10 ट्रेड डिफरेंट तरीक़ों से कर लेना. पता लगा एक एरिया कर लिया तो, क्योंकि मैंने आपको मैथ से प्रूव करना है कि 70% का रेशो कहाँ से निकलती है. So your method, let's pick a method of mid band. आप कहते हो यार कि राफे भाई मैंने हर मिड बैंड लेना है, ये मिड बैंड का ट्रेड आ गया. अब आपके ये मंडे के आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है. मिड बैंड आपने 9 से 11 करना है, 10 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने. एंड मेथड सिर्फ रखना है. आपको मिड बैंड में दिक्कत आ रही है ना अंडरस्टैंडिंग में. अच्छा, वो चलें, वो उसकी मेथड के रूल्स आर डिफरेंट, राइट. So you stick to mid band trade. It has some conditions. Software is saying mid-band, chances for mid-band to pass 70%, you have some conditions. Conditions है ना, ये भी check, ये भी check, ये भी check, ये भी check, तो मैं mid-band ले लूँ. इसकी अब condition देख लें. Not coming from area. Generally एरिया से आती है तो मिड बैंड तोड़ती चली जाती है जनरली. जितनी बड़ी हाई ओके, लेकिन R2, S2 पे वो तोड़ती चली जाएगी, ठीक है. तो अब आपने देखना है प्राइस रिवर्स कहाँ से हो रही है. एक कंडीशन है ना, मैंने आपको कंडीशन भी बता दी. आपने फौरन देखना है कि प्राइस कहाँ से आ रही है. सॉफ्टवेयर तो कह रहा है मिड बैंड ले लो, आप कहते हो कि मिड बैंड कहाँ से प्राइस आ रही है. तो ये भी तो आपने देखना है ना. Divergence line now. जब ये लाइन नीचे लग गई है, Happy calls it support line, resistance line. I call it divergence line. It's the same thing, right? अब आपको ये लाइन लग गई है, नजर आ रही है. आपका मिड बैंड आपका लेना बनता है कि नहीं? नहीं लो ना. अब मैं एक बता रहा हूं कि नीचे एक लाइन भी लगा दिया जो पिछले वर्जन में नहीं थी, कि आप कहते हो यार मुझे नहीं पता लगा डाइवर्जन लगी है कि नहीं. तो अब मैं कह रहा हूँ यार कि डाइवर्जन लग गई है. जो 2 पिछले वर्जन में ये नहीं था, ये लाइन नहीं लगती थी. एनीवे, यहाँ मैं तो यहीं से स्ट्रेंथ से देख के पता लग रहा था कि नहीं आई रही. तो आप इस मिड बैंड में क्यों घुसेंगे? पर आप कहते हो ये मैंने मिड बैंड ले लिया. मैंने सिर्फ 2 चीज़ें पूछी, यार एरिया से आ रहा है, आप कहते हो नहीं. मैंने कहा डाइवर्जन लाइन थी, आप कहते थी, फिर मिड बैंड नहीं लेना ना. तो आपने कंडीशंस भी तो फॉलो करनी है कि यार ऐसे 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 सारी चीज़ें होंगी तो मैं मिड बैंड को लूँगा. तो एरिया सिर्फ एक बार आएगा, दूसरी बार दूसरी लेनी जितनी मर्जी मल्टी. उन्होंने बात सही की. R1 S1 पे आप इग्नोर कर दो, बड़ी आएगी तो उसने तेज़ी से नीचे आना है, तो आप R2 को ना लो.
I think midman only have, of course, you must do this in trend check. 30-20 ग्रीन है, 15-10 ग्रीन है, ये आप ट्रेंड तो चेक करो ना. So 15-10 को और 30-20 को, sorry guys, I'm getting a little quick technical, but eventually these things will register in your brain what I mean. लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ गई है, नहीं, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है. नहीं ये आ गई ना, मिड बैंड से वो फ्लक्चुएट बैक हुई है ना, हाँ हाँ, तो ऊपर रेड बॉक्स आ गया, यस यस. तो वो ऑब्वियसली वो भी सक्सेसफुल नहीं. असल में मैं सिंपल इनको कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि एरिया सिनारियो, स्पेशली R2 से R3 सिनारियो, डाइवर्जन ये लाइन ना हो और आपका ट्रेंड सेम हो. अब आप कहते हो कि मैंने ये ट्रेड लेना है, ठीक है. मैंने अब आपको रूल दिए हैं. मेथड है मिड बैंड, इसको गैप भी कर सकते हैं क्योंकि इट्स वर्क्स द सेम है. नहीं, स्ट्रेंथ अब लेकिन वो जनरली आके दे जाते क्योंकि 30-20 की RSI मैटर करती है, 15-10 की नहीं. नंबर 4, लेट्स डू 1 2 3 4 5. इसमें एक और चीज मुझे पता लगी थी, आप कंफर्म कर दो आपसे. मुझे किसी ने बताया था कि जो दो लाइंस है ना RSI की, हाँ जी, अगर उन दोनों का डिफरेंस 13 या 10 से ज्यादा है, ठीक है, like one is at 80 and another one is at 63 ओके. or 65, then it's a more chances that बट जनरली उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी इन तीन के साथ 70% है. अगर आप इन तीन को फॉलो करेंगे आपके मिड बैंड सेफ रहेंगे, राइट. अब ये 10 ट्रेड मैंने लगाए हैं, 1 2 3 4 5, बल्कि इस तरह करते हैं डिफरेंटली, सिर्फ आपको मैथ समझाने के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ट्रेड्स हैं. अगर मैं आपको कहूँ भाईजान आके मेरे साथ बैठें और मैं आपको एक कॉइन दूँ और कॉइन की आपको जॉब दी है, कॉइन आपने फ्लिप करना है 10 दफ़ा. आप बताएं कॉइन की रेशियो क्या होती है? 50%. आप 10,000 दफ़ा करेंगे वो 50% ही रहेगी, ठीक. अब मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ यार, मिड बैंड ट्रेड इन कंडीशंस के साथ 70% लगता है, ठीक है. एक हमने एनालिसिस किया हुआ ना 10 सालों का. आपने पहला ट्रेड लिया और अच्छा एक और कंडीशन अभी छोड़ना नहीं है, 300 से ज़्यादा नहीं कमाने इस सिनेरियो में. अगर आप फुल का कर रहे हो तो आप अपने आप को 50 टू लेट्स से 300 के रेंज में रखें. $50 फॉर ए माइक्रो, कीप योर सेल्फ. आपका पी है ना 26,000 का है. FTT वाला एक 2-3 लाख के हैं, हाँ. और एक 50 वाला. अच्छा मुझे एक आंसर कीजिएगा जेन्युइनली. आपके पास $25,000 में 1500 मिलते हैं ना. आप आज 1500 लो और जाके GFF में डाल दो रियल का पैसा. मुझे ये बताएं आप उसमें कभी मिनी करेंगे? इधर क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं आती. मैं अभी इनको बता रहा था, अगर 7500 भी होंगे ना मेरे अकाउंट में GFF के, मैं तब भी मिनी नहीं करूँगा. फिर इधर क्यों करते हैं? फिर इधर क्यों करते हैं? लेकिन मैं आपको आपके पास $1500 है, आप गए GFF में महीने के वो भी दिए, वहाँ अपने पैसे को पैसे, वो कहते हैं ना कि माई डॉग आपका डॉग, वो जो आपने सुना हुआ है. भाई ये भी तो पैसे आप ही के हैं, इसमें आप क्यों एग्रेसिव खेल रहे हो? आप सिर्फ आपको फीलिंग नहीं आ रही कि मेरे पैसे लगे हैं, राइट. $1500 का अकाउंट है, क्यों इसमें मिनी डालते हैं? ये पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ इतनी जल्दी. अच्छा EA में जो मर्जी करो, मैं आपको हेज करो, पास करो, EA को PA बना लो यार. PA आपका रियल पे आउट है, उसमें एक माइक्रो से भी मैं 7500 वाले अकाउंट में पता कैसे स्टार्ट करता हूँ? 5 माइक्रो से. आप कहोगे यार अब ऐसे अब लेकिन मेरे मसला है 5 माइक्रो कितने बने? $10, ठीक है. MNQ पे मेरे पास $7,500 है, ठीक है, अकाउंट के अंदर. वही है ना मैक्सिमम कैपेसिटी. अब मैं उसमें क्यों 2 मिनी डाल दूंगा? क्योंकि अगर वो मार्केट क्रैश हुई तेज़ी से, माइक्रो तो संभाल जाएगी ना. अच्छा लेट्स से आपके ख़िलाफ़ जाती है, 75 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 750. न्यूक्लियर जंग चाहिए हमें 750 गिरने के लिए. कल जितने भी हालत बुरी थी 550 पॉइंट गिरी, फिर वापस आ गई.
आ गई ना। मैं माइक्रो 5 से स्टार्ट करता हूँ, एस जोन में बाइंग में रहता हूँ। एफटीटी में तो ये मसला थ्रेशोल्ड का भी नहीं है। $100 देखें, बाहर आ गया। मैंने और माजिद भाई ने लास्ट 45 मिनट में $600 एफटीटी पे, उन्होंने ब्रांड न्यू खोला मेरे सामने, 600 बनाए, बंद कर दिया। कितने? 2 माइक्रो, 1 माइक्रो। कितने हम चाहिए? एक ट्रेड में $50 चाहिए यार। मार्केट क्या मैं इतना, आप तो नैस्डैक करते हो यार, $50 बन जाते हैं? नहीं, मुझे आपसे ही क्वेश्चन पूछना, बन जाते हैं कि नहीं? तो फिर मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि आप लोग उठ नहीं रहे हो, या फिर आप लोग एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हो। चलें ठीक है, अब आपका रूल ये है कि 50 से 300 तक है, ठीक है। ये कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, 9 से 11 तक ट्रेड करना है, 10 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना। मेथड पिक करना है तो एक पिक करना है, और 50 से 300 में मैंने बना लेने। अब इमेजिन करें कि आपका पहला ट्रेड, अच्छा अब इसका स्टॉप लॉस क्या है? लेट्स लुक, कह रहे हैं मिड बैंड स्टॉप लॉस। प्रॉफिट हम रखेंगे $100 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 150 का। यही रखते हैं ना कि 150 पे आपका। अब आपको पास पहला ट्रेड लग गया, आपको $100 बन गए, ठीक है। यहाँ पर +100 लगता हूँ मैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा ट्रेड आपने डाला मिड बैंड का, 100 बन गए। और अब आपका तीसरा ट्रेड, मैं हर एग्जांपल लगाऊंगा, तीसरा ट्रेड डाला, $300 बन गए। आपकी ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। आपने 7 दफ़ा कॉइन फ्लिप और क्यों करना है, मुझे यहाँ बता दें। एक ट्रेड लग चुका है। अब देखिए, कंडीशन 70% ही रही ना, चेंज तो हमने नहीं किया। अब होगा क्या, ये 10 दफ़ा कॉइन फ्लिप हो रहा है। हम ये कह रहे हैं हमारे मिड बैंड के ट्रेड में 70% फ्लिप सही होता है, मीनिंग के प्रोबेबिलिटीज ठीक जाती है। आपने पहले ही 3 जो मिड बैंड ले लिए सही गए, ठीक है। वाई वुड यू वांट टू फ्लिप एंड टेस्ट योर लक 7 more times? आपका टारगेट भी पूरा हो गया। तो गाड़ी लेने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी में भी 1 लाख माइल पे वारंटी देंगे, या पर 4 साल पे देंगे, जो पहले आ जाए। अब आपका प्रॉफिट पहले आ गया है, तो आप कहते हो नहीं यार थोड़ा सा होगा, ये ट्रेड बुरा जाएगा, ये ट्रेड बुरा जाएगा, ये ट्रेड बुरा जाएगा। अब आप पे ना मिड बैंड पे ट्रस्ट खत्म हो गया। आप कहते हो यार 3 मिड बैंड खराब लग गए, जब पहले ये भी तो वही मिड बैंड थे, ये सही लग गए ना। तो आपकी कहने का मकसद है कि यू हैव टू मेक श्योर, हु इज दिस मामू इज कॉलिंग, ही कैन बी, सॉरी गाइस, आई कैन एक्सेप्ट। सो you have to come up with a plan every day. Guy behind you, he has $7,000 in payout. Apex ने उनको कहा भाई वीडियो भेजें कि आप खुद ट्रेड कर रहे हो कि नहीं। वो बेचारे थोड़े से पैनिक हो गए थे कि यार एपेक्स ने पे आउट, क्योंकि इतनी सक्सेसफुल रेट, जितने सुपर एरियाज के सारों को ईमेल गई कि क्या मसला यार, सुपर एरिया से निकलता है पे आउट ले लेता है। उन्होंने कहा जूम की कम्युनिकेशन, वो भेजें हमें वीडियो भेजें और अपना भेजें कि आप मैंने उनको फिर एक स्क्रिप्ट लिख के दिया कि यार इनसे कहो ये मैं हूँ मंसूर, ये मेरी ये पार्टी हो रही है। सो तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही गॉट अप्रूव्ड, राइट। व्हाट ही डज, ही इज लाइक आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दिस, मैं एरिया पे वेट करना है। R1 पे आएगी, R2 पे आएगी, S1 पे आएगी, नहीं आई तो मैं नहीं ट्रेड कर रहा। एंड सक्सेसफुल है, वो चेंज नहीं कर रहे, मेथड नहीं चेंज कर रहे। सो स्टिक टू वन थिंग। अब मैं आपको मिड बैंड के जी इसी में क्वेश्चन है। यस सर, मेरे ख्याल से थर्सडे को मार्केट R3 से गिरी थी। बिल्कुल सही है। S&P सर, उसने 6 मिड बैंड, 6 रिट्रेस मिड बैंड के ये हैं, Yes. बट एग्जैक्ट मिड बैंड पे नहीं आई, 2-3 दिन टिक पहले नहीं, अब नथिंग वी कैन डू अबाउट तो इट, वो छोड़ दें, छोड़ दें। आपने अपने रूल से नहीं हटना। अगर मिड बैंड है तो मिड बैंड पे रहना, अगर लो ऑफ द बार है, लो ऑफ द बार। अब मैं आपको इससे भी आसान ट्रेड बता दूं। सर इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाँ जी 2 पॉइंट पूरे नहीं देती कि एरिया सर, 2 पॉइंट 1% पे बात हो जाती है। ठीक है, मैं उसको ये कहता हूँ, आपने एसएल लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने ये मिड बैंड देखा हुआ है यार, मुझे यहाँ से भी 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी 2 दे रहे हैं, यहाँ से भी 2 दे रहे हैं। ये मिड बैंड मैंने स्किप कर दिया क्योंकि डाइवर्जन थी। अब अगले से भी 2 दे, अब ये देखें 1 2 3 4 मिड बैंड तो
2:50 से 3:45 मिनट के ठीक हैं। हो ये रहा है, आप देखते हो 100, आपको ट्रस्ट नहीं है। देखिए एक खौफ है ना, अब खौफ ये है, आपने हर ट्रेड में, मिड बैंड के ट्रेड में 150 का लॉस बुक किया हुआ है, कि वर्स्ट कम सिनेरियो है ना। डबल हो जाता है ना, जब 175 से ज़्यादा हो जाती है। नहीं वो ठीक है, नहीं आई नो एफटीटी के मसले ये नहीं है। नंबर 2, चलें ठीक है, आप कहते हो कि मैंने इसको सिचुएशन को संभालना है। मैं हर लेक्चर में कहता हूँ इफ़ यू कैन लर्न टू मूव योर स्टॉप लॉस, आप विनर हो जाओगे। फ़र्क यह है कि रियल मनी में और एपेक्स में एक मेजर फ़र्क है कि वो काउंट शुरू कर देता है $75 से, 75 से 150 का लॉस काउंट करेगा। ये टीपी लगा हुआ है 100 पे, ये एसएल लगा हुआ है 150 पे। मैं आपको लाइव मेथड बता दूं, $50 पे मैं अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे ले आता हूँ। नहीं ठीक है, फिर या फिर उस पर हौसला रखें। देखें आप कह रहे हो मैंने कुछ भी नहीं देना, और या आप कह रहे हो कि यार बड़ा नुकसान हो जाता है, एक चले 50 पे ना रखें, -50 पे रख लें, 8 टिक्स दे दें अपने आप को। आप कहते हो, अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, आपने यहाँ सेल किया, ठीक है, इस प्राइस पे, पहले आपके खिलाफ -75 गई है, वहाँ पैनिक क्यों हो रहे हैं? आप -75 बंद करो जी यार, इसने तो निकल जाना है, वो जाती है और रिट्रेस करके चले। ग्रीन लार्ज ट्रिगर्स 30-20 पे खुले हुए हैं, अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, मिड बैंड लग रहा है, खुल के जियो यार। खौफ किस बात का है? खौफ पता क्या है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट? होने दें, नो प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा खुला खींचती है ना, जैसे बैठे हैं अच्छा बहुत खुला खींचती है। ये स्टॉप लॉस बहुत दूर लगाते हैं। 18 पीए बने हुए। उफ तौबा। एनीवे दैट्स बिसाइड द पॉइंट, बट द आइडिया इज आप एक ट्रेड उठा लो, उस पर स्टिक करो, रोज़ के 200। यार आप सामने बैठे हैं, आप 6-8 मंथ से हैं यार, इतना बुरा हाल है कि 50 नहीं बन सकते। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन ना वायर हो जाता है कि एक दिन में जब हमने 1000 बना लेते हैं ना, हम अगले दिन कहते हैं यार कल 1000 बना था तो आज भी 1000 बनेगा। और यार ठीक है, आपका कई दफ़ा पता क्या होता है, यहाँ से सेल किया, ये 6 पॉइंट गिर गई, आप कहते हो ग्रेट है, राइट? हर मिड बैंड को आपको लाइफ जैकेट तो बना देते हैं यार, हम लाइफ जैकेट बना के भेजते हैं ना, या बगैर लाइफ जैकेट के भेज देते हैं, बेचते हैं। ओशन में स्विमिंग के लिए भेज रहा है, लाइफ जैकेट स्टॉप लॉस की भेजी हुई है, तो उस पर यकीन। मोस्ट पीपल ह्यूमनली स्पीकिंग डोंट बिलीव इन अ लाइफ जैकेट। वो उसका नाम ही लाइफ जैकेट है भाई, कि वो आपकी लाइफ बचाएगी, यू नो, बिकॉज पहनी हुई है ना, तो आपका स्टॉप लॉस अनलेस के रिदमिक क्रैश हो रेयर चांसेस में, इट विल हिट योर स्टॉप लॉस एंड गेट आउट। होता ही है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मेरा जनरली मोस्ट पीपल डोंट। अगर माइक्रो कर रहे हो तो ठीक है यार, आप ना करो, लेकिन मिनी में तो स्टॉप लॉस लगाना है। यस जी, हाँ, तो आप उस दिन न्यूज़ वाले दिन हैवी न्यूज़, वॉलेटिलिटी है ना। देखिए मैं ये इस सारे पहला चैप्टर आपको न्यूज़ दिखाया जाता है, और पहले चैप्टर में बताया जाता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है। फ्राइडे को मैं भी सिर्फ एरिया खेल रहा था, मैं कहा भाई कुछ और नहीं करना, नॉन फॉर्म, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ऑप्शंस, नॉन फॉर्म, उसके बाद आगे आपकी PMI आई, रेड 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 रेड, 10:15 तक यही काम चलता रहा। सबसे दरमियान में ब्लैक रॉक की अर्निंग्स आ गई, तो वो मार्केट गिरते गिरते, लेकिन या तो अब प्रॉब्लम है कि अब आपको क्या सिखाया गया है कि 11 बजे FOMC है, ट्रेन को गुजर लेने दें यार, आपने ज़रूर सामने खड़े होना है। होना ये है कि उसने आपको, देखिए आपके पास आपके $1500 ना, वो नियाग्रा फॉल में एक डॉट की तरह है, जितना पैसा मूव हो रहा है। उसने 11 बजे माउथ खोलना है, आप साइड पे हो जाओ भाई, ये मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो उसके बाद कर लो, आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद। अब होता है कि लोग मेरी तरह के, हम क्या किया, 11 बजे मैंने 2 माइक्रो लगा दिए, वो $400 हो गया, तो -400 भी हो सकता था, तो इट्स बिट अवे। तो
न्यूज़ इज रूल्स फर्स्ट थिंग इज डैनियल आके मॉर्निंग में ही आपको कह देता है जो स्ट्रैटेजी मैं सुन रहा होता हूँ ना, आप उसकी एक लाइन सुन लें. यू नो व्हाट ही सेज, टुडे हाई टू गो लो वुड बी अ गुड डील. दैट्स ऑल आई केयर अबाउट. आई वांट टू नो कि आज मैं लॉन्ग में रहूँगा या शॉर्ट में रहूँगा. आर जोन में मैं सेल बेच देता हूँ, एस जोन पे मैं बाई कर रहा हूँ, राइट. सो आप अगर मैं कह रहा हूँ दिक्कत आ रही है यार, इस फ्लोर पे आ जाओ, हमारे साथ बैठ के ट्रेड कर लो. कोई न्यूज़ वाले दिन ना मार्केट डिस्टर्ब रहता है। नहीं, वॉलेटिलिटी आपकी हाई. देखिए एफओएमसी वाले दिन तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. जैसे वो हाई टू लो कहते हैं, सो डज इट मीन दैट वो जो बार्स लगी होती हैं एरिया नंबर्स के ऊपर ग्रीन एंड हाँ. सो दे आर इन कनेक्शन विद देम. No, that means high to go low, meaning कि resistance zone में sell करें, आ जाए बैठे, anywhere. So or support, when he goes low to go high, that means every time your price is going down, you should be. अगर मैंने उनकी कम्युनिटी रिस्क कर दी, हाँ, सो हाउ डू आई नो कि देखिए उन्होंने क्या कहा. that you kind of have to kind of tune. हल्की से लगा ले, अगर ना हुआ तो आपको इसमें just one suggestion that before Daniel starts speaking, आप एक बार अपना मोबाइल चेक कर लिया करो because sometimes voice की disturbance आ रही होती है. I'll try to fix quite a few things, but majority people आजकल हमने वो भी लिखना शुरू कर दिया जो 8:30 बजे लिखा आता है कि बेस प्रेशर क्या है. वो हेल्प कर देता है आपको, एक रियली पता लग जाती है कि आज स्विंग किस तरह. हाउ दोस कम्युनिटीज कनेक्टेड, बट ही सेज कि लो टू गो एंड बेस एंड प्रेशर. In two different things. He does his own analysis based on वो अलग चीज़ है. Green, both green. So what does that mean? Mean we stay in buying. And कभी-कभार वन रेड एंड वन ग्रीन आता है, तो उसका क्या मतलब? देखिए बेस क्या है, पहले तो डिफाइन करें बेस क्या है. बेस होती है कि पिवट पॉइंट से ऊपर खुल रहा है, जी, तो पिवट पॉइंट से ऊपर है तो इसने नाइट सेशन हाई पे जाना है. पिवट पॉइंट से नीचे खुल रहा है तो नाइट सेशन लो पे जाना है. अब कई दफ़ा आप पहला ही ट्रेड डालें 9:30 पे और ऊपर जा रही हो तो आप बाइंग में रहें. हमने बाइंग में कैसे रहना है, फ्रॉम द मिड बैंड. पॉइंट क्या चार्ट पे नहीं होगा. पीपी लिखा आता है 30-20 पे पीपी का. वो अगर नहीं दिखता ना तो बड़े चार्ट पे देख लिया. हाँ, आ रहा है 60 मिनट वाले को तो मेरे ख्याल में सही है. सारों पे आ रहा है. 60-30 भी आता है, Nasdaq का नहीं आता है. नैस्डैक तो दूर है बहुत. हाँ, तो Nasdaq का तुम बड़े चार्ट पे देख लिया करो, PS का आ जाता है इसमें. 15-10 के चार्ट पे भी आता है. नहीं, वो तो 30-20 यार हायर. एरियाज का आपका प्लान है मोबाइल ऐप पे ले जाने के लिए? नहीं अभी नहीं है. उसके थ्रू आप बहुत सारी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूजर्स को कि एरिया आने वाला है, डी अलर्ट. Okay, I'll tell you the reason why it hasn't been successful. Chicago Mercantile Exchange said that if you want live data, you gotta pay us per subscriber like $12. And if they find out we have 10,000 subscribers, you see where the money goes. They said because you gotta pay at least $5, that would be a $50,000 a month bill. अब डिलेड डेटा का मसला है कि फ्री है डिलेड डेटा. डिलेड डेटा आपको 10 मिनट बाद आएगा, जब प्राइस उतर भी चुकी होगी फिर आपको अलर्ट आएगा. तो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू. लेकिन उसके लिए कमेंट्री चल रही है. जो जिस चीज़ प्रोडक्ट पे हम एक्सक्लूसिवली मंडे से मंसूर भाई करेंगे ना, वो एनबीटी का ग्रुप है कि आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ही एंट्री हो जाएगी. अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, डिफरेंट टाइम जोन पे बात हो रही है, डिफरेंट. वो कह रहे हैं मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा. आप अपना निंजा उनके निंजा के साथ अटैच कर दें और सामने बैठ जाएं एज ए को पायलट. मंसूर भाई ट्रेड लेंगे, आपके कंप्यूटर पे भी ट्रेड लग जाएगी. Now I have to clear myself online. This is not an account management service. This is teaching you. अब वो कहते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ. वो भी सिम पे ले रहे होंगे, आप भी सिम पे रिसीव कर रहे होंगे. 1-2-4 दिन बाद आपको पता लग जाएगा मंसूर भाई क्या कर रहे हैं. Right? So that's how you're going to learn to trade, which are. So now I have 3 volunteers who are going to sit. You can say, all right, I want to see how Murtaz is trading. I want to see how is he trading. पर इनको नहीं परवाह पीछे कौन सा अकाउंट लगाएं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हर चीज़ तो हमारे टाइम पे नहीं चलनी ना. हमने देखें, हमने वेट करना है, जब मार्केट रेडी होगी तो हम रेडी होंगे. जिस तरह वो कहते हैं कि यार एरिया नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड हाई पे मैं नहीं खरीद रहा या बेच नहीं रहा, तो अब आप कहोगे यार मेरा आज ट्रेड नहीं लगा. अब वो प्राइस ही नहीं आई तो वो नहीं ट्रेड लेंगे. राइट. सो ट्रेडर डजंट हैव टू
कि यार आप मैं ऑफिस जाता हूँ ना, वो 9:30 ऐसे ट्रेडर बैठे होते हैं जैसे अभी कोई ना खाना खुलना है और उन्होंने खाना शुरू कर देना है। आप बैठो, आप एनालाइज करो, आप देखो। पहले तो है कि 23 घंटे मार्केट खुली है, 9:30 पे सिर्फ स्टॉक मार्केट खुलती है। आप देखते हो कि क्या हो रहा है, ब्रीफ सुन ली थोड़ी सी, फिर देख लिया अच्छा मेरा एरिया क्या है। अगर आप सिर्फ फ्राइडे को देखो, मेजॉरिटी मैंने गाड़ी पुल ओवर की, अगर मेरा स्टेटस देखा होगा, मैं हाईवे पे 60 पे रुका हुआ, इंडिकेटर लगा हुआ है, मैंने देखा नैस्डैक 100 पॉइंट नीचे गई है। सुपर एरियाज आ चुके थे, 800 का एरिया था, मैंने 800 से बाई लगाई 5 माइक्रो पे, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। ऑफिस आने से पहले मेरे $4000 बन चुके थे, राइट। सो लाइक 20 अकाउंटों में, एक में नहीं है। पीपल आर गोना से व्हाट एम आई टॉकिंग, राइट। सो सिर्फ अगर आप एरिया नैस्डैक का देख लो ना, मैंने मंसूर भाई को सारी चीज़ें ट्राई की, नैस्डैक ट्राई की, ईएस की। एक बंदा नैस्डैक कर ले ना, वो कुछ और नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी तेज़ वो मूव होती है। और आपने सिर्फ एक राइड ले ली ना। अब हुआ ये कि जब FOMC की न्यूज़ आई 11 बजे, मैं ट्रेड में था, FTT में ट्रेड लगता है, आई मेड $3300। नाउ आई एम इन डिफरेंट सिचुएशन। FTT में आप 600 से ज़्यादा रोज़ की कमा नहीं सकते। नाउ आई एम लूजिंग मनी। पहले ट्रेडर आपने सुना होगा जो बैठ के लूज कर रहा है कि कम इनटू द 600 के थ्रेशोल्ड में आ जाए। एंड आई विल शो यू माय FTT अकाउंट्स। मैं आई हैव नथिंग टू लाइक, आई विल लॉग इन टू माय FTT प्रोफाइल राइट नाउ, बिकॉज पीपल से ओ आप कुछ नहीं दिखाते। यार मैं जितना मैं दिखा देता हूँ ना। सर आप बड़ा ट्रांसपेरेंट चलते हो। Okay, fast right trading. Let's log into my account. My account right here. मैं क्यों इस पे स्विच हुआ हूँ? Why? Because the idea is it's like a real account. लेकिन ये एक्सपीरियंस लेवल 2 के लिए है। पहले डेमो, फिर एपेक्स, फिर FTT, फिर एक्सेल ट्रेड, FTMO, फिर अपना पैसा। साल बाद अपना पैसा डालेंगे। इसका ये फ़ायदा है कि जो पैसे मिले अपने होते हैं। ये नहीं है कि यार मैंने 1000 देख लिए तो माइनस किए। अब एपेक्स का मैंने, अगर आप सुन रहे हो, पाजी ने 1500 बना ले सी PA में। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम देखिए, मैंने जब बनाए तो मैंने तो लूज़ कर दिए, मैं 600 के अंदर आ गया। अब उल्टा उनका, अब उनके पास 25,000 का है, अब वो लूज़ क्या करें, वो तो फंस गए ना। तो अब वो प्रॉब्लम हमने फिर इस FTT से दूर किया कि यार आप 50 देखोगे, 50 पे क्लोज किया, 50 आपके रियल की। So this is my account. Let's pick a account summary. Where is it? Payout request, nothing here. General account summary. Look at this trade. This is a $150,000 का account है, और ये मेरी 30 days की journey है. Let's look at September. This is 1 out of 20 accounts. Let me show this on, because nothing here I want to do hidden anything at all. So I bought them last Friday. इस ट्रेड में 2 ट्रेड लिए, $475 बनाए, 480 बनाए, 370 3 ट्रेड, 2 ट्रेड 245, 2 ट्रेड 370, 1 ट्रेड $95, स्वीड गार्ड ओनली माइक्रोस। अब मेरे पास थोड़ी लग्जरी है, मैं ज़्यादा बैठ सकता हूँ, मैं 1 बजे तक बैठ सकता हूँ। फुल टाइम क्या, ओवर टाइम करता हूँ जब मौका मिला। वो वाइफ तो कहती है तुम कैसीनो को बेडरूम तक ले आए हो, रात को भी लगे होते हैं, वो प्राइस ऊपर आ गई नीचे। तो इट्स ए कर्स फॉर मी दैट आई हैव एक्सेस टू सो मच। बट इसको पता है कि मैं 600 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, राइट। सो एक 600 मेरी लिमिट है पर अकाउंट की। सो दिस इज़ नंबर, सो day number 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. This is my day number 6. Let's go into September. सर ये 20 अकाउंट्स का टोटल है या नहीं, एक अकाउंट का मेरे पास भी सर 2 माइक्रो 3 माइक्रो लगाया है। यार मैं 10 पॉइंट के बाद बाहर आ जाता हूँ। लोग पावर ऑफ माइक्रो ही नहीं समझते जितनी मैं पावर ऑफ माइक्रो नैस्डैक को करता हूँ। 2 पॉइंट के बाद कितने, $4 का एक हुआ, 10 पॉइंट मूव हो गए, $40 आ गए। मैंने अगर 4 ट्रेड कर लिए, अगर 5 माइक्रो से भी गया और 2 ट्रेडों में 200 300 बन जाता है यार। अब माइक्रोस यार, माइक्रोस। So putting 2 trades in one.
नहीं, टू ट्रेड ज़रा लंबे गए, पॉइंट्स ज़रा ज़्यादा लिए कि अगर मैक्स ये बड़ा अकाउंट है, ये 7500 होगा, सॉरी दिस वन इज़ 5 माइक्रोस, 5 माइक्रोस, 5 माइक्रोस, हाफ अ मिनी, ये $10 का एक पॉइंट है, 20 वाला नहीं। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी होता है कि आपके प्रॉफिट्स बनना जैसे शुरू हो जाते हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पैसे हो रहे हैं, हाँ, अब आपको वो पेशेंस कैसे मिलता है कि ये और ऊपर नहीं, आई डोंट केयर। बाहर आ जाते हैं फौरन? नहीं, मैं आ जाता, ठीक है, क्या हुआ, मैं देखें, बात यह है कि जब गुरविंदर के $35,000 का पे आउट ज़ाया हुआ ना, मेरी कन्वर्सेशन आप सुने, मैं लाइव पे क्या कह रहा था, मैंने कहा पाजी एपेक्स में जाओ, पे आउट का बटन दबा दो, सिर्फ ये कह रहा था। मंसूर भाई पीछे बैठे, मैं यही बैक करता रहता हूँ कि जो पैसा एयर में है ना, वो एयर में है, जो आपकी जेब में है ना, आपकी जेब में। अब मुझे एक रूल है, मेरा एक रूल है कि यार मैं $200 देखूँ ना 5 माइक्रो से, तो मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ कितने लगे, 7 ट्रेड लगे और $510 बने। तो मेरा रूल ये है, अगर 5 माइक्रो है तो $10 का एक हुआ। वो नैस्डैक 20 पॉइंट की स्विंग दे देती है, इतना बुरा हाल भी नैस्डैक में नहीं है, और 20 पॉइंट आ जाते हैं। मैंने $200 देखा, 100 पे मैं बंद कर देता हूँ यार, 50 पे बंद कर देता हूँ अगर 2 माइक्रो हों। मेरे साथ माजिद भाई बैठे आएंगे अभी, मैं कहा माजिद भाई लगाएं, लगाया, $37 क्लोज, $38। वो कहते हैं यार ये तो 140 तक जानी थे। और भाई हमें क्या पता 38 भी जेब से चले जाते। तो आपने गोल रखना है कि यार $50 बायर से, गोल कितना है, 50 से $300 बनाना है रोज़ का। अगर आप $300 रोज़ बनाएं तो महीने के पता कितने बनते हैं, $9,000 राइट। अगर 30 भी ना लगाएं, $6,000 बनेंगे, 6,000 टाइम्स 1.35। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौन सी जॉब $8,100 कैनेडियन पर मंथ देगी। आई डोंट नो ऑफ एनीथिंग दैट इज़ सो चीप। मेरी कॉस्ट कितनी है, $300 लगाई ना मैंने, एपेक्स है, 7500 का अकाउंट खुल गया। अब मेरी जॉब क्या है कि मैंने इसमें से $3,000 निकालने हैं, यही जॉब है ना, सारों की यही जॉब है, मेरी तो डिफरेंट नहीं है। मेरे पास चलो 20 अकाउंट है, मैंने 6,000 इन्वेस्ट कर दिया, एपेक्स से आया इनको दे दिया। मैंने कहा यार ये बेटर है, मैंने $12,000 इनको भेजा है अपने वाइफ से, एपेक्स से ट्रांसफ़र हुआ, मैंने आगे भेज दिया। वाई, 20 अकाउंट अपने ले लिए, 20 वाइफ के ले लिए, इसमें को एक्सपायरी नहीं है, ये रियल मनी है, एक अकाउंट। अब ये पीछे थे 5, 6, 7, 8, 9, सितंबर 6 फ्राइडे, देखिए 17 ट्रेड हुए हैं, $20, $40, $20 करते 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 582 मैंने देखा भाई 600 से नीचे बंद कर दो। एलिजिबल हूँ मैं, ये ऊपर देखें, वो कहता है विनिंग ट्रेड 41%, जीत रहा हूँ ना, इट्स नॉट अ बिग डील। ओवर बॉट ओवर सोल्ड खेल रहा हूँ, एरिया से खेल रहा हूँ। आई हैव डन 108 ट्रेड, 7-10 रेशो। नाउ कितना पैसा बन चुका है, नेट प्रॉफिट हैज़ बिन $3,800, आपके सामने है। लास्ट फ्राइडे को उन्होंने मुझे $7,500 का अकाउंट खोल के दिया था, मैंने $300 भिजवाए, मेरे पास $7,500 आ गए। आज क्या डेट है, आज है ये आपकी सितंबर 6 तक रखें, क्योंकि मैंने, और ट्रेड मैंने कितने किया है, 9 दिन, तो 9 दिन में मैंने बनाए हैं $3,800। 3,800 डिवाइडेड बाई 9, एवरेज बन रही है $400 पर डे। अगर मैं 400 ही एवरी डे बनाता रहूँ, एवरी डे 400, 300, 500, 600, 7,500 बनाने हैं मैंने, डिवाइडेड बाई 400, 18 दिनों बाद, 9 दिन और मेहनत करनी है ना, मुझे $3,000 भेज देंगे वो। इट्स फ्री मनी सिटिंग ऑन द टेबल। मैंने कितने इन्वेस्ट किए, 300, उन्होंने मुझे भेज दिए 18 दिनों के बाद 3,000। लेकिन पहले इससे कि हम इधर जाएं, एक्साइटेड हो जाएं, एंट्रियां तो करनी सही कर लें, एंट्रियां तो करेंगे सही तो ये प्रॉफिट आएगा। एंट्री नहीं सही हो रही तो अब एंट्री के लिए मंसूर भाई ले लें, उनको पैसे पे कर दें, वो एंट्री लेंगे, आपकी एंट्री लग जाएगी। अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारी सर्विस है, इट्स नॉट फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पसेस टू हाउ ही टेक्स एन एंट्री। आप कर सकते हो, डेली रिक्वेस्ट इसमें कर सकते हो, हर 10 दिन के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखिए अच्छा, जो एक सेकेंड, लेट मी फिक्स दैट, सॉरी, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस।
आपकी विश ग्रांटेड है, आप $7500 GFF में डाल दें, विश ग्रांटेड। 7500 उधर डालें, जितने पैसे रोज कमाए रोज निकाल लें। ऐसा ही है ना, एक तरह देखिए आपने कुछ खुद कॉम्प्रोमाइज करना है कुछ। अब इसमें क्या फ़ायदा है, $300 आपके लग रहे हैं। By the way, not for beginners. I'm going to take you guys on a $30 journey before you go to a $300 journey. Don't get excited yet. पहले आपसे $300 का एग्जाम पास करवाना है कि आप 1500 कर सकते हो कि नहीं। This is level 2. Your risk is $300. How much money they're depositing into your account? 7,500. ठीक है? That's 4%. Let me say 300 exactly. 4% बनता है। आपका रिस्क 4% है, 96% उनका रिस्क है। समझ आती है? अब उन्होंने आपको 94% उन्होंने पैसे दिए हैं। They are asking you something. What are they asking you? Rafay, we can, yes, I made $3,800. Great, I feel excited. They said, we're not going to pay you. No. First, I want you to return us our money that we are giving you. So पहले हमने 7500 वापस करने हैं उनको, बना के देने। So the moment I will reach 7,500, how much I have reached? 3,800. 38 बन गया है। 7,500 divided by minus 3,800. All I have to make is $3,700 more in this account. They will give me $3,000. It's okay. And my account still stays there. So when I will request 3,000, I will have $4,500 in that account. Account is still active. It's a PA, direct to PA. What are they asking? Rafay, please, we only ask you 5 things. Number 1, don't make more than $600 daily. Okay, I can live with that. It's a good amount of money. I don't want to make more because they want to see consistency. Rafay, 4:15 close your trades. Apex 5 बजे तक देता है, ये 4:15 तक कहते हैं पोजीशन काटनी है। Number 3, show up to work at least 10 days. If you manage to make money before 10 days of 7,500, we're not going to pay you. So I have to show, not consecutive. I can trade today. I don't have to trade tomorrow. I don't have to trade next Wednesday. Any 10 days. You know, कितने great opportunity है. Like for $300, you get 7,500, and it's free capital sitting on the planet Earth. यार ये कोई भी पास कर सकता है। माइक्रो ले लें, ES ले लें, गोल्ड ले लें। I know it sounds easy. Until you get your entries right, you're not going to be successful. आप माइक्रो नैस्डैक लेके छोड़ दो यार, आर्ब की जोन में छोड़ दो। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक अकाउंट पकड़ें, ये वाला FTT वाला। जब जब एक्सपेक्टेड हाई ना हाई 5 माइक्रो लेके बस छोड़ दें। कोई थ्रेशोल्ड की स्ट्रेस नहीं है। कितनी ऊपर जाएगी? 5 माइक्रो $10 है ना। मैं एक्सपेक्टेड लो से बाई किया था मैंने, एक्सट्रीम लो से फ्राइडे को 500 पे है, वो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा गई 377 पे, 380 पे क्लोज हो गई, स्टिल प्रॉफिटेबल। सो इट्स नॉट, तो अगर आप माइक्रो नैस्डैक कर रहे हो, एक्सपेक्टेड हाई से 5 लेके छोड़ दो, फ़ौरन पैसे बन जाते हैं यार। आपको तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन प्राइस देख लें, जितनी मर्जी दफ़ा उस एरिया में आई हो, एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड रूल कर रखें। नैस्डैक MNQ एक्सपेक्टेड हाई, एक मैं आपको पैसे अभी कम करवाता हूँ, मेरे से सब्सक्रिप्शन बंद कर दें, ठीक है? मैं कह रहा हूँ, मेरे से सिर्फ एरियाज़ ले लें 150 में, सॉफ्टवेयर को गोली मारें, लाइव स्ट्रीम को गोली मारें, जूम को गोली मारें, ट्रेडिंग भी फ्री है, आर्ट ट्रेडर फ्री है। मैं आपके पैसे मैं कम करवा रहा हूँ यहाँ खड़े होके। नैस्डैक के एरिया आता है ना, मैं 150 में देता हूँ। एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड लो से सिर्फ 5 माइक्रो छोड़ दें, दैट्स इट। ना छोड़ें, मेरी जूम ले लें, ना कुछ लें, ना सॉफ्टवेयर लें। एरिया पे खेलना है ना, तो क्यों 300 दे रहे हैं? 150 में ले लें। पहला ट्रेडर हूँ, पहली कंपनी है जो कहता है कि मुझसे ना लो यार, सस्ते में काम हो जाएगा, क्यों महंगा कर रहे हैं? लेकिन मास्टर कर लें ना, उनको सॉफ्टवेयर भी नहीं करने की ज़रूरत।
वो तो फ़ोन पे ट्रेड लगाते हैं यार, ट्रेडोबेट में जाके एक्सपेक्टेड हाई से बाय कर लेते हैं, सेल एक्सपेक्टेड लो से बाय कर लेते हैं माइक्रो में। सर ठीक है यार, देखें 5 ये आप बात कर रहे हैं एपेक्स की। एपेक्स में आपको टीपी मस्ट लगाना है, क्योंकि अगर वो थ्रेशोल्ड ख़राब होना शुरू हो जाता है ना, तो आपने कितना प्रॉफिट लेना है, $100, लेट्स से 100 लेना है, 5 पॉइंट 20 टिक्स। मैं एफटीटी में इनके लिए आसान कर रहा हूँ, ओपन छोड़ दें यार, वो कभी आप उठ के देखोगे 500 बने होंगे, बिकॉज उस एफटीटी में ये मसला नहीं है थ्रेशोल्ड का कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो जिधर भी आप बंद करोगे आपका होगा यार। सर एपेक्स पे पीए पे लाइफ थ्रेशोल्ड का मसला तो नहीं है पीए पे भी आ गया यस, जब तक अपने पैसे नहीं बना लेते हैं लाइफ थ्रेशोल्ड की वजह से मैं एपेक्स से मूव कर रहा हूँ। सर एपेक्स में उन्होंने का क्वेश्चन राइट, लाइफ थ्रेशोल्ड करके मेरे फिर पीएस क्यों हुए हैं एपेक्स में? मैं बैग करता रहता हूँ। मुझको तो ये लग रहा था कि सिर्फ ईए पे लाइफ थ्रेशोल्ड है, पीए पे लाइफ थ्रेशोल्ड हंड यार सबसे से डे वन भाई साहब। यार मैं 2.5 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं आपको कि मैं, अच्छा मज़े की बात क्या, मेरे व्यूज़ कितने आते हैं, 8 9 12,000 मेंबर है, एक भी बंदा वो कहते हैं यार बहुत लंबा बोलता है। ओ भाई आप ही लोगों के लिए बोलता हूँ, मुझे कोई शौक थोड़ी है इसको बार बार एक्सप्लेन करने का। एपेक्स में लाइफ थ्रेशोल्ड है, एफटीटी में नहीं है। Yes, yes. No, we have a marketing department who's going to come and chop it. We have a podcast coming, quite a few things. लोग बोर हो जाते हैं, अब ये भी unless कि आप excited हो, लोग छोड़ जाते हैं कि यार ये क्या। Anyway, ये 3 रूल हैं। आप मेरे से करो, अगले मंथ आपने मुझे 300 नहीं देना, आपने मुझे सिर्फ 150 देना है, और आपने एफटीटी करना है, और आपने सिर्फ एरिया करना है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हो सारी चीज़ों से। आप यानी कि आपको मिड बैंड भी पता है, ये भी पता है, एरिया पकड़ें, एफटीटी पकड़ें, पैसे कमा लें यार, और कुछ नहीं। जो बिगिनर है उसको तो गुजरना है ना पहले एक्सपीरियंस, लेकिन आप अगर एरिया ट्रेड ही करते रहो, यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। एरिया क्या है, सिग्नल है ना, किस तो आपको सिग्नल दे रहा हूँ मैं, तो 5 माइक्रो डालो जी। यस यस सर, देखें एरिया ट्रेड प्रोबेबिलिटी है कि जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी उतने चांसेस बेटर हैं। शमीम साहब आएंगे, वो आपको एक कहेंगे, मंसूर भाई बैठे हैं, उन्होंने 2 एरिया पिक किए हुए हैं। आई डोंट केयर मार्केट काम खुलती है, उन्होंने एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड लो लेना है, उन्होंने लेना ही नहीं है कुछ और। दैट्स इट। वो कहते हैं दफ़ा करो R1 R2 S1 S2 मिड बैंड एरिया, बैठे रहेंगे। आ गई अब वो होता ही है 57, आपका दिल पैनिक करता है कि इसने R1 से नीचे जाना है कि नहीं, आप वरीड होते हो ना। जो ज़रा एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो गैप देख लेता है, अगर तो R1 और R2 का गैप ज़्यादा है तो वो R1 भी ले लेगा, अगर उसको गैप कम नज़र आ रहा है वो और कई दफ़ा आपको नहीं एरिया आता, उस दिन आपको कि यार मैंने तो ट्रेड नहीं लिया, वो नहीं लेते, वो नहीं ट्रेड लेंगे। यस नहीं, फिर इसका फिर ना लेना ट्रेड। मैं आपको गूगल शीट खोलता हूँ, लेट्स नहीं है सर, ऐसा मार्केट कुछ भी करती है, कभी भी कुछ भी करती ये है। चले, लेट्स लुक एट माय गूगल शीट। मैं सर आपको एरिया के लिए, एरिया की बात हो रही नहीं है और नैस्डैक की बात हो रही है, सो एवरीथिंग वी बैक इट विद द डेटा, राइट। ये शीट आपके सामने है। ये 6 सितंबर से मैं रोज़ लिखना शुरू किया आप लोगों के लिए कि जे ने मुझे मशवरा दिया था कि मुझे एरिया, वो सिर्फ हमसे एरिया लेते हैं। 26 जून तक जारी है, उससे पहले तो मैं अपना इंडिविजुअली करता था। ग्रीन हैं जो हिट होते हैं और रेड हैं जो नीचे की तरफ हिट हुए हैं। कल सिर्फ R1 हिट हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड लो तक चला गया। अगर आप 500 पे बाय कर लेते ना तो 11 बजे मार्केट ऊपर चढ़ गई थी, एग्जैक्टली 520 पे 11 बजे रिवर्सल ले लिया था। पता क्यों? FOMC बोलना शुरू हो गए थे। मेरे लिए तो सर मेरे डी ट्रेड में था उस वक्त प्लस माइनस नहीं FOMC के बोलने से पहले मैं ट्रेड में था माइनस समवेयर अराउंड 1000। जैसे ही FOMC ने बोला
I just come back to +100, come out of the trade. अच्छा मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ -1000 मिनी में थे। माइक्रोज के कुछ लॉट नहीं, पहले मिनी में था। अच्छा ठीक है, फिर एंड में मैं माइक्रोज में गया था। ठीक है। माइन क्योंकि -1000 इज बिग नंबर फॉर माय इयर्स, राइट? सो 75 वाला काउंट था। हाँ चलो ठीक है। फिर एंड में मैंने एक्सपेक्टेड लो पे बाय किया, बट देन इट गोस टू एक्सट्रीम। नहीं लेकिन एक्सपेक्टेड लो पे उसने 50 से दिए थे, 56 तक मुझे पॉइंट निकाले हैं यार। जब सर एंड में मार्केट नहीं फंसी थी, नहीं वो तो 4 के बाद फंसी है ना, अर्निंग्स पे फंसी है। बाद में फिर से मैं फिर अब मैं क्या उसको कहूँ कि आपको अर्निंग्स 4 बजे नहीं करनी ना, वो पर वो फिर भी निकाल गई। नहीं फंसे ना। हाँ, पर एफएमसी वाली भी ओके अब ये आपका राव भाई सारा डेटा है। आप कहते हो यार कि मैं पिछले 1 माह से देखता हूँ कितनी दफ़ा एक्सपेक्टेड है, ये एवरी डे के नंबर है ना। आप देखो R2 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 R, आप R2 उठा लो। आप कहते हो यार कि मैं R2 से 10 पॉइंट लेने हैं, ये आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है ना। S2 एक्सट्रीम लो, मेजॉरिटी डाउन रही है। कितनी दफ़ा एक्सट्रीम लो पे, एक्सपेक्टेड लो पे गई? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। ये आपके 5 दिन तो यही ट्रेडिंग के थे। मंसूर भाई ने जो पे आउट ले आए $7,000 का, वो नैस्डैक में माइक्रो से और एक्सपेक्टेड लो से लिया है। और ये एक्सपेक्टेड हाई मेरा ख्याल है 1 आध दिन ही गई थी, लेकिन ये गैप बहुत कम था। अगर R2 और S2 का S का गैप छोड़ा है ना ज़्यादा है, तो R2 ले लें। एक्सपेक्टेड हाई देखिए, अब ये एक आपको आंसर दे रहा हूँ कि अब ये जो गैप है ना 520 और 600 का, नैस्डैक में 80 पॉइंट का गैप बहुत कम होता है, तो आप एक्सपेक्टेड हाई ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर है 770 से 900 यार, 200 पॉइंट है, तो आप R2 भी सेफ जोन रहता है। अगर गैप कम है तो एक्सपेक्टेड हाई, अगर गैप ज़्यादा है तो R2। एक ही ट्रेड पकड़ लें मुकम भाई, आप कहोगे यार जो मर्जी हो जाए, मैंने ट्रेड एक लेना है, नैस्डैक लेनी है, माइक्रो लेनी है, चले 2 माइक्रो 5 माइक्रो ले लो। मैं ये कहता हूँ कि आप गारंटीड रोज का 200 से 305 माइक्रो पे निकाल जाओगे। सर ये शीट है आपको एक्सेस, ग्रुप एरियाज पे। आपको मैंने एवरी डे कहता हूँ कि मुझे ईमेल भेजें, मैं शेयर कर देता हूँ। इधर दें मुझे शेयर, मुझे अपना ईमेल दें। जीमेल चाहिए? ओके, जीमेल कोई जीमेल है? आपको मैसेज करूँ? नहीं मुझे बोल दें, मैं अभी डाल देता हूँ। MOH MOH KAM वो आ गया। सर ये देखें, ये आ गया। हाँ, शेयर हो गई आपके साथ। ये तो लाइव में करता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे सारे कोलीग्स नैस्डैक करते हैं, हम जल्दी निकलना चाहते हैं ना ट्रेड से। तो R2 और मैं आपके सामने, अच्छा एक बंद आप आओ, आप कहो यार राफे ने ये सारे हाईलाइट किए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये नहीं लेने। वो जैसे जैसे मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, इसका मतलब है एरिया डन हो चुका है। आप आओ नेक, अब इस यहाँ पर आप क्या कहो, आपने ये देखा ना, आप कहोगे यार ये ग्रीन नहीं है या रेड नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा क्लू मिल गई है कि मैं, वो जो जे हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो फ़ोन पे डालते हैं और सिर्फ गूगल शीट खोली होती है, कभी कभी वो जूम सुन लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा यार कौन सा नहीं हिट हुआ, चलो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ यार, यहाँ से कर। तो इफ़ यू डू Nasdaq and दिस इज मच फास्टर एंड ईजियर। इन द बिगिनिंग आप मॉर्निंग में कोई ट्रेड एरिया लगा के आप छोड़ दें, छोड़ दो, ये भी कर सकते हैं। आप- ये करीब पहुंचे जब लगाएं। मैं आपको सिंपल ट्रिक दे दूँ। रात को 8:30 बजे इवनिंग का एरिया आ जाता है, नीचे जाएं वहाँ ऑर्डर लगा दें, ऊपर जाएं वहाँ ऑर्डर लगा दें। कई दफ़ा सुबह 4 बजे जिम जब करता था, सुबह उठो $600 बने होते थे खुद के, ATM लगा दें कि यार इतना प्रॉफिट इतना लॉस। तो लाइक लोग इवनिंग एरिया ले लें, सर 20 टिक्स का लॉस ले लें, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड लो और हाई मिलना है, एक ही मिलना है, राइट? तो 20 टिक्स का लॉस, 20 टिक्स का प्रॉफिट, $400 आपका बना होगा सुबह उठने से पहले। अगर एरिया वहाँ टच हुई तो, अगर नहीं हुई तो you're not gonna, दोनों यार, और सेफ खोल लें, ऊपर वाला लगा लें, जिस तरह ये है 120 लगा लें या 500 लगा लें, आपको 2 ही नंबर दिए जाते हैं ना। अब संडे को एरिया आने हैं, संडे को 6 बजे कंप्यूटर ने एरिया जनरेट करने हैं,
आप जाके एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड लो पे लगा दें, इसमें क्या बात है। Evening areas will come on Sunday. एवरी डे वी डू। No, evening areas I know, but I didn't know Sunday. संडे को 6 बजे मार्केट खुलनी है ना, तो रात के आपको एरिया मिल जाएंगे। सर क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उसको जैसे 1 माइक्रो लगा दें, तो उसको फिर ऐसे लगाने की भी जरूरत नहीं, कितना ऊपर जाता है। 100% करेक्ट, कोई मसला नहीं, 2 माइक्रो लगा के छोड़ दें यार, कितनी घूम लेगी मार्केट, राइट। तो नॉट ए बिग डील। I've seen rarely an evening area kind of go out of bounds, but it's generally not a. हमने 5 बजे ट्रेड बंद करना है। हाँ, अगर शाम को हम लगा के सो जाए, छोड़ दो। तो अगले 5 बजे शाम तक तो वो शायद आ ही जाएगी ना वापस, अगर नेगेटिव चली भी गई नहीं, लेकिन डिपेंड करता है आपने एंट्री कहाँ से लिया। फॉर एग्जांपल, लो पे लगा दी। नहीं लो लगा दी है और वो आप ऑन हो गई है, घूमते फिरते होते होते जनरली। अब एक दिन ऐसा हुआ, इसराइल ने और ईरान ने हमला कर दिया, 9 बजे मार्केट 50 पॉइंट टैंक्स हो गई, आपको पता है, और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नैस्डैक गिरी। दैट्स ए जियोपॉलिटिकल इशू। यू गाइस हैव टू रियलाइज दैट हे एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड, सो नथिंग यू कैन से। वो ट्रेड हमने पायलाट में क्लोज 6-5 इन एफटीटी में आपने क्लोज करनी है 4 बजे, लेकिन मैं इसको एपेक्स में नहीं रेकमेंड करता, क्योंकि एपेक्स का मसला यह है कि मैं एक दिन रात को ट्रेड लगा के छोड़ा, 940 का नंबर था, मैंने 894 से ट्रेड लगाई थी, वो चली गई 940 पे। मिनी की बात कर रहा हूँ, 3 लाख की। 940 माइनस 894, दैट्स 46 पॉइंट्स टाइम्स 20, $920 का प्रॉफिट इसने देखा। सुबह उठा हूँ 911 पे हवर कर रही थी, तो 911 माइनस 894, 17 टाइम्स 20, 340 का प्रॉफिट, 600 का नुकसान हुआ था। लाइव थ्रेशोल्ड आपका इसीलिए उड़ता है ना। सर मुझे लग रहा है जो पीए पे मैं, मुझको तो पता था कि पीए पे लाइव थ्रेशोल्ड होता ही नहीं है इनको ट्रेन कर रहा था, वो एपेक्स के पीए पे लाइव थ्रेशोल्ड। I hope blind is not leading a blind, right? That's the problem in this industry. You gotta know all. मैं आपको हर वक्त ये कहता हूँ, एक कंपनी पे मैं काम कर रहा हूँ, ओनली डिसएडवांटेज इसका पता क्या, एफटीटी का, निंजा पे नहीं चलती, नहीं चलती ना। जब दो पार्टीज लड़ रही हो ना, फ़ायदा तीसरे का होता है। हमने 12,000 स्टूडेंट्स को कहा एपेक्स पे चले गए, एपेक्स की सेल बढ़ गई। अब हमने राउट किया सारों को एफटीटी के, एपेक्स की सेल डाउन हो गई, उन्होंने क्या किया 85 का लगा दिया लाइफ टाइम, तो हमें फ़ायदा हो रहा है ना। मैंने एक और कंपनी को लिखा यूएस की, मैं कहा यार एपेक्स ये दे रहा है, एफटीटी ये दे रहा है, मुझे ये चाहिए, वो भी आ रही है। देयर गना ए थर्ड कंपनी इज़ कमिंग सून, देयर वर्किंग ऑन इट, लेकिन उसमें ये फ़ायदा होगा, वो निंजा पे भी चलेगी, ट्रेडोवेट पे भी चलेगी, और लाइव थ्रेशोल्ड भी नहीं होगा। बट व्हेन देयर गना कम, वी आर गना वेट फॉर इट, राइट। सर आप इस पे बता रहे थे मिड बैंड, आपने थोड़ा सा बीच में ऑफ टॉपिक, यस यस, तो मिड बैंड बताते बताते आप कह रहे थे एक और इजी, सबसे इजी चीज 30-20 फॉरगेट 15-10, 30-20 ग्रीन हो तो लो ऑफ द बार बाय करें, 30-20 की लो ऑफ द, हाँ छोड़ दें 15-10। ES नहीं आपको पकड़ क्योंकि वो 30-20 उसका मिड बैंड है, तो मैं उसको भी आसान कर रहा हूँ। आप 30-20 के लो से बाहर करी जाएं और सेल पे हाई से, चले एक 30-20 का चार्ट उठाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं Also, I wanted to know, you're not coming from the area you had mentioned last week. Yes. As long as it's not coming from an area which I don't understand. which means okay, I know that. okay, no problem. Price got to 56.65. This was an area, right? अब आपकी प्राइस ये मिड बैंड चल रहा है ना, so that means this is an area. So it's not coming from an area, तो आप उसको अवॉइड करो ना उसमें, so it's not It's coming. not coming from an area. Yeah, it shouldn't be. So then you take, if you just look, where is it coming from? अगर ये एरिया हुआ तो पता लगे कि यहाँ से वो तोड़ती हुई चली गई, right? So Okay. So it shouldn't be coming shouldn't be coming, not from an area. Number two, जो areas आप देते हैं so हाँ, exactly. Number two, make sure there is no line. There is a line of diversion line. Yeah, which I also do that. It's okay, no problem. but आपको और easy कर देता हूँ next week के लिए। 30-20 का चार्ट पकड़ें, कुछ ना देखें, easy देख रहा हूँ, 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, बॉटम ऑफ द बार आ जाए ना, बाय कर लें, बस दैट्स इट।
अब आपको मैं, और अगर रेड हो ना तो सेल कर दें। So low of the bar, bottom high of the bar 30-20 पे करें, 15-10 पे ना करें। बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। सर 15-10 पे कुछ है, कोई क्लू हमें पता लग सकता है कि ये it's a safe to take high of the bar और low of the bar। मिड बैंड का तो चलो हमें एक सिंपल सा रूल है ना, उसका तो मैथ है, किया हुआ हमने। नहीं, इसका कोई मैथ नहीं है। इसका अगर लेना है तो फिर आप अगर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो 30-20 का मिड बैंड ले लें। सर 30-20 के मिड बैंड पे जब प्राइस जाता है ना तो 15-10 पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स दैट्स, तो मैं कह रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम पे खेलें ना, So that will be also okay. दैट्स फाइन। 30-20 का मिड बैंड पे लेने कितने, 2 पॉइंट लेने हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है आपका, तो आप लोग बढ़ा 5 पॉइंट का है, On 30-20. लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा है। आप ज़्यादा लो ना, ट्रेल करना शुरू कर दें उसके बाद। सर 15-10 थोड़ा सेफ है, मतलब नहीं, मुझे 30-20 ज़्यादा सेफ लगता है, लेकिन लेट आएगा। हाँ और प्रॉफिट कितना रहता है? जितना चाहिए रखें, 200 नहीं, ज़ीरो नहीं, एटलीस्ट $100। अब चले, ये अब डाइवर्जन की लाइन है, ये देखिए, ये आपको लाइन नज़र आ रही है। हाँ जी। अब नहीं, ये वाइट लाइन नज़र आ रही है, ये वाइट लाइन, हाँ, white line. इसको डाइवर्जेंस की लाइन कहते हैं। ये लाइन कहती है कि यहाँ से ट्रेंड ने चेंज हो जाना है। Okay. ये हमारा When it's come down a little. नीचे हो तो इसने ऊपर जाना है, ऊपर की लाइन हो गई तो नीचे आएगा। Okay, when it's coming down, that means it's going to change to up. अच्छा, ये देखें, अब आप ये देखें, आपको पता है कि मैं पहले पिछले ब्रेक से पहले अप्रैल में डाइवर्जन ट्रेड बहुत देता था। ट्रेड उसी तरह है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि यार लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जा रहे हैं, अभी बिगिनर्स में उनके हिट रेट मुश्किल है, उनको बेसिक समझाएं। तो बेसिक में हमने डाउन टू 9 ट्रेड मैंने 3 ट्रेड कर दिए, मिड बैंड, गैप ट्रेड और टॉप। 30-20 के मैं आपको ये बताऊं, ये ग्रीन हुआ ना, जब ट्रेंड चेंज हो जाए, मैं आपको एक ऑनेस्ट बता दूं, 13 पॉइंट के बाद बॉटम ऑफ द बार बाय करी जाए। 30-20 का ये देखिए, मेजेंटा से ग्रीन में चला गया, अब आपका बाइंग में हो गई ना। आप कहते हो मैं कहाँ से बाय करूं? सिर्फ अगर आप यहाँ पर बाय कर लेते, ये बाय की विक आई है, मुझे रिजेक्शन विक से नज़र आ गया। अगर आप यहाँ बाय कर लें, ये पता है कितने बड़ा बार है? ये है 20 टिक्स का, 20 टाइम्स 50 नहीं 12.5 $250 का एक ट्रेड है। आप अगर इसको ट्रेल भी करते आए एपेक्स में तो आपका लॉस होगा $100, तो 150 तो गारंटीड हो जाएगा ना। अगर 8 टिक्स भी पीछे आते जाएं, 4 टिक्स आते जाएं तो सर 2 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर दो, लालच चाहिए। आपका नुकसान लाइफ थ्रेशोल्ड में हुआ है। सर मुझको सही में मतलब ये एक मेजर फैक्टर होगा मेरे पीए का, क्योंकि जैसे ही 80 अब आपने थे कि आपका नुकसान शुरू हो जाता है। मैं पीए पे टेक प्रॉफिट नहीं लगाता था, क्यों? बिकॉज मुझको ऐसा लगता है इसमें लाइफ थ्रेशोल्ड है 100% है 100। सो अगर आपने 100 देखा ना और 0 पे क्लोज किया तो 100 निकल जाता था लाइफ थ्रेशोल्ड में। सो यू हैव रेड सेल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बार, यू हैव ग्रीन बाय एट द बॉटम एंड ट्रेल। Yeah, and we should just stick to one kind of trade. One in a trade, way. one trade. Do either the bottom of the bar or the mid band or something. मैंने इनसे कहा है एरिया ट्रेड लें, सब्सक्रिप्शन भी कम करें, नैस्डैक लें। अपने बिजनेस का नुकसान कौन करवाता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अगर एरिया ट्रेड लें तो फिर एक ही एरिया ट्रेड लें। वो अगर बॉटम ऑफ द बार लें तो सिर्फ बॉटम ऑफ द बार लें, ग्रीन रेड। वहाँ विक्रम जी ये सिर्फ $50 में बाहर आ जाते हैं, $50 1 पॉइंट लेते हैं। So we should stick to one. One Because type of somebody trade. told me, you know, overbought, oversold area होता है ना, 99 पे आया तो you sell and 1 point. What they have, something मैं आपको बताऊं, ओवर बॉट ओवर सोल्ड ये ट्रेड होता है RSI वाला। प्रॉब्लम ये है फिर आप एक ही ट्रेड करते जाए ना, एक ही तरह का ट्रेड करें। होता ये कि 10 ट्रेड में That's why I'm confused.
So you are hearing 11, 12 things. Yeah. Too much noise. आप कर रहे हैं एरिया भी आ गया, मिड बैंड भी आ गया, डाइवर्जन भी आ गया. मिड बैंड और ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं वो ठीक है, लेकिन द बार टू द टॉप एक इजी सबसे पिक करें ना, मास्टर करें. मैं चाहता हूँ पे आउट लेना पहले. Yeah. पे आउट आ गया तो फिर आपका. और प्लीज गाइस, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द अकाउंट, डोंट शव मिनी इनटू अ माइक्रो अकाउंट. 1500 में आप मिनी ना करें, राइट? सो माइक्रो. So I should just stick to the. I like the bottom of the bar to the top. देयर. ओके, बॉटम ऑफ द बार में भी एक यहाँ पे ग्लिच है. ग्लिच तो नहीं कहेंगे, बट एक इशू है ना यहाँ पे कि अभी जब ये ट्रेंड चेंज होता है तो बार ऊपर से आगे बढ़ती है. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, जब ये नीचे आती है हाँ. तो उस वक्त आप श्योर नहीं होते कि ये नीचे की तरफ जाएगी या ये वापस ऊपर की तरफ. आई अंडरस्टैंड, लेकिन उस टाइम पे आप कैसे. देखिए, मुझे हर ट्रेड के अंदर ना एक प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर नज़र आता है. मैं आपका आसान फिलोसॉफिकल तरीके से आसान कर देता हूँ. रियल लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? वो होता है मौत और डेथ. एक डेथ है ना, एक आप दुनिया की हर चीज़ ठीक कर पाओगे, डेथ नहीं ठीक कर सकते. मर गया ना बंदा. इस ट्रेड में सबसे बड़ा फियर क्या है? स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस कितना? स्टॉप लॉस नहीं, और नीचे 3.5 पे जाना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द बार 3.5 टाइम्स 14 टिक्स. वर्स्ट कम सिनेरियो है ना, आपने एक ट्रेड लिया, आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवार्ड कैसे आएगा? आप एरिया पे एक रिस्क लेते हैं. अब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं कि एक ट्रेड एरिया ट्रेड है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है. हम ये कहते हैं कि 90% सक्सेसफुल है 10 सालों में. 10 साल का डेटा है ना. मिड बैंड आप 10 लोगे ना, हाई वॉलेटिलिटी में नहीं, ये थर्सडे फ्राइडे मार्केट में नहीं, तो अगर आप 10 ट्रेड लोगे 7 ठीक जाएंगे. लो ऑफ द बार आप 10 ट्रेड लेंगे ना, तो 3 ट्रेड फिर भी ख़राब होंगे ना. तो आपका बिगेस्ट फियर ये होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा. तो माइक्रो में भी यही स्टॉप लॉस सेम वो सेम 3.5 पॉइंट लगाएं और छोड़ दें. क्या होगा? एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, फिर बैठ जाएं. तो आई स्टिल ट्रेड. if you're in profit, of course 100% you trail. अब देखें, इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं जूम इन करता हूं. प्राइस यहां से ब्लैक कैंडल बनी, चढ़नी शुरू हो गई. आप कहते हो यार अब मैं क्या. जब ट्रेड में जाना है तो हमने बेस्ट केस सिनेरियो लेना है ना. तो आपको बताया गया है कि आपने अपना ऑर्डर बॉटम ऑफ द बार से शुरू करना है. आपने यहाँ ऑर्डर लगा दिया. आई नो आई काइंड गो अ बिट ऑफ ट्रैक. सबसे बड़ी सेइंग मैंने क्या सीखी थी? अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें. हम ये कहते हैं. हमने अपनी क्या ड्यू डिलिजेंस की? ग्रीन है, बाइंग में रहना है. बॉटम ऑफ द बार है, बाइंग में रहना है. आप यहाँ पर प्रे शुरू करें कि यार मैंने ना अच्छा ट्रेड डाला है, यहाँ से मुझे सक्सेसफुल कर दें. क्योंकि जो आपकी ड्यू डिलिजेंस थी वो आपने कर दी है. अब आपको नहीं पता आगे क्या होना है. सॉफ्टवेयर ने कहा ग्रीन है, बॉटम ऑफ द प्राइस आपका रूल था, आपने अपने सारी चीज़ें कर दी. स्टॉप लॉस चेक, बॉटम ऑफ द बार चेक, ट्रेंड ग्रीन चेक. अब आप करते हो यार मैंने अपना काम कर दिया है, यार तू भी अपना काम कर दे. देखिए यहाँ के बाद तो अनसर्टनिटी है ना. आपने लार्ज फिगर्स खुल रहे हैं, रिजेक्शन विक से नीचे आ गए. अगर वो यहाँ से ऊपर चढ़ गई ना तो आपके $250 बुक हो जाएंगे. बोनस है ना. और वो अगर चढ़ती, अगर ये खुली हुई है MNQ, मैं ES पे जाता हूँ. बॉटम ऑफ द बार. डोंट चेंज कि मैंने चेस करना है. वो तो फिर होगा. अब होता ये है कि मेजॉरिटी ट्रेडर ऊपर से गाड़ी में बैठ जाता है और नीचे जब आती है फिर दुआ में चला जाता है. अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की कि यार मैं चलती गाड़ी में बैठ गया था, सॉरी, अपना फॉल्ट नहीं. आप फिर ऊपर वाले को याद कर रहे हो, यार मुझे इसमें से निकाल लो, मैं बहन के साथ ठीक हो जाऊंगा, भाई के साथ ठीक हो जाऊंगा, मस्जिद चला जाऊंगा. लाइक यू नो, इट्स ए नेचुरल इंस्टिंक्ट. एवरीबडी डज इट. इमोशंस कम इन.
नीचे आ रहा, कोई ट्रेड नहीं लगा, एक भी नहीं लगा, मुझे क्या पता क्या हो, बट मुझे नहीं ट्रेड नहीं लगा तो नहीं लगा, आई विल वेट। आपका रूल आपने तोड़ना ही नहीं है रूल। लो जी, बहुत अच्छा ट्रेड लगा, ES की है, 251 पे हुआ है, आपने टॉप ऑफ द बार ट्रेड लगाना शुरू कर दिया, यहाँ लगा दिया, 30-20 है, आपका ऑर्डर पिक हो गया। अब आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस, चलो 5 लगा दो। वर्स्ट केस सिनेरियो पता क्या होता है, अगली कैंडल 5 पे बनेगी कि आपको पूरी रिजेक्शन विक मैक्सिमम है 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो मिड बैंड तक जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, वो मिड बैंड के ऊपर से 5 लगाते हैं, पूरा वेट करते रहेंगे कि अगर मैंने बॉटम ऑफ द बार लिया, मैंने देखना है कि ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक नहीं निकलूंगा। ये सबसे सेफेस्ट ट्रेड आपका स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मिड बैंड से 5 पॉइंट 20 टिक्स ये हो गई और 2 टिक्स, सॉरी 20 + 4 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं वो जो ज़रा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाता है ना। मैं ये कहता हूँ कि क्या पता यहाँ पर आपने सेल कर दिया, पहले आपके अगेंस्ट ये गई होगी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स, $100 आपने माइनस देखा। अब पैनिक तो ना होगा ये, क्योंकि वो अभी तक उसने स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, क्योंकि 3.5 पॉइंट पे थे। आप अगर इसको सेव करना चाहते हो, मिड बैंड से 6 पॉइंट का लगा दो। अगर यहाँ पर बाय हुआ, ट्रेल और यहाँ तक आएगा और वो खिंचना शुरू हो जाएगा। ये ट्रेड आपको पता है, अगर आप ट्रेल करते कितना जाता, यहाँ से प्राइस बनती है 24, अगला टॉप ऑफ द बार कब आया, यहाँ पर 19। अगर 24 से प्राइस यहाँ तक गई थी 14 तक, सो 24 - 14 10 - 2 8, ये $400 का ट्रेड था, एक ट्रेड $400 का। So you took the first trade here, Yes, top of the but market. I am now behind 8 ticks. I'm coming 8 ticks behind. I made 300, I locked 200. I made 400, I locked 300. In this case, market moved 10 points. 10 times 50 is 500. So I've locked it at 400. So I got out at 400. फिर दोबारा टॉप ऑफ द बार बेच दिया। यहाँ से यहाँ तक आपका, अब यहीं पर स्टॉप लॉस हिस होगा ना, लेकिन यहाँ से यहाँ का सफ़र है, एक सेकेंड मैथ कर देते हैं आसान। But don't we have to come out at the bottom of the bar? No, if you want, if market अगर जा रही है तो this is 19, this is 12, 19 - 12 6 - 2 7 - 2, 5 पॉइंट का ये ट्रेड था। तो इस दौरान 250 से लेकर 250 टाइप तक दो अगर आपके ट्रेड 5 मिनट में $900 बने हैं। 30-20 एक चार्ट देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। मैं ये कह रहा हूँ सिंपल चीज़ें रखें शुरू के लिए। 30-20 उठा लें, ये ES की बात कर रहा हूँ, नैस्डैक एरियाज ओनली एक्सक्लूसिवली एरियाज, और overbought, oversold if you like, but that kind of gets a little crazy. सर एरियाज में भी आपके पास एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड लो में दो रेंज लगती है। हाँ जी, उस रेंज में अगर अच्छा गैप कम है तो ऊपर वाला ले लें, गैप ज़्यादा है तो नीचे वाला ले लें। अगर तो गैप 20 पॉइंट का है तो ऊपर वाला रखें ना, और अगर बहुत ज़्यादा गैप है फिर आप दोनों एरियाज ले सकते हैं। Anything else? जी जी हाँ, अच्छा averaging, yes. So the question came in, explain on the board on how to average. अच्छा वो चले गए, उनको अच्छी गुड न्यूज़ देनी है अभी ये, क्योंकि वो And do you have a video on how to plot the value areas, जैसे जो value areas में प्लॉट हो जाता है खुद ही, 60 मिनट के चार्ट पे 2 लाइनें आ जाती हैं, वो ऑटो प्लॉट होता है। कौन सा 60 मिनट चार्ट में 30-20? नहीं नीचे चार्ट्स खुले हुए हैं ना, तो उसमें 60 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। You don't worry about it. Even idea is, I want you to make $200 a day Yeah. with just one trade. Okay. Stick to only one trade. 30-20 green होगा, बॉटम से लें, $200 के बाद बंद। सर कई बार
ट्रेड भी नहीं कर पाते, स्टक हो जाता है वो। नहीं लेकिन होने हो जाता है। नहीं लेकिन आपने ईएस में करना है। नहीं तो नैसडैक में जब एरिया नैसडैक नहीं एरिया, नैसडैक में तो सिर्फ मार्केट बटन चलती है। मैंने 21 लिया था ना प्रॉफिट। मैं तो सिर्फ क्लोज का बटन दबाता हूँ। नैसडैक जिस स्पीड से चलती है कि भाई, और उसमें फिर एफटीटी में फ़ायदा हो जाता है। And this you're saying that I should just do micros. Because I have that 25. 25, two micros, $50 a day. Yeah, my problem is haven't stuck to one. One method. Don't have the patience. That's $7,500 account एक पिक करते हैं, account size, and let's say this is expected high. सर सबसे बड़ी बात उन्होंने खोल दी, FTT पे जितनी मर्जी एवरेज करो, जितनी मर्जी एवरेज कर लो, कोई इशू ही नहीं है, हाँ ये तो मैंने सुना था। और एंड ऑफ डे है। सर वो 3 महीने जो रहा ना मेरा गैप, वो सर क्योंकि पहले एपेक्स के पीए में लाइफ थ्रेशोल्ड नहीं होता था। हमेशा से था, 2 साल से है, कभी भी ऐसा नहीं। मैं अभी तो उसी शौक में जब बैठा हुआ हूँ, सोच रहा था क्योंकि मैंने पॉजिटिव 500 देख के 200 पे प्रॉफिट, तो वो 700 का नुकसान है। मतलब It's okay. Better late than never. That's what we use. Expected high आ गया, आपने 2 पॉइंट का एक माइक्रो नैस्डैक होता है, और आपने 2 लॉट से एंटर हो गए, एक्सपेक्टेड हाई। अब ओपन है, एफटीटी है, आप कहती हैं कि मैंने सेल किया, शॉर्ट सेल की, अब यहाँ 0 है, $4 पर पॉइंट चलेगा ना, मूव होगा। If the price goes to 19,700, अब आपके अगेंस्ट चली गई है प्राइस, 100 पॉइंट खिलाफ हो गई, सो दैट्स 100 times 4, you're at -$400। 100 पॉइंट आपके खिलाफ चली गई है मार्केट, 19,600, 19,700। आप क्या डिसाइड करती हैं? मेरे पास 7,500 का थ्रेशोल्ड है, ठीक है। पहले तो ये सोचना है $4 कि अगर 1800 पॉइंट मेरे खिलाफ गई ना, तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी अगर एक दिन में हुआ। आप 19,700 पे ना 2 माइक्रो और सेल कर दें। अब यहाँ पर 2 लिए गए और 2 यहाँ लिए गए, अब आपकी प्राइस आ गई 19,650, एवरेज है ना, so that's called the dollar cost average, 19,600, 19,700। so what will happen now? आपने यहाँ 2 लिए थे, सेल ही करना है, सेल यहाँ पर 2 एक और सेल कर दिए, so you sold here, अगर 2 से स्टार्ट किया तो एवरेज सेंटर में होगी ना, अगर 1 से स्टार्ट किया तो 1 होगा, डबल करना है तो 4 होगा, अगर 4 से स्टार्ट किया तो 8 हो जाएंगे, तो बेस्ट एवरेज है कि मिडिल में आ जाएगा। तो 19,600 प्लस 19,700 डिवाइडेड बाई 2 कम्स टू 19,650 डिवाइडेड बाई आपके जितने भी लॉट्स होंगे। नाउ अब आपकी क्या होप है कि जब प्राइस सिर्फ 19,650 पे आएगी ना, तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे, तो यू विल बिकम ए ब्रेक इवन। सो एनी प्रॉफिट स्टार्ट्स टू अक्यूमुलेट नाउ अब 19,650 पे। So this is called the dollar cost average. Is what you're trying to say is you want to get out of a bad trade. Bad trade था कि 19,600 पे चला गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, वो बहुत ही तेज़ी से मार्केट निकल गई और 700 आ गया, तो अब आप उसको एवरेज करके निकाल देंगे आप। हमारा गोल अब इसमें प्रॉफिट नहीं है, हमारा गोल उसमें है कि हमने इस गुड इवनिंग जी, हमारा गोल है कि हमने इसमें से वो निकालना है, नहीं बस 0 पे निकलना है बाहर। नहीं कैसे जाएगा, 7,500 आपका थ्रेशोल्ड था।
चले एपेक्स में आ जाए। अब एपेक्स में भी तो आप -400 ही थे ना ऊपर, तो थ्रेशोल्ड तो नहीं अभी जाएगा। जब अगर आप 650 पे निकल गई ज़ीरो पे, तो आपका ट्रेड बाहर आ गया, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है उसकी। जी सर अब मैंने फ्राइडे को एक अकाउंट किया था, एपेक्स का 3 लाख वाला। ठीक है, वो मैंने ना एग्रेसिव ट्रेडिंग करके 6000 बना ली उसमें। ठीक है, ठीक है। और सर मुझको ये बताओ, रोज़ का 1000 मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी से चलूं? नैस्डैक उठाएं, एरिया उठाएं, एक्सपेक्टेड हाई पे 2 लॉट 3 लॉट से फेंक दें, निकल जाएंगे आप। लेकिन उसमें भी डेली रूल था ना कि आप एक दिन नहीं नहीं, ईए का कोई रूल नहीं, ईए पे को ईए में 20,000 बना लें। सर एक hedging से related एक question था कि hedging allowed नहीं है, I know. Yes. But hedging, buy and sell on the same similar price, we call it hedging? or No, the hedging hedging is directions, 2 different directions. So in PA is hedging is not allowed. In FTT hedging is not allowed. अच्छा एक और फ़ायदा ये है जो FTT में है, एपेक्स में नहीं है। एपेक्स में हम क्या कर रहे हैं, आपने you took a Nasdaq trade and you went long, but on the ES you went short. Apex doesn't allow you, FTT allows you. नहीं, एपेक्स में पीए में आप अगेंस्ट 2 डायरेक्शन में अपने आप ज़ीरो पे खड़े रहेंगे ना, एक में आपने बाय कर लिया ईएस में, और नैस्डैक में डायरेक्शन दोनों की मूवमेंट एक ही होती है ना। एपेक्स सेज यू आर नॉट अलाउड टू हेज इन द 2 क्वांटिटी, सो विद एफटीटी यू आर अलाउड। नहीं, हेज का क्या वर्ड है, जो वर्ड हेज है ना वो इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंट है। हेज का मतलब है अगेंस्ट ईच अदर, सो यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल कि आपने एक पोजीशन लॉन्ग की खोली हुई है, एक कि आपका वहीं पर लॉक लग गया है प्रॉफिट एंड स्टॉप। बेशक देखिए आपका प्रॉफिट, देखिए अगर आप नैस्डैक को लॉन्ग कर दें, ईएस को शॉर्ट करें, वो जैम हो जाएगी ना, फंस गई है ना आप ना उधर। हाँ वो भी हेज ही है, वो ट्रू हेज है नहीं, लेकिन उन्होंने एपेक्स ने लिखा हुआ है आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में जाके एक दूसरे के अगेंस्ट हेज नहीं कर सकते कि अगर आप, क्योंकि वरना तो हर बंदा यही करेगा ना कि सिंपली गया है ईएस को उठाया है लॉन्ग कर दिया, नैस्डैक को उठाया शॉर्ट कर दिया। नैस्डैक सर बट सेम इंस्ट्रूमेंट में हम एफटीटी पे लॉन्ग और एपेक्स पे शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ, नो प्रॉब्लम, 2 डिफरेंट, hedging कर सकते हैं? लेकिन फिर हेज यस वो तो हेज है ना। वो एक्सेप्टेबल है, राइट? सर एक आप जब आप एमएनक्यू करते हो ना, तो आप प्रीवियस स्विंग देख के चलते हो। यस, कि प्रीवियस स्विंग इतनी गई थी, अब उसका हाई पे जाएगी तो अब आप सेल करो। यस, वो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर, वो एक तो होती है नाइट सेशन हाई। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रीवियस स्विंग की बात वो कर, लाइन कौन सी होती है बता दो। ये देखो कंफ्यूजन है। हर स्विंग जो आ रही है ना उसकी एक लाइन बना देता है। अब आप ये देखें पीछे आए, ये एमएनक्यू है, अब ये लाइन है ना 18360 के, इसके सामने एक डॉटेड लाइन जा रही है, दैट्स द प्रीवियस हाई, प्रीवियस स्विंग हाई। तो ये तो 30-20 के देखेंगे बहुत, और मैं देखता रहता हूँ, अच्छा अब मैंने यहाँ से शॉर्ट करना है, इसको ब्रेक करेगी वहाँ से शॉर्ट करूँगा, और कह के मैं शॉर्ट करता हूँ कि लाइक लाइव क्या के कि अब 620 के बाद अगला नंबर ये देख रहा हूँ 680 होगा उससे। अब वो जैसे जैसे एरिया नैरो होता जाता है तो स्कैल्पिंग के तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राइट। सो तो सर एक चीज, ये इससे रिलेटेड नहीं है टॉपिक, सर जो एमटी मैक्स प्राइम है ना, जी जी, जब आपने अपडेट किया, मतलब वो पुराने सॉफ्टवेयर से जो नया वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये थोड़ा स्लो है। आपने नहीं 100% सही कह रहे हैं, 100%। हमने अब उसकी प्रोफाइल बदल दी है। आप उनसे एक टीम से कह के ना
MD मैक्स प्राइम को फास्ट, अगर आप जाएं ये कंट्रोल सेंटर पे ना, आपको ये दो नज़र आएंगी, फास्ट एंड रेगुलर। यस यस यस। आपने फास्ट पिक करनी है, तो स्पेशली नैस्डैक के लिए, क्योंकि नैस्डैक MD मैक्स प्राइम नहीं कीप अप कर रहा नैस्डैक की स्विंग। हाँ हाँ, लैग है 100%। तो अगर आपके पास, आपने स्विच फास्ट में करना है, मैं इस वक्त फास्ट खोल के बैठा हूँ, तो वो फिर पुराना वर्जन है। तो हमने नए वर्जन के अंदर भी दो दे दिए हैं कि पुराना स्टाइल MD और नया रेंको बार, तो नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल, इट्स ऑल देयर। सॉरी सर, GFF hedging allow कर रहे हैं? हाँ, आपके अपने पैसे जो मर्जी करें। मैं FOMC में लाइव हेजिंग देखी हुई है, 10 and 1, और जो आपको किस्मत में दे दे। So, सर ये बताना है आप उसको भी बोनस के गेम आती जैसे अभी ये आई थी फ्राइडे को न्यूज़ में आ रही थी, तो एक पॉइंट लाइक 120 पॉइंट्स अबव Yes. जहाँ से था, तो जिधर भी जा रहे हो तो 100 पॉइंट्स से प्रॉब्लम प्रॉफिट तो कंफर्म करें, बाकी ये कि दूसरी साइड का वेट करें कि वो प्रॉफिट में वापस yes, आए। yes. और अगर ना आई, that's the danger zone, because yeah, then you're stuck really. इसलिए छोटे प्रॉफिट्स को book छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते रहें, it's better that way. Any more questions? FTT, Apex, things like that? सर FTT की जो आपने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें उसके बाद के रूल्स और भी ऐड हुए, उसके अंदर वही Same. उसी को फॉलो करें। Yeah, like these are my FTT screens right here. So let's pick a different account. Let's pick let me pick my biggest account, which I'm doing the $300,000 one. ये है 800 का मैंने buy किया। 800. नहीं, FTT का. So in this case, I cannot make more than $800 a day. That's where my consistency rule is. So I gotta make sure that ये वही दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरे accounts हैं. So in this case, if you look, this account got traded last 30 days. And let's go in August. So first trade I did, पहले दिन $30 बने, फिर 1200 बने, फिर 985. So I'm trying to keep it above $1,000. So my PA है, डायरेक्ट PA है. ये अकाउंट मिलता है $800 का, $800. But they give you $15,000 of threshold. Yes. तो इसमें बनाने कितने हैं? 15,000, 15,000. So this is not the best account to work with, because you only get paid 4,000, but you gotta make 15,000. It's better to go ahead with your 150,000. Let's go back and pick. ये लिया मैंने, दो ये लिए हैं और एक 50K वाला भी लिया होगा। अब मैं आपके सामने बैठ के इसमें माइक्रो कर रहा होता हूँ यार, कितना लेता हूँ, $50 लेगा बाहर, 100 लिए बाहर, 200 लिए बाहर, और ना हार्ट बीट तेज़ है, ना स्ट्रेस तेज़ है, और लाइव में HTML लगा देता हूँ यार. अब तो यार देखो, अभी मैं बाइंग करनी शुरू करूँगा, ये मेरी रिपोर्ट है, राइट. सो here, look, day number 1 475, day number 2 480, day number 3 370, day 4 245 है, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 5 माइक्रो, नीचे लिखा हुआ है 17 ट्रेड, 2 ट्रेड, फिर क्योंकि खुला छोड़ देता हूँ ना जितना. हाँ, now September 582, 170, 500. So my total in this account, I've made $3,800. So that's my Apex summary, right? And everybody can see that my summary, and that is my performance rate. And last 30 days, let's look at, because they have a consistency ratio. Let's go down to here. And I think they have a button for payout calculator. Okay. Let's do 10 days. So now what is this? Says that this account is eligible to get paid. Because वो देखिए नीचे लिखा आ गया payout status eligible. Why? I have done 10 days, but I haven't gotten to that high though. I need to be able to make $7,500 before I get $3,000 out of it. Now this is my ratio.
Highest day $582, lowest day I made $95. ये लाइव कर्व चल रहा है, 600 के अंदर अंदर है, ठीक है. No offense, no first warning, no second warning, no third warning, meaning my account is active state. My daily profit, and look at this is the number that's very important. At the top right, you see it says consistency. That cannot go more than 20. $600 से ज़्यादा नहीं बनाने, तो ये consistency है. So these are my number of days, and it tells you total trades I've done. 9 wins, 0 losses, everything is there, and I'm eligible. And the moment this account balance will go to 7,500 is I will be able to get a $3,000 payout. So out of 20 accounts, which I spent 300 times, 19 times 300, 57 plus 700, I've spent $6,400 US, and I have 20 accounts. PA straight है, FTT का, नहीं, FTT में डायरेक्ट PA मिलता है. हाँ, FTA में दूसरी राउंड नहीं है, एक ही राउंड है. पैसे दिए फौरन खुल गए. सर वो FTT का जो हमारा कोड चल रहा था वो जो आपने, हाँ, FTT वेडिंग अब तो हो गया ना सुबह, लेकिन मंडे से कोड होगा सुपर एरियाज, आप वो डाल लो. अच्छा, वो डिस्काउंट नहीं, 50% नहीं है, 30% है. प्रोफेसर ये जो है वो 300,800 में वो डायरेक्ट इन कर देते हैं. सॉरी, 800,800 देने पे वो डायरेक्ट नहीं, आप 800 वाला ना लो. बेस्ट प्राइस $300 वाली है. $300 में आपको वो $1.5 लाख दे रहे हैं, और आपका गोल क्या है? $7,500. तो कंपेयर करें ना. आपने स्पेंड किया है 300, उन्होंने आपका अकाउंट खोला 150,000, खुल गया. हाउ मच लॉस दे आर गिविंग यू इन FTT is $7,500. What are they asking you to do? Don't make more than 600 every day. Close your trade at 415, not 440, 459. Make sure you show up for 10 days. That's it. और क्या चाहिए? इतना आसान है. वो अगर आपने बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है उसमें नुकसान हो जाता है. मीनिंग आपको 5 दिन में 7500 बनाने हैं. कौन? मिनिमम 5 days. अगर आप 7,500 डिवाइडेड बाई 5 करें तो एवरी डे 1500 बनाना है. आप 5 दिन में 3,000 निकाल सकते हैं. मतलब सर अगर लिमिट है मेरे पास तो मैं 500 एक दिन बनाऊं, 2,000 एक दिन बनाऊं. ऐसे नहीं है. आप अगर 5 दिन वाला करना है ना तो 1500 पर डे बनाना है. अगर माइनस में है तो कर सकते हैं ना. हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इतने बनाने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 5 दिन का अकाउंट है, 5 दिन मिनिमम 5 दिन, तो मैं 5 दिन में क्वालिफाई तो कर सकता तो अब ये बेस्ट केस सिनेरियो कि आपने 5 दिन में निकलना है. मैं ये कहता हूँ इम्प्रैक्टिकल है, 5 दिन में नहीं निकल जाता. उन्होंने भी तो गेम डिज़ाइन करके देखी है ना, वो भी तो उन्होंने हर, और हम आपको ये कह रहे हैं ये ज़्यादा आसान है. 10 दिन रखो. अब अच्छा मज़े की बात है, 10 दिन में 7,500 होता ही नहीं है. यू कैंट मेक 7,500 इन 10 days. So how much money you will make in 10 days? 6,000. So give yourself 20 days. 20 days, 600, that becomes to 12,000. Forget about like 75 पे जाना है ना यार. 75 divided by 600, you'll be done in 12 days. So 15 days, do an average. So at this speed of $400 a day, how long will I take? At $400 a day, 7,500 divided by 400, it will take me 18 days. 20 days. 1 month चाहिए ना. 1 month में अगर मैं 7,500 कर गया तो मुझे 3,000 दे देंगे ना यार. और मैंने कितने लगाए थे? $300. 10x your money. Just slowly, area trade. रिटर्न भी कर देते हैं आपकी मनी अगर आप नहीं, वो तो 90 दिन बाद करते हैं. अगर आप I don't know consistently profit बना रहे
I don't know of anybody who managed to keep an account that long, you know. सर जो फाइनल क्वेश्चन जो टॉप एंड लोअर के बारे में हाँ जी, डिनर पे इसमें कुछ है कि साहब में नहीं लेना मुमकिन लेकिन देखना पड़ेगा लेके देखना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा सेफ 30-20 है ना, टॉप लॉस बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी तो ज़्यादा मिलेगा ना। I mean, अगर रिस्क देखिए आप सारी चीज़ें माइक्रो पे आ जाओ, टेस्ट कर लो, एक हफ्ता ही टेस्ट करना है। The way I see it, sir, 15-10 is half of 30-20. हम्म, So if I have in my mind a trade of 1 day in 30-20, and I want to take the same trade half micro। in 30-20, so take like 5 by 2. और सर आपका वीक ठीक रहा कुछ? इस नहीं सर, आजकल एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहे? चलें आप got about 5 aircraft, 5 aircraft to take care of, there you go। close to 60 aircraft. Perhaps some effects, You're close to pay off last efforts के अलावा अभी ये भी point कर रही है। खैर ये उनके लिए है जिनको ट्रेड की एंट्री पता है, एपेक्स उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं। यस, सॉरी सर यार, तो लाइव थ्रेशोल्ड ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ सर मैं हजे तक चलो इट्स ओके, क्योंकि ते तो 500 देख लिया ना, ते 400 लॉक कर दो। ਪੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਖੇਡਿਆ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਟ ਪਰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੈਨੂੰ यस 100%। चलो ना एफटीटी में एक ही दिक्कत आ रही है। हाँ जी, मतलब दिक्कत नहीं आ रही जो रिदमिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ 3 ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਫਟੀਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ 3 ਅਕਾਊਂਟਸ बट आई कैन नॉट सेट अप द थिंग। डॉम मैं एनी डेस्क में, मैं मंडे को एक वीडियो बन रही है ताकि उसका डॉम कैसे यूज़ करें। मतलब उसमें एक चीज़ ऐड कर देना कि एफटीटी का जैसे अकाउंट खरीद लिया, सारा हाँ। कुछ हो गया, अब अकाउंट यहाँ से लेके आर ट्रेडर प्रो में ये देखें, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं, ये आर ट्रेडर प्रो खोला, हाँ जी ये सेटिंग्स जो आपकी वेबसाइट पे उसने आपको दी हैं, हाँ इसकी फ़ोटो ले लें। नहीं ये भी कर दी है हाँ मैंने, ठीक है, लॉगिन हो रहा है, ठीक है, उधर शो हो रहा है फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग। ठीक है। अब ये खुलेगा नहीं मेरे ख्याल हाँ, से, वीकेंड पे नहीं खुलता है। एक सेकंड, लेट्स ट्राई। ट्राई करना। ना ना नहीं खुलेगा। हाँ पर अकाउंट नहीं आ रहे थे। आप जाएं फाइल, ट्रेडर डैशबोर्ड्स, ओके वहाँ नज़र आएंगे। फाइल ट्रेडर डैशबोर्ड लिख दो। या मैं इसकी मंडे को वीडियो लगा, एक वीडियो भी बना देना इसका डॉम कैसे सेट करना है, और इसमें गुड पता क्या थिंग, कॉपियर ना यूज़ करना, क्योंकि वही कॉपियर वाली जब तक एक पैसे नहीं ना आता तब तक कॉपियर को हाथ ठीक नहीं रखना। बिल्कुल, मैं और यही चीखता हूँ शुरू में यार। मैं पता कहा डे 1 पे फिर से आया हूँ, सारा कुछ सीख के सारे एक्सपेरिमेंट करके टिप्स पे सारा कुछ आता है, बट कंसिस्टेंसी एक चीज़ है सर। और आपको लाइव थ्रेशोल्ड ने मारा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सर मुझको चलो चलो जो हो गया हो गया। सर ये टैक्स ये 18 पीए डिस्ट्रॉय हो गए, लाइव थ्रेशोल्ड का नहीं पता था, वो बस खुला छोड़ रहे थे। सर मुझको ये था ना कि देखो ईए नहीं मैं ऐसे छोड़ता था, ईए पे लाइफ थ्रेशोल्ड का मुझको पता था, पीए में मुझको ऐसा लगा था कि लाइफ थ्रेशोल्ड नहीं होता, तो इट्स ओके दैट अगर मैं 500 नहीं बुक कर रहा, एटलीस्ट 200 प्लस में बुक कर रहा हूँ। नहीं वो पर 3, ये नहीं पता लग रहा था कि वो माइनस में भी जा रहा है वो, हाँ मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ तो उसकी वजह से अकाउंट अगर एक ट्रेड जाता था तो आई हैव दैट इन माइंड दैट कि यार 2500 का मेरा वो थ्रेशोल्ड है, बट वो थ्रेशोल्ड तो वो कितना बार खराब हो चुका है, यस यस। सो वो दैट लूज लाइक दिस तो हो जाती गलती, लेकिन आप अवेलेंट रहो। चलो या नहीं अभी No. मतलब ये है, स्लोली एंड स्लोली आई विल चेंज। चलो नो प्रॉब्लम, वो आ जाता थोड़ा सा धक्का खा Sir, Okay, sir. थैंक यू। I was watching your live copy. You mentioned about the areas, यस यस, like 3 years, 3, and then 2, 3 micro. हाँ I've converted to macro now. यस यस। So, other than the areas, because नहीं नैस्डैक में और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नैस्डैक में आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते अदर देन ओवरबॉट। वही मैंने ओवरबॉट ओवरसोल्ड में मैं उसी पे
So because areas में तो थोड़ा time लगता है. टाइम लगता है. It is between S1 and R1 in the beginning. So we don't know which direction it's going. आसान ही है. मैं क्या कर रहा हूँ अपनी देता हूँ. अगर आर जोन में है ना, आई एम डूइंग ओवरबॉट because it's a I'm selling only. If it's in S zone, I'm buying. लेकिन वो फिर आ जाता है confusion. Base is up. नहीं वो ठीक है. देखिए वो बेस अप और प्रेशर अप वो मॉर्निंग के ट्रेड होते हैं. R1, R2, R3, R2, R1, S1, S2, S3. Now the price is hovering between these two numbers. तब तो सही है. Yeah, so keep buying at every oversold, buy, and then again every oversold, buy, every oversold, buy, and that's overbought, oversold. The problem comes when it goes to like 99.5 or above 90. You can't judge how कितनी चढ़नी है. नहीं सर, मैंने इसमें वो brand बना दिया. Okay. I can see it visually. Just like the areas. Okay, areas, okay. तो उसमें भी stochastics में भी RSI. I put the bands. Okay. 90 or 99.5 के बीच. Hard to zoom in. हाँ? Zoom in मुश्किल नहीं है उसमें. नहीं, because मैंने फिर Bollinger Band को मैंने खत्म कर दिया. ठीक है. और मैंने इसको expand करके ठीक. double Okay, मुझे समझ आ गया आपने क्या किया. Let me go back to this. M and Q. So you are removing this. Yes. Yes, actually you don't. इसको minimize कर दें आप. मैं इसको. नहीं, drop करके. मतलब वो line को move कर दूँ. हाँ. Okay. अब इसको expand कर दें. इसको मतलब twice the size आ जाएगा. इसको और बड़ा कर दें. It can stretch more. I think. पहले ऊपर वाले को कर दें. हाँ. अब नीचे वाले को ऊपर दें. So this is what you're doing. So this is what I've done. Okay. I have drawn the bands 90 and 99. So drawing tools. Draw में X, Y, X, X. Top से 4. Top से 4. A region X. Just the horizontal line. नहीं, ये horizontal. ये. X में जाना नहीं X. Y Oh, में sorry. आपको Y में जाना. So the 99.9 you don't have. इसको आप X. Y वाले में करें, Y में. Okay. So अब इसको मैंने ऊपर भी और नीचे भी 90 के ऊपर और 99. So इसको कलर कर दें इसको. You can change the color. अच्छा अब इसके आप you can set the values for it. data values. आप उसको पहले क्लिक करेंगे सर. हाँ ये अभी वैल्यू दो वैल्यू था. तो आप कह रहे हैं कि 0.5 क्योंकि अब आप नीचे हैं. तो 0.5 to 0 होगी. or 0. नहीं लोअर 99.5 चलते हैं. नहीं ऊपर 99.5 होता है. नीचे इससे 0.5 रहेगी. हाँ 0.5. और इसके ऊपर जो होगा सिर्फ 1. अच्छा 1 से 0.5 कर रहे हैं. हाँ 1 से 1 से 0.5. ये आपकी आप बन. थोड़ा सा और बड़ा कर इसको कर सकते हैं. बड़े 1 के अपना 1.5 कर दें 2 कर दें. It will be lower than Let's do 3. या 10 कर दें सर. 10 कर दें. हाँ. So now you know the RSI is gone. अब देखा से टिप आया ना. Now I know visually it is there. Okay. So then I can see it's going to reverse from here. इसी तरह ऊपर भी मैं कर देता हूँ. So what I will do it for everybody. What he's doing for it, like Rao is doing the same thing. He's playing overbought, oversold, right? Just instead of watching these numbers here, these overbought, oversold, what he's doing is, so we go right here, right click, drawing tools, Y, and let's draw here, and let's double click and give it some, so, नहीं सर पहले इसको draw करें. okay, we'll draw again. So green, so 99.5 to 80, 90 कर. 90 करना. Did I do something wrong? सर वो draw नहीं हुआ. Okay, Yeah. yes. Yes.
तो जैसे ही वो जाता है ना उस रेंज में चला वो विजुअल हो जाता है उसमें, एंड देन यू कैन सी विजुअली टच क्रॉस एंड देन यू कैन. Let me do one more crazy thing. Play with this. इसको खेलिएगा. इस बॉक्स को राइट क्लिक करें और अलर्ट पे क्लिक कीजिएगा. मैं आपको आप अगला स्टेप दे रहा हूँ, वो खुद ऑर्डर ले लेगा. मैं भी बताने लगा हूँ ना. लेकिन सर इसमें क्या होता है, इट हिट्स. आई नो. नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने अपनी एटीएम सेट कर लेना इसके अंदर. मैं ये कह रहा हूँ 80 आप कहो कि हर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में लेते जाओ. ये अब अलर्ट, अब ये अगला, इसको मैं आपको और एडवांस कर रहा हूँ. ठीक है, आपने ये गए अलर्ट्स में गए, इसको गए अलर्ट्स. मेरा डिनर नहीं, मैं देखिए, मैं ये जो थ्योरीज है ना, ये खोलता नहीं हूँ. पता क्यों? क्योंकि जो बिगिनर है ना, वो ये देखना चाह रहा है. तो बिगिनर्स चले गए हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये पहले दिन बता दी ना, तो वो फिर कहेंगे यार आई वांट, जिस तरह आपने डिस्कवर एक्स और वाई कर लिया. देयर आर मोर एडवांस टूल्स दैट आई डोंट ओपन इट. अब आप हाँ वो ठीक है. अब मैं ये यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके आप अलर्ट्स बना सकते हैं उसके अंदर कि राइट क्लिक, इफ़ दिस प्राइस गोज इनटू दिस जोन हाईलाइटेड एरिया, आई वांट इट टू बाय और सेल विद एन एटीएम. सिंपल. तो आप हर एक का अलर्ट बना दो कि विजुअल अलर्ट दे इसको. ये मशहूर की सर्विस होती है. ये मेक्स वेरी गुड एजुकेशन. Okay, let's look at what he's saying. स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, ये देखें. वो कह रहा है क्रॉस इनसाइड. क्रॉस इनसाइड हुआ ना, ठीक है. रिवर्स हो गया. हाँ, क्रॉस इनसाइड. तो हमने क्या चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं. लेकिन वो 80 को क्रॉस करे. नहीं, आप उस रेंज को और नीचे ले आए ना, बॉक्स को और थोड़ा बना दें. आपको कि यार उस बॉक्स को मैं कर लेता हूँ 90. मैंने अभी बॉक्स 10 का रेंज दिया है. यस, ओके. ये वैसे सारा ही, देखिए मज़े की बात पता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ. यूट्यूब पे इसी तरह रिकॉर्ड हो रहा है. पर वो ज़ूम करो ना, दिखता नहीं. ये स्क्रीन यूट्यूब पे नहीं, ये देखें, ये स्क्रीन जा रही है यूट्यूब पे इस वक्त. इस तरह मैं आपको यहाँ से देख लें. अब यहाँ से ये स्क्रीन जा रही है, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज़ फर्स्ट, लेट्स डू इट अगेन व्हाट ही डिड. मैं नैस्डैक में RSI नहीं देखता, ये क्योंकि इतनी तेज़ चलती है ना, इसको नहीं देखता. ये इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ. रैदर देन कंप्रेस करूँ, मैं रिमूव कर दिया. क्योंकि ये बेस्ट है सर. मैं आपके सामने एक और चीज़, स्क्रीन आ रही है यूट्यूब पे. नहीं अभी रुकें, यूट्यूब 20 सेकंड डिले है. मैं नैस्डैक से लार्ज ट्रिगर भी उतार देता हूँ, कोई देखने की ज़रूरत नहीं. ये भी उतर गए. आपकी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी ना. सो आई डोंट इवन केयर अबाउट मैजिक बैंड्स ऑन Nasdaq, removed. I don't even care. These are, the rest is okay. So let's create these areas again, remove, and let's create this area again. So just to explain those that are watching, this is a Nasdaq or micro Nasdaq trade, overbought, oversold, just on RSI, because the price is moving so fast, and every time you want to do overbought, it will sell. Every time you want to do, it will buy. So this is an RSI indicator. Let's do a full coverage here. So let's draw right here. I would in the gray area right here, I did a right click and I will go into drawing tools, and it says I will region highlight Y. Y is your horizontal axis. So I will draw something here. Now I drew this box. I will double click this box. Okay, so it gives me some options. What are my things? I'm going to give it a color of green because overbought. Green zone में आ गई ना. Some people do it reverse because they say अब यहाँ से आप reverse करते हैं ना, नीचे buying zone होता है. Yes. So आपका अगर mind उस तरह खेलता है, आप इसको दे दो red में कि यार overbought हो गई. Yes. So
what is my, in that box, so I will give myself from 99.9 to 95 के बाद शुरू करूँगा. So 95.9. So this is a 5-point range of this box. But we have to buy at 99. No, अभी तो मैंने सिर्फ box बनाया. Bottom here, I will make another box, and I will call it drawing tools, and I will say region, highlight, Y. Again, let's make a box. And let's call it, let's give it a color of green because we are planning to buy in this zone. Got it? And this time we will give it as low as 0.5, which would become 99.5, and we will give it 5.5. So this is a 5 difference in the bottom range. समझ आ गया? Now I have this zone. Buy zone, sell zone. So I would highlight here. Let's set up an ATM first. So we are now defining an ATM that by this time, what do we want to do? Let's go to custom. So I'm going to say, give me a profit of 5 points. 5 points is 20 ticks. Okay. If I lose, I don't want to lose more than my double. So let's do 40 ticks loss. Okay, if it goes against me, it's a bad trade, not a big deal. So 40 to 20, 1 ratio. So I will call NQ 3020, OB, OS, and 40 to 20 ticks. Yeah, I just gave it a name. So now my ATM is set, and I'm going to automate this. It's a free ATM. You don't even have to pay $540 per month for this. It's a free ATM, right? Now I've highlighted 2 regions, and what I want to do is when the price comes to this region, I'll do certain things about it. You can do this in the area. You can do this anywhere. So I will say, so I went inside this area, this zone. I clicked on it, so that box is highlighted. Right? My bottom box is highlighted. Right click, it says alert. So what is an alert? मुझे भाई ये आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा. ये overbought, oversold अगर करना है ना तो alert करके आप डाल सकते हैं. So what am I saying? So let's look at the screen here. Screen says every time I'm overbought in that region. So you can name the region. मैं नेम कर देता हूँ, आसान कर देते हैं. So let's go and cancel, and let's call this region properties, and I will call it oversold. NQ oversold region. Okay, NQ oversold. While I'm suggesting it, मैंने जब किया ना तो उस लिस्ट में इसको ढूंढना मुश्किल है because there are a lot of region highlighted. हाँ लेकिन चले ये नहीं आएगा. ये तो बड़ा यूनिक नाम है. NQ oversold है. ये देखें ये मैंने साइज के लिहाज से आपको बता रहा हूँ. मैंने क्या किया था कि 0.55 ताकि वो जो इतनी बड़ी लिस्ट है ना वो आएगी. अच्छा एक सेकेंड. शायद वो बिल्कुल एंड पे आए. Z1. अब Z भी है कोई? मैं कह रहा हूँ सर कि जो अच्छा जगह रहेगी ना हाँ उसमें कोई भी लेटर भरते हैं. अच्छा चले अच्छा मैं 000 करता हूँ. NQ oversold. ठीक है, ये बन गया. और ये वाला जो जोन है इसको डबल क्लिक करते हैं. 0001 NQ overbought. अब ये है 99.9 और 99.5. ऑटोमेशन है, फ्री की ATM दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर के साथ. कोई $500 पर मंथ नहीं है, एक भी है. सिर्फ 2 हाईलाइट करें, कौन सा स्कूल आपको इतनी चीज़ें फ्री में दे देगा. अब मैंने डबल क्लिक ये सेट कर दिया. ठीक है. सो व्हाट आई वांट इज एवरी टाइम प्राइस हिट्स इन माय रीजन ऑटो बाय. हम कहते हैं यार हम मार्केट दबाते हैं ना,
उन्होंने कहा मैं रीजन करता हूँ, मैंने कहा मैं रीजन के ऊपर भी अलर्ट दे देता हूँ कि प्राइस रीजन के अंदर आ गई है। इसको आप जितना मर्जी नैरो कर लें, जितना मर्जी ऊपर कर लें। पहले हम याद है कि डॉट से शुरू हुए थे, वो करते करते 4.7 आया, फिर मैक्स प्राइम आई, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाती है। और इसमें आपको चेंज नहीं करना। हाँ एरियाज में हाँ एवरी डे यू हैव टू चेंज। यस, एक दफ़ा फिक्स हो गया, ठीक है, अलर्ट लग गया। अब आप क्या कह रहे हैं, ये देखिए मैंने लिख दिया 0 ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लग गए, ठीक है, ये है ओवरसोल्ड, नीचे वाला ओवरसोल्ड है ना। सो व्हेन एवर स्ट्रेंथ, हमने वो एमडी स्ट्रेंथ चूज कर नहीं वो तो खुद उसने किया क्योंकि उसको पता है कि मैं किस एरिया में बैठा हूँ। ओवर स्ट्रेंथ क्रॉस इनसाइड आ गई। अब देखें ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको कहते हैं लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं, ये हुआ तो ये करना, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया कि बॉक्सेस बनाए, बॉक्सेस के बाद हमने इसको स्ट्रेंथ को कर दिया ओवरसोल्ड और अपनी एटीएम बाहर सेट कर दी कि भाई 40 का नुकसान लेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 टाइम्स 20 माइनस 200 मैक्सिमम नुकसान अगर मिनी कर रहे हैं। और प्रॉफिट कितने का ले रहे हैं, $100 का, तो डबल कर रहे हैं। प्रेस कर दिया ओके। नाउ अब उसने ना स्क्रिप्ट लिख दिया आपके लिए, जो हम आपको $500 पर मंथ चार्ज करते हैं 4 ATMs वगैरह का ना, वो यही चीज़ प्रोग्राम कर दी है कि जो आपको दिखती नहीं है। हम आज आपको देख रहे हैं कि आप फ्री में कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये कर दिया। अच्छा, यू हैव टू सेट रीआर्म टाइम ऑन कंडीशन रिवर्स्ड। व्हाट दैट मीन्स इज कि once that condition has filled, I want this alert to keep continuing. So I want to continually buy. आप एक दफ़ा कर सकते हो वो, वरना एक दफ़ा करेगा, बाइंड से बाहर आएगी तो फिर दोबारा बैंड में जाएगी तो फिर बाय हो जाएगा, राइट। नाउ यू से व्हाट डू यू वांट टू डू एट दिस ऑप्शन, राइट। सो यू गो राइट हियर एंड यू से एक्शंस, राइट हियर इज एक्शंस एंड you click add. Okay, now it gives you something, play a sound, overbought, oversold. You know how it says order filled, cha-ching, 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 right? That's how. So here you say, I don't want to hear a sound, I don't care about a sound, everybody will, I don't want to see a message. Just do it. No, just submit an order. Take an order. You know how we're gonna make it easier for you with automation? And This- that sound will come when the That sound will come anyway, order filled, right? So now what you say, pick an account. Pick an account. I will test it on SIM, and I will say, pick a market order. The moment it crosses 95.9, goes inside, whatever the price is, हम भी तो market ही दबा रहे हैं ना, हम कौन सा वहाँ बैठ के, you can't have a limit order anyway, right? So pick a market order, quantity 1. Now I come in and I say, now attach an ATM with it too. Because मैं कह रहा हूँ सारा ही काम मेरे कंप्यूटर कर दे, right? लेकिन अब चार्ट ट्रेडर पे तो आ जाएगा। आ जाएगा, आपके सामने आएगा, फ्री की ATM है, कोई कॉस्ट नहीं है ना, 500 बस आप सब्सक्रिप्शन दें। आई कीप रिपीटिंग दैट बिकॉज पीपल से मैन नहीं forever. So let's pick the number. So here's my ATM. That every time Nasdaq goes overbought, oversold, 40-20 ticks, buy, sell, buy, sell, buy, sell. So now आप इसको ऑटोमेट कर दिया आपने, आपकी कि यार हर दफ़ा ओवरबॉट होगा, ओवरसोल्ड होगा, मैं इस आप 99 तक ले जा सकते हो, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। बट आप इसी स्ट्रेटेजी को अगर लगाते हैं तो सिर्फ इसी पे रहेंगे, तो दूसरी स्ट्रेटेजी सर नहीं, देखिए बात यह है कि मैं इसको बंद कर सकता हूँ फॉरन अलर्ट को, ठीक है। एंड में हमने आम खाने हैं, पेड़ गिनने हैं, ये नहीं चलेगी, वो उसकी डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है। ये स्ट्रैटेजी है कि हर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में मुझे दो, ये गए और ये कर दिया ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज प्रेस प्ले एंड ओके, आई एम डन। So what will happen is that when the price goes in that direction, it will do, okay, I actually have to change something because I didn't submit the order properly. Let me go back to into alert. I have to edit my actions because you can go back and edit. It says submit an order of buy. So you have to pick buy or sell. But remember, on top we're doing a sell. On the bottom we're doing a buy. So what I've defined it, submit an order with this values, and I have done it. So every time price will cross inside that,
I know it's too good, but still requires a skill to use. The one bar that was showing day or GTC. No, GT हमें परवाह नहीं होती क्योंकि GTC होता है गुड टिल क्लोज, गुड टिल कैंसिल. GFF पे मैटर करता है, एक्सेल पे करता है, FTM पे करता है, इसमें नहीं करता. इसमें आपका ट्रेड 5 बजे खुद ही बंद हो जाना. Right? Now we go to this zone. We say, all right, when the price crosses, let's go to alert. People send me all the trolls online, you have no automation. मैंने कहा जितनी पावर हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन की है ना, किसी में नहीं है. 25 चीज़ें खेल सकते हैं. All right. Now what is it says? Look, Nasdaq, I go to overbought. In that section, cross inside. But let's suppose you don't want to cross this. You have so many more options. You can go cross outside, like so, because every indicator has a different way. Here we're going to say if it crosses inside, press OK. I want to rearm every time on condition reverse. And this time I want you to sell. So add. I don't want to pop up a message. Submit an order. Let's pick an account number. And let's do a sell on the market with an ATM of same. Because it's 20 to 40, right? And done. Change the account number. Yeah, you got to change the account number, exactly. And press OK, and press OK. Now both of these things are running. You can sit back and you can make money, print money, literally with Ninja Trader. But sir, there are certain limitations. No, limitation is buff. Near the areas. No, but here's the problem. That's where, लेकिन मेरी बात सुने, generally, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए ना. हमने वो सही बात कर रहे हैं कि एरिया में आए तो इसको अलर्ट को बंद कर दो. आप इसको जाके डिसेबल कैसे कर सकते हैं? आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन. नहीं वो है वो जो आपने जो लगाया था ना, हाँ उसमें हम जाएंगे तो वहाँ पे इनेबल को अनचेक कर देंगे. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसकी कोई अलग विंडो नहीं होती. इसकी लेकिन ऐड कर सकते हैं की स्ट्रेटजी की तरह शो नहीं होगी. नहीं इसने डिफरेंट तरीके से जाना है. सर लेकिन आप ऐड भी तो कर सकते हैं ना. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ राइट हियर, सो इट्स गोज अलर्ट. ये दो अलर्ट्स है ना कन्फिगर हुए हैं इसके अंदर, अलर्ट नंबर 1, अलर्ट नंबर 2. सो यू kind of have to enable disable inside. You can't do it just like an ATM outside. You got to go inside and enable and disable these alerts. But can you add another tab in the control panel? I don't think so. I got to check. I think alerts may be there, may not be. I have to double check alerts. I have a gut feeling that you can No, I got to see how can we put these outside for one click on and off, right? That would make our job even easier. But I think you can do flatten everything will do. properties, strategies, indicators, data series. No, that's not it. Chart trader, show data box. This is any given time. See, a lot of people don't know about this tool too, right? What this does is, you can watch any single line and the value of it. You can open something called data box, right? For example, you are right here, right? What this is, you can understand about every line what is, if you want to do more deeper calculation, it's all available to you. But this is it. So now price will go into the box, buy, price will go in the box, sell. Now you just sit back and then, Thank you advantage यही हुई. हाँ If you hit test of loss, that time someone will recover. हाँ फौरन रिकवर हो जाता है. This is an overbought, oversold area in 30-20 chart. That every 30-20, I would like to, kind of. Sorry? Yes. I made one here just with this 1500. You can put alerts on anything. Anything. I put alert on the yellow. Yellow middle में. When it comes, sell. आप खुद buy sell कर रहा है वो कैसा जा रहा है? There you go. See. So what I do is I give you the options. You guys can कुछ भी कर लें यार. ये alert का option बहुत अच्छा. I know. What happens is Saturday everybody is excited. By Monday comes, you all guys do completely different things. Like
अब उसको जाके जब मैं कह रहा हूँ कि एरिया ही करना है लाइव इन्वायरमेंट में, लेकिन देखिए हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, इमोशन आ जाते हैं, हम कहते हैं ट्रेड डालो, सो no, alone is different thing. Come here, sit with Happy. He slaps you if you have made $500. Like he's my Bluetooth. No, he only will slap you if made $500. That if you, hey, he turns off your computer now, you know. He's very strict and he's like, you know, but here's the thing. Over there, I'm lenient, Daniel is not. Because what he does is, like a teacher, he walks through the aisles. And back when you guys were there, nobody had the courage to take a bad trade. Because what was, he's like, ये trade क्यों डाला है? Like वो वहीं पर बेइज्जती कर देते थे कि अब मैं कहता हूँ यार आपके पैसे हैं, मेरी बला से आपने नहीं सुनना ना सुनो, right? और एपेक्स की वजह से बंदा और lazy हो जाता है, right? So, and people you choose to like before if he walks and he sees my screen and if I am in red and I'm in a green, he's gonna say ye kya pagal baithe ho, right? So everybody was, so which is okay, different style of teaching. For me, the more you will experiment, the more you will learn. You can't be doing in a fear environment that, but back then remember it was GFF, so you had to be right. Right? But with Apex, with $30, you can go in and experiment anything. You know how many accounts I have blown just to test one strategy? 400. Just 400 accounts. Because we were testing a strategy overnight. हाँ ये देखें मेरा सारी ये देखें अकाउंट नंबर तो मेरा देखें 960 पे चला गया. Because what happens is we are testing Max Prime over and over and over and how many times Max Prime ran, how many time Automax ran, how many time Midband ran. Here, you have to test it, right? So you're going to take, and Apex is like a sandbox. Jeet gaye to acha hai, or then now we take it, we're like, all right, this is working. So Monday, I know everybody's going to go and try this. आपने अलर्ट चलाए किए सही चल रहे हैं. आपने येलो डॉग पे बाय कर लेता हो. हाँ जी हाँ जी. लेकिन आपने ये वाला किया है ना, तो फॉर एवरीबडी ये जीरो लाइन है, तो आपने क्या अलर्ट बनाया? So that way everybody can benefit from learning together, right? So you would say, you would right click here, you would make alert, ठीक है? अब आपने क्या अलर्ट बनाया कि कंडीशन क्या हो? ऐड कंडीशन कि सीरीज डेटा हो, इधर से आपने इंडिकेटर कौन सा पिक किया? I think which one? Called the MACDs. All right, MACDs indicator. अब आप कहते हो कि BBs के इसमें मुझे नहीं मालूम कि क्रॉस. अच्छा. और वहाँ जहाँ इक्वल लिखा है ना, वहाँ से आप चूज करेंगे कि क्रॉस करे, रोज एंड रो. Yeah, every time what do you want? ओके नहीं लेकिन आपने कौन सी कंडीशन लगाई कि आप क्या कहते हो कि क्रॉस करे या इक्वल हो? No, cross. क्रॉस, तो आपकी जीरो लाइन क्रॉस हो रही है. सो क्रॉस करो, क्रॉस बिलो. अब आप कहते हो मैकडीज कर रहे हैं ना. अब मैकडीज ने क्या आपने इंडिकेटर का कौन सा प्लॉट देख रहे हैं? रेड जीरो. ठीक है. तो आप रेड जीरो पे क्या कह रहे हो? बिकॉज हम वी विल ऑल टेस्ट इट टुमारो. क्योंकि मेरी सर मिस्टेक ये थी कि मैं इससे जो इंडिकेटर है ना, वहाँ से मैं अलर्ट को चूज नहीं करता, मैं ऊपर. अच्छा, लेकिन आप रेड जीरो पे सेल कर रहे हो कि जैसे ही रेड, अच्छा सेल, और ग्रीन जीरो पे बाय. और कितना एटीएम सेट किया? I set up my 20 पॉइंट्स नैस्डैक में. गोल्ड, अच्छा आप गोल्ड में करें. अब वो एक और चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ अब देखें. बट इमेजिन करें, सिर्फ ये इमेजिन करें आपने 5 अलर्ट लगाए हो कि ज़ीरो लाइन पे ये हो जाए, ज़ीरो लाइन के नीचे से ये हो जाए, ओवरबॉट पे ये हो जाए, ओवरसोल्ड पे ले जाए. आपको पता है घंटे में ये कोई 50 ट्रेड हो जाएंगे और आप कहोगे कि मैंने अब 600 से ज़्यादा ही बनेंगे, मैं आपको और 2 माइक्रो ही लगा दें, बन जाते हैं. देखिए सर, आप मेंटर क्यों नहीं बन रहे? 2 मेंटर अभी तक बन, क्या चीज़? नहीं मैंने डाल दिया, दे दिया मैंने पूरी की पूरी. अच्छा, मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप सारों में से जिस तरह देखें, हाईलाइट बनाने के लिए ना
वो एक वीडियो के लिए मेरे लिए 5 मिनट की वो बना दूंगा, हाउ टू हाईलाइट एन एरिया. We have to back test it or live test it in a market. क्योंकि this is just one thing he pointed. Advanced users who I know are going in and they're picking any of these. वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास अब आपने ना खुला ऑप्शन इस वर्जन में दे दिया. Let's go add and let's pick indicator. आपको पता है कि आप हर चीज़ पे खेल सकते हो. ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो. आप कहते हो मेरी ज़रूरत नहीं है, मंसूर भाई की NBT की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि येस यू कैन डू इट बट इट्स सो ईजी. एरिया कर लो, ऑटोमेट कर लो, अलर्ट कर लो, डजेंट मैटर. सिर्फ एंड में कितने बनाने हैं, 200 300 200 300 बना के. अब आप देखें, आप कहते हो अगर प्राइस लाइन ये हो जाए, अगर टी बैंड को मूव कर दे, टी बैंड फिबोनाची के अंदर आ जाए, ट्रिगर लाइंस क्रॉस हो जाएं. You know, trigger lines cross, it means direction is changing, right? So let's go, if they cross inside cross होती है ना, trigger lines, 30-20 के trigger line cross हो, आपका direction change हो जाती है trend की. जैसे ही आप उसको कहो कि cross हो, buy कर लो. Like completely autonomous ट्रेड आप डाल सकते हो. प्रॉब्लम ये है कि हर कोई कह रहा है यार हमें सिग्नल दे दो. मैंने कहा मैं आपको पूरा लाइक यूनिवर्स दी हुई है, उसको जाके एक्सपेरिमेंट करो. क्या होगा, ज़्यादा ख़राब कर लोगे ना. सेटिंग ख़राब कर ली, चार्ट बंद कर दिया. यस, हाँ हाँ, सर सारा ही मैथ पे बना है. कोई भी इसमें मैथ के बाहर नहीं है. तो इसलिए गैम्बलिंग का तो ऐसे आपने मैसअप कर दिया, कोई बात नहीं. निंजा बंद करके दोबारा खोल लो, वहाँ से स्टार्ट कर लो. बट द आइडिया इज फॉर यू गाइज टू रियली एक्सप्लोर इट. You can see the yellow dot. यस, It goes down, it goes up. ये देखिए, ये येलो डॉट पे इन्होंने क्या किया, सेल कर दो, यहाँ बाय कर दो, यहाँ सेल कर दो, यहाँ पर बाय कर दो, और यहाँ से यहाँ अगर आपकी 2 पॉइंट भी मिल गए, Even you lose that trade, you still have 4 winning trades. तो इसकी रेशियो है ना 70% हो जाएगी. आप एक ट्रेड पिक कर लें RSI वाला, इस तरह वो कर रहे हैं. वो कह रहे हैं मैंने एक EA पास कर लिया है RSI से. I know it sounds too good. What happens is one day 1500 वाला, लेकिन एक मिनी से, एक मिनी या माइक्रो से, तो एक मिनी बना ना, वो तो एक ही पूरा हो गया. तो Every time 200, 200, 200. यस, सो बट I was practicing. मैंने कहा, हाँ, 30 साल में प्रैक्टिस भी हो गए, 85 में PA भी बन गया, अब आपका पे आउट भी आ जाएगा. ठीक, 300 विल पे इटसेल्फ ऑफ. इट्स नॉट अबाउट द मनी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जाएं, एक्सपेरिमेंट करें. So there you go, something new for this Saturday. I'm happy that people will be able to watch this episode at least, and so that how to do alert. Problem for me is, honest to God, we are a staff of 11 people. अब हर बंदा स्टेज डिफरेंट है. किसी को एनी डेस्टिनी नहीं हो रहा, तो किसी को राइट क्लिक करके स्टॉप लॉस नहीं लगाना आ रहा. नया स्टूडेंट भी आ रहा है, फिर कोई 3 माह पहले वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, यार मुझसे समझ नहीं आ रही. सो वी गॉट नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम. अगर आप यहाँ आओ, we have the entry level there. You know, we by force put you there because we don't want you here. Because what Mansoor knows after 20,000 is a brand new person. These 4 people, they don't know, right? So आज आपको alerts भी लगाने आ रहे हैं. आपको और एडवांस कर देता हूँ, वेट करें. नहीं, अभी जब आपके, मैं आपको इतना एडवांस करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ. मैं हैप्पी को ये कहता था, came to Canada, हम IPTV के बॉक्स की प्रोग्रामिंग करते थे. मैं कहता यार भाई समझ नहीं आएगा कि ये इसको कोड कैसे लिखना है. मैंने कहा 3 माह दो, आप मुझे बता रहे होगे कि यार ये कर लें. आज मैं, आप लोग मुझे कह रहे हो कि यार देखो ये भी हो जाता है. तो दिस इज़ ग्रेट, राइट? तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो. वॉच दिस, आई गिव यू अ लिटिल बिट हिंट इफ़ यू हैव टाइम. हमारा आजकल सबसे फेवरेट टूल है ChatGPT. हाँ, कुछ भी पूछना हो अपने इमाम से नहीं पूछेंगे, ChatGPT से पूछ लेंगे, राइट? सो स्टार्ट नाउ. यस, ये ओके, ये ChatGPT खुल गया. मैं इससे क्या पूछने लगा हूँ,
अब और रिफाइन लिखें वॉच दिस बेसिक लैंग्वेज आई एम इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल आई एम यूजिंग निंजा ट्रेडर 8.1 ओके विद एपेक्स अकाउंट इंग्लिश में बात हो रही है प्लीज हेल्प मी राइट एन ATM strategy for my overbought oversold simple ठीक है in ninja script and make sure it works उसको ऑर्डर भी दे रहा हूँ कंप्यूटर को राइट आप किसी ह्यूमन किसी को कहेंगे वो कहेगा $1000 दो मैं कुछ कर देता हूँ वॉच दिस आई हिट एंटर वो कहे अच्छा लो जी ये मैंने बना दी सारी ये करनी है so it's writing the code itself for ninja script this is advanced level really deep ATM कैसे बनती है उसने कहा ये मेरी सारा कोड है ये कोड लें आप कहते हो ठीक है यार मुझे फ्रेमवर्क मिल गया अब मैं इसको ट्यून करूंगा कॉपी किया न्यू it says ninja script editor right start pasting this code and start understanding it so even a little bit easier let's go strategy builder अब ये generic उसने निकाल के दिया है which you can fine tune and you can go next and go unlock code so whole code is given to you so whatever all of this programming is done अब आपको मिल गई है right so you just like people who use Excel programming in the back to create macros so this is all language models too right this is where we say we are in the writing software right so this is where you come in and you say all right you paste the code I tried this one, it yeah worked for me. नहीं वो थोड़ा एडवांस आपको चाहिए अभी आप तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो एटलीस्ट निंजा को 2 साल 3 साल 5 साल यूज़ करके ना उसकी हर चीज़ जान गए हैं राइट तो जिस तरह हमने रिदमिक का आपने वो ढूंढ लिया कि यार कॉपियर चलता है ही फिगर्ड आउट हाउ टू डू FTP सो टुगेदर एज ए कम्युनिटी आप लोग भी वीडियो बनानी शुरू करो उसको बनाओ उसको हम अपलोड कर देंगे सारों का फ़ायदा होगा ना राइट सो दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ दिस सैटरडे क्लास इज टू बी एबल टू टेक या बिकॉज नॉलेज शेयर करने से बढ़ता ही है कम थोड़ी होता है राइट और जो मेरी किस्मत का है ना मेरा ही है आप ना मैं कह सकता हूँ आपसे ना आप मुझसे ले सकते हो ना मैं आपकी किस्मत तो what's the point of worrying about any of this so anyway that if I share something I share it on YouTube I have at least 16 subscribers who learned everything from zero came into this program and knew zero about FTT program and everything and but how much they paid me let's say 6 months sharp guys 6 times 3 $1,800 paid every one of them at least 6 of them then opened their own trading school ऑनलाइन जाएं वो सिखा रहे हैं आप हाँ हमसे वो इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं एवरी सैटरडे मेरी वीडियो वो वॉच कर रहे हैं और आगे आके इट्स ओके आई डोंट माइंड हाँ देखें आपको नॉलेज की चाहिए ना कि ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है सो देयर आर सो मेनी पीपल वन लेडी शी इज लाइक आई डोंट नीड टू पे यू एनीथिंग आई हैव लर्नड इट ऑल आई एम लाइक ऑलराइट कांग्रेचुलेशंस थैंक यू लाइक आई एम नॉट आफ्टर योर 300 हम 30 सेकंड में निकाल लेंगे अगर आपको नॉलेज आ गया ना और हमारी वजह से आया हम इसी में खुश हैं आई एम हैप्पी दैट यू लर्न समथिंग वेदर यू स्टिक विद मी लाइफ टाइम नो आई एम नॉट ए बिग वरीड अबाउट दिस सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अब आज लोगों ने आपने सीख लिया है कि अलर्ट्स कैसे बनाने हैं खेलना शुरू करें और इसको प्रॉब्लम ये कि रेसिपीज़ हैं क्योंकि हर कोई कहता है कि पैसे निकालें और आपको इन्फॉर्मेशन दें कोई भी नहीं देता बिकॉज आई विल लुक एट दिस मार्केट इतनी बड़ी है कि अच्छा एक भी मेरा सब्सक्राइबर ना रहे ना वी आर ओके ट्रेडिंग अवर सेल्फ हम देखें मुझे कहीं भी नहीं पता था कितने सब्सक्राइबर हैं कितने चले गए कितने आ गए क्योंकि हम सुबह बैठ के ट्रेड करते हैं कई दफ़ा 2000 मेंबर लॉग इन हुआ होता है कई दफ़ा 200 लॉग इन होता है आज मैं आया कोई भी नहीं था मैंने कहा भाई क्लास तो करनी है राइट तो ऑनलाइन जो बैठे हैं उनका क्या कसूर है राइट सो and I want in each one of you to go out there and then teach it whether with this software or without कि यार ट्रेडिंग में आए पैसे बन जाते हैं आप
सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं देखिए मेरी बात सुने, मैंने डैनियल के साथ नहीं एक आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूं। फॉर मी टू लर्न दिस, मैं बॉर्न तो नहीं हुआ ना, मैंने किसी से सीखा ना, मेंटर से। उसने मुझे 3 साल में अपना रेप्लिकेट कर दिया। टुक मी 3 years। फॉर हैप्पी टू स्टैंड हियर एंड डू ए कोर्स टुक हिम 1 year। ठीक है, अब हैप्पी जो नॉलेज आगे करेगा ना, मंसूर भाई ने 6 माह में सीख लिया, आप लोगों ने 6 माह में। तो जितने ज़्यादा मैं अपने आप को रेप्लिकेट कर दूंगा ना, मेरा काम क्या होगा? अब मैं घर बैठे फिर सिर्फ तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों में, ताकि मेरी रिटायरमेंट आसान हो जाए। सो दैट्स वेयर आई एम वर्किंग, दैट इवेंचुअली पता लगे शाशमी साहब, मंसूर भाई ये सैटरडे प्रेजेंटेशन संभाल लें मुझे, ये तो अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ आगे के लिए, राइट। सो दैट्स द डाउन प्लान, एंड द मोर पीपल एक्सपेरिमेंट द बेटर इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। जिस तरह आपने कहा यार मैकडीज का मुझे नहीं पता था, अब वो मैकडीज भी ट्राई करेंगे, वो कहते हैं यार ये इंडिकेटर अलर्ट कर दो, 0 लाइन से नीचे जा रही है, बाय करता हूँ सेल करता हूँ, राइट। हाँ ऐसे ठीक है, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, राइट। बैक होम के लड़कों को अगर हम स्कूल में लाना चाहें तो पॉसिबल? सर देखें, पहला बैक होम में सिर्फ सबसे बड़ा मसला प्राइस का है। $300 पाकिस्तान के लिए बहुत, हमने 300 US रखा हुआ। लेट्स सपोज अगर वहाँ के लड़कों से हम अपने लिए ट्रेडिंग करवा लें, नो प्रॉब्लम। वो उसके लिए कनेक्टिविटी के इश्यूज और नहीं वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। उसका आसान ये तरीका है कि आप यहाँ पर शिकागो में हमसे सर्वर ले लें, जो हमने मंसूर भाई के लिए ऑर्डर किया है, वो कॉस्ट आती है $200 पर मंथ। सो देन दे विल रिमोटली लॉग इन, राइट। बट हियर्स द प्रॉब्लम, इट्स एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, हम उसको पूरा सिखाते हैं, वो कहता है यार जॉब छोड़ो ट्रेडर बनो। मैं 11 लोगों को सब्सक्राइबर बना चुका हूँ, एम्प्लॉय के तौर पे लाया था कि आपको सिखाया। अब आपको कहो कि पाकिस्तान इंडिया में कितनी सैलरी है, $500 $300, वो कहते हैं यार ग्रेट जॉब, राइट। उनको हायर किया, वो कहते हैं यार 500 तो हम डेली बना लेते हैं, और फिर उनको उठाना मुश्किल हो जाता है कि यार ट्रेडिंग करो या कस्टमर सपोर्ट करो, राइट। सो वो कहेंगे यार ये तो भाई यार ये मैं ही क्यों नहीं कर लेता। तो ये आपको दिक्कत आएगी उधर। सर मैं ये कहता हूँ एपैक्स पकड़ें, आप 300 की कॉस्ट है ना, 1000 बना लेंगे और 700 आपके, 300 हमारे आते रहेंगे, नारे बिग डील। लेकिन सीखना है इसको, क्योंकि उस इमोशन को कैसे ठीक करेंगे कि वो ओवर ट्रेड ना करे, वो नहीं हम कर पाए। हो सकता है, बिल्कुल चल सकता है। सिर्फ इशू ये है कि जब उसके 500 बन गए, क्या वो छोड़ेगा कि नहीं, क्या वो 200 के बाद छोड़ देगा? तो नहीं, कंट्रोल आपके पास नहीं है, माउस तो उनके पास है। नहीं वो आप कितने ही करेंगे, वो अगर जिसने पीनी है ना उसने पी लेनी है, आपको बताए वगैरह पी। नहीं वो आप देखिए, आपकी नीयत ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि वो एनवायरनमेंट ऐसी है कि उनको क्या पूरी दुनिया में आप अरेंज करें, मैं पूरी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। नो मैं दुबई जा रहा था, एरिया आया हुआ था, मैंने बाय कर लिया तो पैसे बन गए, उसमें क्या, क्योंकि नोवा स्कोशिया में मैं था और मार्केट खुल गई थी। एनी अदर टेक्निकल क्वेश्चन आपके कोई हो? हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। नो, यू गाइस हैव एनी टेक्निकल? यस यस। Yeah, this Friday was kind of crazy, yes. So when you put area trading, do you usually put the exact number that is mentioned on the... No, if the gap is small, I'll pick the higher number. If the gap is less, then gap is bigger, then I'll pick the first number and then the second number. So it's, but still gotta think, area can go, and then, you know, if you want to do an average or things like that, right? So we'll run for 6 more minutes and then I'll call it a day. So और सर आपका कोई क्वेश्चन हो एपेक्स का, एफटीटी का?
नहीं, FTT निंजा पे नहीं चलता। On Monday, I was just grumbling कि मेरे से नहीं होने वाला, मैं 1 महीने में छोड़ दूँगी। So then Zakir was in the next room and he heard me. He said, Sangeeta ji, I'm not going to let you go. You come here. वो कर रहा था, उसने $800 बनाया। And then, yeah, and then he said that overbought. He said, just do this. बस ठीक है। Overbought, oversold. यस, वो जो उन्होंने बताया, अब उसको आप ऑटोमेट कर दें। He said, you don't have to do anything else. Just do the 99.9 पे आया तो sell. यस, अब वो उन्होंने कह दिया, ऑटोमेट कर दिया, वो 95 पे खुद ही बाय कर लेगा और खुद ही सेल कर देगा। ये And that will continue every day. एवरी मिनट Every, मतलब next day also that. फॉर लाइफ। तो So you think I should do that or the low of the bar? नो दोनों मास्टर कर लें। ES लो ऑफ द बार, Nasdaq ओवरबॉट ओवरसोल्ड। यस, Because he showed me that and it was really good. Like it's easier. यस, और अलर्ट से तो और easy हो जाएगा. यस, यस, यस। Perhaps they are not leaving there. Just joking. Sorry? Yeah, well, you gotta go. I know. Give me 10 minutes. Okay. All right, guys. Thank you very much for tuning in. I will see you guys. Sorry? No, give me 5 minutes. So we hit the 5-hour mark. So because right now it's 4 hours and 54 minutes. So at least let's do an average of 5, and then we will close the stream. जी जी पूछो। सर ये हमने एनबीटी शुरू किया था पहले। हाँ, बैठे बैठे हैं। एनबीटी क्या था उसमें हमने वो फ्लो बॉट में लिया था। हाँ जी। अब वो नहीं मुझे पता कि आपने लिया था कि आपने इंस्टॉल। नहीं, मैंने आपको रिफंड हुआ था। आपको रिफंड नहीं हुए पैसे, तो आपको फ्लो बॉट है आपके पास। उसका आईडी तो मेरे पास है। नहीं, लेकिन वो मुझे दीजिएगा, मैं आपको फ्लो बॉट इंस्टॉल करवा दूंगा ना, क्योंकि आपने पे किया हुआ है। लाइसेंस मेरे पास है ना, तो हमने बाई किए थे। हाँ, मेरे पास आपका लाइसेंस होगा। अब हुआ ये कि फ्लो काफ़ी लोगों को मैंने रिफ़ंड कर दिया। जिनका रिफ़ंड नहीं हुआ उनके पास तो वो कॉपियर पड़ा है फ्लो बॉट का। नहीं, मेरे को नहीं हुआ। तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको वो इंस्टॉल करवा देता हूँ। नो प्रॉब्लम। पर वो फ्लो बॉट इज रियली गुड, पर वो जो उसमें ना डिफरेंस आ जाता है। ओके, जब आप ज़्यादा काउंट लगाओगे। हाँ, चलिए टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट कीजिएगा। लेकिन आपका ये मैकडीज़ वाला कैसा जा रहा है? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैकडीज़ वो तो सर कोई ट्रेड आप मिस होता है, इट ऑलवेज कम्स। अच्छा, स्टॉप लॉस कितना लगा रहे हैं? मैं तो सर गोल्ड में खेलता हूँ ज़्यादा। मैंने 20 का लगाया था। 20 टिक्स का $2 का। टिक्स हाँ, $2 का स्टॉप लॉस। $2 ही हुआ ना। 20 टिक्स गोल्ड में $2 बनता है कि एक टिक 10 सेंट होता है ना। 20 टिक्स है ना, तो $2 का लॉस लगाया। प्रॉफिट कितना लगाया? $2 $10 का होता है। नहीं, गोल्ड $1 मूव हो ना तो 10 टिक्स मूव होगा ना। $2 20 टिक्स, तो आप कह रहे हो कि मैं $2 का प्रॉफिट लेता हूँ। अच्छा, प्रॉफिट पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट नहीं सर, प्रॉफिट तो मैं खुला छोड़ा हुआ है। हाँ, वो मैंने देख रहा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया था। तो आप क्या प्रॉफिट आप क्या कर, लेकिन प्रॉफिट एपेक्स में तो ख़राब हो जाता होगा। अगर वो 20 आपके प्रॉफिट आ रही है, मैकडीज नीचे आ गई। वो टू टिक्स नहीं 2 टिक्स लिया हुए। नहीं सर मेरे पर वो ज़्यादा होता है ना क्वांटिटी। नहीं वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 20 सेंट लेते हैं सिर्फ, 2 टिक्स ले रहे हैं। कि टिक्स कितने ले? 10 लॉट्स 10 लॉट तो 20 सेंट ले रहे हैं ना। 20 सेंट टाइम्स 10 तो $2 बने, तो 2 टाइम्स 100 तो $200 निकाल रहे हैं। तो 2 टिक्स ले रहे हैं ना, तो 2 टिक्स बनते हैं 20 सेंट। 20 सेंट टाइम 10 लॉट्स $2।
ये बना. So आप लेकिन आपका लॉस बहुत बड़ा है. हाँ पर मैं आई वॉच इट राइट, मैं उसको भी वॉच करता हूँ. Okay, okay. पर वो जो बंद करने वाला वो आई ओपन जस्ट Yes. Okay. But my question is, why not? आपके against गई है कितनी दफ़ा? थोड़ी गई है सर, अब आई क्लोज इट. पॉजिटिव में कितनी गई है? पॉजिटिव यू गेट. अच्छा पॉजिटिव फिर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप उसको फिर चलने क्यों नहीं देते? ज़्यादा क्यों ले लेते? सच बात वही आता है. छोटा प्रॉफिट लंबा लॉस. वो इतना प्रैक्टिस नहीं किया, पर अभी टेस्ट ही किया सर. ठीक है, चलो वो कुछ ना कुछ तो आपको अलर्ट्स के लिए अब ये वाला अलर्ट ट्राई कीजिएगा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का. वो सर आपको फिर मैं क्या भेजूँ उसका? मुझे सिर्फ अब देखें फ्लो बॉट का मुझे मैसेज कर दें. आपको मैंने किया है सर. मैं दोबारा कर देता हूँ. All right guys, see you guys next Saturday, or those that are doing subscription, I'll see you guys Monday at 9:30. Take care. Hey boss. Just want to ask you, just like crazy. Just want to confirm with the area one more time. Okay. So okay, so right now yes, I just like R2 and R3. Yeah. So what condition do you Just look nothing. I don't look at anything. at? You look at anything? No, because that's just the number. I'm coming to that zone where it's overbought. Because I even watched the video. I watched the video, the new videos like Daniel posted Yeah. with 5 6. He used a different candle, but like the one you use is the red gold, right? So like okay, for example, He's using a 60-minute chart. Yeah. He's just draw something, it will come into that area. So the moment the first time price touches it. yeah, first time, yeah, first Yeah. attempt. He said like first attempt. So when it hit here, but like it okay. So he said like 80% rule is it can fill up to the top of the area, right? Yes. But here, okay. No, so no, are you talking value area or real area? Two different videos. Video number 5 talks about value area where it fills up yesterday's volume. It's not the same thing. It's right? not the same thing. Value area is different than the areas we give every day. Value area is different. Oh, it's different. Value area is two lines, yellow and cyan. The price goes in and out. It has to fill up 80% of it. Oh, okay. The real areas are different. That's the video number 6. Number 6. Yeah. Yes, Okay. two so different things. I thought it was the same. No, I no. watched So all of them. it just says if it touches R3, sell, take Q points and get out. I see. Yeah. I mean, okay. So here for the for example like R3, right? So Yes. it come to here like what Yeah. what do you do? Sell. You sell? Yeah. But what if it go like? It's okay. Well, you have a stop loss of 8 points. Generally, from expected high, things don't go crazy. But you have to understand, if it's coming up, it needs to give a retrace to come back up. So we're after that retrace. Retrace. So you mean like okay? So it here is R2, R3, right? If Yes. you go up here, it Yeah. retrace here. Yes. And then what do you do with No, this? no, but what I'm waiting for is, here's my R3. Let's say 5665. Yeah. This is 5655, 10 points. When it goes to R3, I would sell. Doesn't matter what the color is, what the anything is. I'm just doing against the trend. You sell from the higher number or you sell from the Yeah, lower number? but if it's 5668, Yeah. then I will sell for 8. But problem is the zone starts from those numbers. It may, I've seen it goes to 64, 75 and shoot down. But it can go to 55, 56, 57, 50. It can do anything, but we have given you a number, 5668 to 5665. You sell from that number. Yeah, sell from either of these numbers, you should be okay. 90% of the time, you're fine. Yeah. And what is your stop loss? And how many did you stop? 8 points, I put a stop 8 loss. points. Yes. 8 points. But this, if you want to stick to just an area of ES, ES area different rule, Nasdaq area different yeah, rule. different. Yes, yes. Yeah, every trade is different. Okay, perfect. All right, thank you. No problem. All right, good. See you.